ओके, तो थिंक बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस इनफैक्ट जो मैंने ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में किए थे वो गलत हो गए, या फिर कुछ कुछ उसमें मैंने किए नहीं, या फिर कुछ कुछ ऐसे तरीके के ऑप्शंस थोड़े और मैं कर सकता था बट मैंने वो नहीं किए, तो अपन वो कर रहे हैं। सो पहला क्वेश्चन जो गलत हुआ है दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। मैंने ए बी डी कहा था, इन लोगों ने कहा सिर्फ ए और बी है, जो कि सही है, ये सिर्फ ए और बी होना चाहिए क्योंकि जो डी है डिपेंडेंट ऑन ए, सॉरी अल्फा बीटा गामा, वो गलत है ना। अपन को ये एक कांस्टेंट मिला था, राइट, याद रख। तो क्योंकि ये कांस्टेंट था, ये डिपेंडेंट नहीं है अल्फा बीटा गामा पे। नेक्स्ट, फिर सेकंड भी गलत है, मेरा आंसर बी था, उन लोगों का ए बी सी है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, एंड द फॉलोइंग इज करेक्ट। मैंने कहा था लिमिट एज एक्स टेंड्स टू जीरो ऑफ एक्स, तो एज एक्स टेंड्स टू जीरो ये चीज इन्फिनिटी अप्रोच कर रही है, और ये चीज जीरो अप्रोच कर रही है, लाइक जीरो टाइम्स इन्फिनिटी टाइप का हो गया। सो ऐसा हो सकता है ना, 1 अपॉन एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी, सो इट्स जस्ट नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस टी, जहाँ पे टी 1 अपॉन एक्स है अपॉन टी, और मुझे एस टी अप्रोचेस इन्फिनिटी, ये चीज क्या अप्रोच करनी है वो देखना है, which is just 1 upon 1 plus t upon 1, right? Yeah, derivative लेके, and yeah, this thing approaches approaches 0, right? So we are done. This is b is correct, but a और c भी correct होना चाहिए। तो c क्या, लिमिट एज x टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ f(x) इक्वल टू 1, ऑब्वियसली। थिंग इज कि यहाँ पे x, हाँ फर्क नहीं पड़ रहा वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है, फर्क नहीं पड़ रहा है। सो सी तो इनफैक्ट वैसे भी करेक्ट हो जाएगा बिकॉज ये लिमिट तो अपन 1000 बार कर चुके, राइट? सो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू infinity, that thing is just e, right? तो नेचुरल लॉग ऑफ e ऑफ कोर्स जस्ट 1, तो c करेक्ट है, और a का क्या है? सो f of x is strictly increasing, well in terms of t, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालना, या फिर एक काम करें डायरेक्टली x से निकालते डेरिवेटिव, तो x अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और फिर इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स जिस नेगेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एंड प्लस, so x का डेरिवेटिव होगा एंड दिस नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। So what we're saying is that negative 1 upon x plus 1 plus natural log of 1 plus 1 upon x, ये जो चीज है, this thing is bigger than 0 for all x, of course x bigger than 0, उसके लिए ऐसा होना चाहिए। okay, let's say ये जो चीज है, call this thing as g of x, अपन f already use कर चुके हैं। so then g dash of x, that will be 1 upon, yeah, इसका डेरिवेटिव अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, just this thing except कि वहाँ पे x नहीं आएगा, so negative, wait, sorry, yeah, मैं क्या कर रहा था, negative 1 upon x into x plus 1, और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा पॉजिटिव 1 upon x plus 1 का स्क्वायर, आई थिंक, राइट? just wait a second, सॉरी इंटरप्शन, या कंटिन्यू करते। ऑफ कोर्स इसका डेरिवेटिव तो 1 अपॉन x प्लस 1 स्क्वायर है, और इसका ये रहेगा, राइट? सो दिस इज बेसिकली व्हाट 1 अपॉन x प्लस 1 इनटू 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x। सो इट्स ऑब्वियस कि ये चीज x प्लस 1 बड़ा है x से, x इज बिगर देन 0 एनीवे, दैट मींस कि ये चीज, सॉरी, इससे छोटी रहेगी। 1 अपॉन x प्लस 1 इज लेस देन 1 अपॉन x, एंड दैट मींस ये चीज नेगेटिव है, राइट? ये चीज तो पॉजिटिव है, सो पूरा जो डेरिवेटिव आएगा g डैश का, दैट थिंग इज नेगेटिव। g ऑफ x की इनिशियली वैल्यू क्या है? सो x इक्वल टू 0 पे नेचुरल लॉग ऑफ 1 तो 0 हो जाता है, इट्स जस्ट नेगेटिव 1, तो g ऑफ x इनिशियली नेगेटिव है और फिर वापस और वो नेगेटिव ही जाने वाला है, एंड वेट व्हाट, ये लोग तो बोल रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हाँ कुछ भी गड़बड़ हुई क्या अपनी? कल अपन ने g डैश लिया एंड yeah, so ये चीज, और plus 1 upon x plus 1 squared, yes, that is correct. g dash is negative, huh? Now something is wrong about this, that's all I can say. नहीं यार, ऐसा लग तो नहीं रहा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लग रहा है कि ये डिक्रीजिंग है इनफैक्ट। इसलिए अगर हम वापस कर लेते हैं, so x नेचुरल लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है? इट विल बी x वैसा ही रहेगा, और नेचुरल लॉग x के नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन x के लिए 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन x, और फिर 1 अपॉन x का डेरिवेटिव जस्ट नेगेटिव 1 अपॉन x स्क्वायर, तो ये जो पूरी चीज रहती है जस्ट नेगेटिव 1 अपॉन x प्लस 1,
और x added to 1, so natural log of 1 plus 1 over x, just like that. And ये जो फंक्शन रहेगा, दिस थिंग इज नेगेटिव इन फैक्ट, सो x इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी नेगेटिव हो गया ना, सो हाउ कैन दिस बी इंक्रीजिंग? a इज नॉट करेक्ट. तो उन लोगों ने ABC दिया वो गलत है इनफैक्ट, a इज नॉट करेक्ट. सो टू द नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट मेरा फिफ्थ गलत हुआ है सपोजिटली. सो फिफ्थ क्या है? या और मैंने ओके गलत नहीं हुआ है, मेरा आंसर सी है, उनका आंसर ABC है. ये वो वाला क्वेश्चन है. So ABC, three sets of complex numbers defined as A like this, B like this, C like this. So A में imaginary of Z bigger than, so Y bigger than or equal to 1. इस चीज में एक सर्कल है और इस चीज में एक लाइन है. तो सर्कल और लाइन का इंटरसेक्शन दो ही, राइट. तो इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C से दो पॉइंट्स है, बट इनफैक्ट वो दूसरा पॉइंट भी गलत हो जाएगा बिकॉज Y bigger than or equal to 1 चाहिए, राइट. अपन ये किया हुआ है. And let omega be any point satisfying this omega minus 2. Yeah, right. मुझे भी याद आ रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन क्या है? इट्स जस्ट सो रियल पार्ट चाहिए अपने को. x टाइम्स 1 एक रियल नंबर होगा और i y टाइम्स नेगेटिव i, दैट्स जस्ट पॉजिटिव y एक रियल नंबर. सो x प्लस y इक्वल टू स्क्वायर रूट 2, द फर्स्ट इक्वेशन. और दूसरा जो है दैट इज दिस सर्कल. सो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, राइट. And you want to figure out कि z कौन सा है जिसमें y bigger than or equal to 1 of course. और omega is any point satisfying omega minus 2 minus iota less than 3. So ये जो पूरा सर्कल रहेगा इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लो, राइट. और अपने को मैग्नीट्यूड ऑफ z पे फोकस करना है और मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा पे फोकस करना है. तो ओके लेट्स सी, we will have to do it. In fact we'll have to figure out कि x क्या है y क्या है, बट वो पागलपन है, राइट. या अगर मैं इसको ग्राफ करूं 2,1 और ये स्क्वायर रूट 5 रहेगा विच इज लेस देन 3 आई थिंक, समथिंग लाइक दिस. और x प्लस वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट 2. हाँ, दिस इज लाइक इसका x प्लस वाई क्या है 3 विच इज बिगर देन स्क्वायर रूट 2, तो कुछ तो भी इस टाइप का रहेगा. एंड दैट मेक्स इट ऑब्वियस कि x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है फॉर z, राइट. तो हाउ डू यू फिगर आउट कि ये मैग्नीट्यूड क्या होगा? What about this magnitude? Well, ये मैग्नीट्यूड अपने को पता है, राइट. इट्स जस्ट 3. You also know what this thing is. तो ये तुम काइंड ऑफ फिगर आउट कर सकते हो क्या? You can say that magnitude of z plus square root 5 is bigger than 3. And that means magnitude of z is bigger than 3 minus square root 5. Huh. That wasn't okay. ये ठीक है बट again it's less than 3 plus square root 5. Okay, cool. तो 3 minus square root 5, हाँ, this is 3 minus 2 point something, so 0 point something से बड़ा है z and it's less than 3 plus 2 point something. बहुत ही लूज है तो. okay. ये जो ओके सी क्या बोल रहा है? सी बोल रहा है z माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ओमेगा. ओके, दैट थिंग इज बिगर देन नेगेटिव 6. दैट जस्ट मींस मैग्नीट्यूड z प्लस 6 इज बिगर देन मैग्नीट्यूड. ये तो ऑब्वियस है यार, बिकॉज लुक स्क्वायर रूट 5 प्लस 3, so this is obviously less than 6, right? And that means कि magnitude of omega is less than or equal to 3 plus square root 5. In fact less than, strictly less than, because यहाँ पे strict inequality. And that means yeah, ये तो obvious हो गया. C is obvious. You also have so कौन सा चल रहा है? फिफ्थ में इन लोगों ने A और B भी करेक्ट किया, तो वो बोल रहे magnitude of Z is less than 3. Okay, 3 is a different scenario because यहाँ पे 3 plus square root 5 है, but दिखने से तो लग रहा है कि ये छोटा है इस पूरे चीज से, but how can you be sure of it? I don't know. Yeah, how can you be sure of it? Like this thing is actually less than 3. By finding this thing, अपने को ढूंढना पड़ेगा और कोई तरीका ही नहीं है. ठीक है, ट्राई करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ z ढूंढने का. Let's see, x square plus y square minus 4x minus 2y plus 1 equal to 9. So yeah, this is equal to, sorry, 4 plus 1, 5. So यहाँ पे आ जाएगा 4.
So x square plus y square is just magnitude of z ka square. Okay, minus 4x minus 2y. Huh? Well, you know that x is negative, and okay, first of all, ये चीज अपन use कर सकते हैं directly. So negative 2x, negative 2y, that's just negative 2 square root 2, and then that negative 2x is equal to 4, and that means that magnitude of z squared is equal to 4 plus 2x plus 2 square root 2. Well, this thing is less because x is negative, right? अपन ने already कहा था कि x is negative, so it's less than 4 plus 2 square root 2. Hey, okay, not yet. So magnitude of z is less than square root of 4 plus 2 square root 2, which is, so 2 square root 2 is square root of 8, close enough to 3, I think. So square root 7 say थोड़ा छोटा. Yeah, it's bigger than 2, but oh yeah, so it's obviously less than, right? So 2 square root 2, huh? 4 plus 2 square root 2 is less than 4 plus 3, right? So square root ले लो दोनों side पे. So square root of 7 is obviously less than square root of 9, which is equal to 3. That means magnitude of z is less than 3. So A is correct. What about B? Magnitude of W bigger than 4. Always. Minimum value क्या होगी? Minimum value is just 3 minus square root 5. Yeah. राइट जब वो एकदम अपोजिट साइड पर रहेगा या ऑब्वियसली. तो क्या ये चीज, ओ नहीं, आपने कहा मैक्सिमम अचीव वांट लेस देन 4. ओके, नो नो दैट्स नॉट. लुक, एक पॉसिबिलिटी को 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 के बहुत पास में आ जाए, एंड दैट वुड बी ऑब्वियसली बिगर देन 4 यार. सो बी इज रॉन्ग. इन लोगों ने जो बी किया है दैट इज इनकरेक्ट. ये तो अपन डायरेक्टली देख सकते कि करेक्ट नहीं है. एंड ओके, देन ओनली ए इज करेक्ट एंड सी इज करेक्ट. तो ए करेक्ट होना मुझे अभी भी ऐसा कोई प्रॉपर मेथड नहीं थी करने के लिए, बट हो गया. चल ठीक है. ओके, नेक्स्ट मेरा गलत हुआ है 8. सो 8 का मैंने ए दिया है और उन लोगों ने ए बी सी बोला है. सो इफ दीज टू इक्वेशंस हैव एग्जैक्टली वन कॉमन रूट, द वैल्यू ऑफ ए इज oh yeah, ये अपन ने उस टाइप से किया था, राइट, मुझे याद आ रहा है. सो अल्फा स्क्वायर माइनस ए अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0, एंड अल्फा स्क्वायर, तो जो भी कॉमन रूट है मैं उसको अल्फा बोल रहा हूँ, माइनस 4 अल्फा प्लस, राइट, दिस थिंग इज ए एक्चुअली, या प्लस ए इक्वल टू 0. सो अगर मैं इसको सबट्रैक्ट कर दूँ, जस्ट हैव ए माइनस 4, सो सेकेंड माइनस 1 कर रहा हूँ, प्लस ए माइनस 2 इज इक्वल टू 0. So alpha is just 2 minus a upon a minus 4. और फिर ये चीज अपन किसी भी एक इक्वेशन में इनपुट कर सकते हैं, that will give us something like, I don't know, cubic equation. चलो पहले इक्वेशन इनपुट करने का ट्राई करते हैं. सो अल्फा स्क्वायर में ऑफ कोर्स a minus 2 का स्क्वायर आने वाला है. दिस इज व्हाट, इट्स लाइक नेगेटिव ऑफ a minus 2 upon a minus 4. सो a minus 2 का स्क्वायर तो आएगा ही, देन नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव, एंड देन a into a minus 2 into a minus 4, because yeah, and then plus 2 into a minus 4 का square is equal to 0. So a square minus 4a plus 4, and then this is a square minus 6a plus 8, but that times a, so a cube minus 6a square plus 8a, and then finally ये चीज, so a square minus, ठीक है, 2a square, then minus 8a, तो minus 16 हो जाएगा यहाँ पे, and then 16 times 2 is, right, 32. So look, a cube, a square, this will be negative 3a square, I think, because कुछ और a square की टर्म्स है जो मैंने छोड़ दी. I don't think so. Right. फिर a की टर्म्स, so minus 4a plus 8a is just 4a, and then this is minus 12a, and plus 36 is equal to 0. और so 8 का मैंने a दिया था, दैट मीन्स कि a इक्वल टू 3 एक रूट अपने को ऑलरेडी पता. तो या ऑफ कोर्स यहाँ पे तुम्हें 3 कॉमन फैक्टर्स दिख रहे हैं. सो a स्क्वायर इंटू a माइनस 3, नेगेटिव 12 इंटू a माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो a माइनस 3 इंटू a स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स a इज इक्वल टू 3 और a इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3, राइट. इनफैक्ट प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3, प्लस स्क्वायर रूट साथ में वो भी डालता है. So yeah, B and C are also correct. So 8, yes, A, B, C are correct. Let's go to 9th. 9th का मैंने A दिया, उन लोगों ने वापस A दिया है. A, B, C, whatever.
equations of possible common tangents to these two. Okay, let's do it. So yeah, of course. क्या करना था मैं? Yeah, right. So जो फर्स्ट वाला है इसका तो अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इनफैक्ट अपन सेकंड वाले को निकाल सकते हैं, इतना हार्ड नहीं है ना. सो फर्स्ट वाले का रहेगा y t let's say t1 equal to x plus 8t square. अब x की जगह पे मैं x minus 3 यूज करूंगा, प्लस a क्या है, a is just 2, so 2 times of t square, so 2 times of t1 square. और दूसरे वाले का जो टेंजेंट रहेगा that thing is just once again y t, so यहाँ पे y की जगह मैं x यूज करूंगा, y let's say t2 equal to x, so y minus 3 plus 8t square, once again just same kind of thing, so 2t1 squared something like that. तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई टी वन प्लस टू टी वन स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, और ये हो जाएगा x टी टू माइनस वाई प्लस थ्री माइनस टू टी वन सॉरी टी टू स्क्वायर इक्वल टू जीरो. तो अगर मैं कंपेयर करूँ, इट्स जस्ट वन अपॉन टी टू इक्वल टू टी वन नेगेटिव टी वन अपॉन नेगेटिव वन, सो इट्स सेम थिंग एनीवे, इक्वल टू 2t1 square minus 3 upon 3 minus 2t2 square, something like that. Well, of course, you can just say okay, t2 is just 1 upon t1, तो उसको यहाँ पे put कर दो, so then t1 is equal to 2t1 square minus 3 upon 3 minus 2 upon t1 square. Oh nice, this actually does yeah, this would cancel out unless अगर ऐसा हो गया कि t1 is equal to square root of plus minus square root of 3 upon 2, in that case in that case ये तो cancel हो जाएगा, so that's one possibility, right? That that gives like okay, वो x equal to y times okay plus minus square root of 3 upon 2, that's not going to work. No, that won't work, क्योंकि अपन ये ग्राफ किया हुआ है, we know that it actually doesn't work, right? ये इसका ग्राफ कैसा रहेगा? पहले का क्या है, पहले का 3,0 वर्टेक्स है, दूसरे का इस टाइप से, तो समथिंग लाइक दिस. हाँ, राइट. आई मीन आई एम स्टिल कंफ्यूज कि यहाँ पे 3 टेंजेंट्स कैसे आ रहे हैं, बट लुक्स लाइक आ रहे हैं. प्रोबेबली ऐसा हो रहा है कि ये इनफैक्ट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, एंड इंस्टेड ये जस्ट इस टाइप से है. नॉन इंटरसेक्टिंग दैट वुड मीन कि हाँ 3 टेंजेंट्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक टेंजेंट हो सकता है, ये एक टेंजेंट हो सकता है, यहाँ पे कैसा टेंजेंट हो सकता है, व्हाटएवर. बट ये जो चीज है x इक्वल टू समथिंग, सो ये यहाँ से पास हो रहा है, एंड डजंट मेक सेंस यार. ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ये सिमेट्रिक ऑलरेडी है और फिर ये इसको भी टेंजेंट है उसको भी है, नॉट पॉसिबल, राइट? सो आई एम थिंकिंग कि t इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3/2 पॉसिबिलिटी नहीं है अपनी. then we can write this differently. We can write this as क्या हो जाएगा, 2t1 square minus 3 upon let's see 3t1 square minus 2. Oh, okay, this is different in fact. Oh, sorry, yeah, that is very correct. मुझे लगा था कि मुझे यहाँ पे भी 2t square नहीं मिलेगा वैसा. Yeah, so 3t1 square minus 2 और फिर t1 square ऊपर जाएगा, that's equal to t1. So either t1 can be 0, t1 equal to 0 would just give x equal to something like, oh no, but फिर 1 upon t2 क्या होगा, वो तो not defined जाएगा. But at least no tangent मिल जाएगा, so x equal to 3. X equal to 3 is, no, it's not a tangent. It's not tangent to both of them. एक को है tangent but दूसरे को नहीं है, so this is wrong. Other choice is that 2t1 cube minus 3t1 is equal to 3t1 square minus 2, and that means 2t1 cube 3t1 square negative 3t1 negative 2 equal to 0. देखा सा लग रहा है ना? Yeah. Oh, sorry, it should be positive actually. Okay, whatever. एक तो ऑब्वियस सोल्यूशन -1 रहेगा क्योंकि सिमेट्रिक था अबाउट y इक्वल टू x, एंड
x plus y equal to something that could be a tangent, right? अब जैसे अपन ने अभी अभी देखा था, तो एक तो नेगेटिव वन हो सकता है. लेट्स ट्राई फैक्टरिंग दैट आउट. इनफैक्ट फैक्टर भी करना डायरेक्टली. हाँ, इस टाइप से कर लो ना, डिवीजन करने की जरूरत नहीं है. सो नेगेटिव टी वन स्क्वायर, oh it should be positive t1 and then negative, wait, what? Oof. And that t1 gets cancelled and then it's just 3t6 1 2, right? क्या गलत हुआ मेरा, क्या गलत हुआ? It's like minus 4 t1 but then plus 2 कैसे, या फिर plus 4 होना चाहिए था. क्या मैंने कुछ गलत कर दिया यहाँ पे? This is like 3 and then so t2 is just 1 upon t1. मैंने यहाँ पे ये चीज यूज की. It's like this. Okay. Oh sorry, plus sorry, समझा क्या गलत हुआ. t1 इक्वल टू 1 नहीं, t1 इक्वल टू नेगेटिव 1 चाहिए ना. पर स्लोप क्या है फॉर, या श्योर. सो t1 इक्वल टू नेगेटिव 1 चाहिए रहेगा आपको. एंड दैट मीन्स 2t1 क्यूब प्लस 2t1 स्क्वायर्ड माइनस 5t1. ये तो और भी गंदा हो रहा है यार. माइनस नहीं, ओके हो गया ये प्रॉपरली हो गया इनफैक्ट. So this is just t1 plus 1 into, let's see, 2t1 square minus 5t1 and plus 2 equal to 0. So ये दो और पॉसिबिलिटीज रहेगी. So इसको मैं फैक्टराइज करूँ तो 2t1 square minus 4t1 minus t1 plus 2, so t1 minus 2 into 2t1 minus 1. So either t1 is negative 1 or 2 or negative 1 upon 2. Right, तो अपने को ये तो मिल गया. And now we can figure out what the tangent is and we will be done. So अगर t1 equal to 1 है, if t1 equal to 1 then it's just, oops, sorry, it should be negative 1 because, yeah, so अगर negative 1 है then it's just x plus y. 2 minus 3 is just 1, so x plus y equal to 1. That's one thing. It could also be 2 अगर रहा then it's just x minus 2y. 4 into 8 minus 3 5, so plus 5 equal to 0, right? So x minus 2y plus 5, yeah, that's also there. और फिर negative 1 upon 2 भी काम कर ही जाएगा. And then when it's negative 1 upon 2, it's just x plus y upon 2 plus, let's see, so this is 1 upon 2 minus 3 and this would be 2x plus y equal to 6 minus 1 5, so 2x plus y equal to 5. Wait, what? Why is this negative? So it's supposed to be, oh, I think it's supposed to be positive 1 upon, yeah, maybe वो positive 1 upon 2 था, not negative 1 upon 2 because it's 2x, so 2t1 minus 1, right? Yeah, of course. Then ये चीज negative रहेगी, then this is like this. Done. So 2x minus y equal to 5. Of course, वो भी यहाँ पर है. So 9, got it. Let's go to 12. 12 अगला incorrect है. So 12 में मैंने A किया, उन लोगों ने B and C दिया है. So consider these. So okay, planes में तीन दिए हुए हैं, L1, L2, L3 की lines of a description of the plane. Right. Then okay, at least 2 of the lines these are non-parallel, so the lines are parallel. ठीक है ना. तो तुम्हें नॉर्मल वेक्टर्स दिए हुए, तुम्हें सिर्फ लाइन के वेक्टर्स निकालने, क्रॉस प्रोडक्ट लेने के और देखना है कि क्या वो कोलिनियर है. सो पहले इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं. 2 1 1 क्रॉस 1 negative 1 4 which is right. मैं p1 p2 का ले रहा हूँ and oh sorry, no, why is this? मैंने इस टाइप की मिस्टेक की होगी आई थिंक फिर पहले भी, क्योंकि यहाँ पे y माइनस जेड है. दिस शुड बी 0 1 एंड देन माइनस 1. वो 4 कांस्टेंट है यार, 0 1 माइनस 1. ओके, ये टाइप की मिस्टेक अगली बार से नहीं करनी पड़ेगी. सो पहले इसके लिए क्या हो जाएगा, जस्ट नेगेटिव. मैंने कोई और तो नहीं की मिस्टेक.
Yeah, looks good. So -1 is just -2, और फिर दूसरे वाले के लिए it is +2, and तीसरे वाले के लिए it's just 2. So yeah, nice. Or let's do P2 P3. So 0 1 -1 and then cross 3 2 1. Okay, तो पहले वाले के लिए just 1, minus of minus is 2, so 3. दूसरे वाले के लिए it's -3 and 0, so just -3 once again. और तीसरे वाले के लिए it is 0 -3, so it's -3. So yeah, as you can see ये दोनों कोलिनियर है because ये दोनों -1 1 1 के basically integral multiples है. So yes, so that means हाँ, in fact L1, oh okay, L1 is of P2 and P3. तो अपन जो दूसरी लाइन निकाली वो L1 थी, और जो पहली लाइन अपने निकाली P1 P2 that would be L3. तो L1 L3 जो है वो पैरेलल है, of course जो या वो रहेगा वो दोनों भी पैरेलल रहेंगे. दैट मींस या लाइक ओके यस, सो बी एंड सी आर डेफिनेटली करेक्ट. मैंने ए क्यों किया होगा, इसमें एक मिस्टेक हुई होगी, राइट, इसलिए मिस्टेक टाइप कुछ भी इसे मैंने यहाँ पे अभी कर दी. या तो ये 1 -0 1 -1 लेना चाहिए था. गेट इट. सो यस, एटलीस्ट 2 ऑफ दीज लाइंस आर पैरेलल. वेरी करेक्ट. सी क्या है, द 3 व्हाट, oh so these intersect in a line. Seriously, how? 3 planes intersect in a line, हाँ. अच्छा, अगर वो एक लाइन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि देयर आर लाइक इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टू दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन. अगर P1 P2 P3 तीनों कंसिडर कर रहे हैं तो वो जो सिस्टम रहेगा उसकी इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. दैट मीन्स कि ये डिटर्मिनेंट जो रहेगा दैट शुड बी 0. ओके, लेट्स जस्ट डू इट. पर वो तो 0 है ही, अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, राइट. Cool. And at the same time, what must happen कि 1 1 और y का यहाँ पे क्या है 2, और z का क्या है 1 -1 and 1. इनफैक्ट y और z नहीं लेके x और z लेते हैं, सो x के लिए 0 आएगा ना, दैट्स व्हाई. तो इसमें x का 2 0 और 3. ओके, ये तो x और z के कोएफिशिएंट्स हो गए. अपने को कांस्टेंट टर्म्स भी देखनी है, सो 4 and 8. ये चीज का जो डिटर्मिनेंट है दैट शुड बी 0. एंड well of course it's the same thing as saying that 2 0 3 1 -1 1 और 1 1 2, इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा. yeah, so subtract from there. Of course, okay, this is obvious because ये subtract करो इसमें से, and that would just leave us with 2 0 3 1 -1 1 and then 0, sorry not 0. In fact, subtract मत करो, add करो. So 2 0 3 done, दोनों same चीज है. Then that means yes, this determinant is 0, and yeah, in that case infinite number of solutions रहेगा system. Okay, that means intersecting in a line, right. Next, suppose 3 real numbers a b c are in G. Oh sorry, 13 तो गलत है भी. 17. Okay, a line segment of length 7 units has one of its end on the x-axis and other on the y-axis. Okay, और इसका राइट ये अपने किया हुआ है, इसलिए याद है. A point divides the line segment in the ratio 3:4. So right, 3:4 whatever. Let's say this thing is x0, this thing is y0. Then this point will be 1/7 of 4x0, 3y0. So x is just, so इसके जो coordinates है that's x equal to 4/7x0 and y coordinate is 3/7x0. But then you know that x0 squared is y0. x0 squared plus y0 squared is equal to that's equal to what? It is equal to 7 square, right? Length square, and that means x0 upon 7 का square plus y0 upon 7 का square, that is equal to 1. That should make sense, right? Yeah, a point divides the segment in the ratio 3:4. Point P is an ellipse. Okay, yeah, it makes sense for sure because x0 upon 7
that's just x upon 4. So it's x upon 4 का square, x square upon 16 plus similarly y squared upon 9, and that's equal to 1. So जो ellipse है उसकी eccentricity क्या है? It's just 9 upon 16 is equal to 1 as e square, right? So e square is just, oops, ये क्या हो गया? Line चली गई. ठीक है, 7 upon 16 and oh, okay, 17th का उन लोगों ने ए बी सी दिया है, मैंने सिर्फ ए सी दिया था. सो ए सी में डाउट भी नहीं करूंगा, प्रीटी श्योर मैंने करेक्ट किया होगा. मतलब देख ही रहा है ना, लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक सेक्टर इज 2b square, so 2 into b square a है upon a is just 4, so it's gonna be 9 upon 2. That's obvious. तो मैंने a और c तो करेक्ट किया होगा. b क्या है? Eccentricity 7 upon 9. No, that's not correct. ऐसा नहीं है. Eccentricity is square root of 7 upon 4, and that's not 7 upon 9 at all. तो 17th b उनका wrong है. Okay, let's go to the next one. Next 20. So 20 is this thing. तो 20 का मैंने ए बी डी किया, उन लोगों ने सिर्फ बी और डी किया है. मतलब कि x equal to 1 is a point of local minimum. That's wrong according to them. So let's graph this, of course, because case wise function को best तो graph करो तो ही manage होते. तो 4 minus x square when x is less than or equal to 0. Negative x square is something like this. So 4 minus x square will be like this, right? ये चीज 4 हो जाएगी, whatever. And then it's 2 minus 3x when x is between 0 and 1. So 0 यहाँ पर है, 1 let's say यहाँ पर कितने होगा. ये जो चीज है वो 2 हो जानी चाहिए, then this is 1. Okay, so when x is equal to 1, well 2 minus 3 it's just negative 1, तो ये negative 1 पे जाएगा. And yeah, and when थोड़ा सा स्केल इसकी थोड़ी सी अजीब लग रही है ना, या थोड़ा अच्छा ग्राफ करते हैं. So राइट, ये और थोड़ा सा और इसको बड़ा ही करता हूँ. 1 2 3 4 समवेयर ओवर देयर. तो पैराबोला कुछ तो भी ऐसे दिखेगा अपना, राइट. और उसके बाद में क्या है? 2 minus 3x. सो व्हेन x is equal to 0 it's just 2. सो 0 लेस देन x, स्ट्रिक्टली लेस देन, और यहाँ पे इक्वल टू. सो ये यहाँ पे क्लोज रहेगा और यहाँ पे ओपन रहेगा. और when x is equal to 1, this would be 2 minus 3, so it's negative 1. So negative 1 somewhere over here. यहाँ पे closed. A line like this. और फिर वापस एक लाइन आ गई 2x minus 4 when x is bigger than 1. So when x is equal to 1, ये हो जाएगा negative 2, which is somewhere over here. तो यहाँ पे close, sorry, open, and फिर उसके बाद में increasing है. So something like this. Whatever. Yeah. तो क्या करना है अपने को इसका? अपने को देखना है कि क्या x equal to 1 is a point of local minimum. x equal to 1 पे ये चीज है, और नहीं होता अगर यहाँ पे क्लोज होता. मैंने शायद से वही किया, मैंने वही टाइप की मिस्टेक की होगी, इसलिए मेरा गलत हुआ. बट द थिंग इज नहीं, यू कैन सी कि यहाँ पे इस रीजन में पॉइंट्स है जो कि इससे छोटे हैं y वैल्यू में. या इट्स नॉट लोकल मिनिमम. So yeah, A is wrong, and B और C तो मैं वो क्वेश्चन क्या था, B and D मैं क्वेश्चन ही नहीं करूँगा. Okay, 27. If sin x plus, हाँ, कंडीशन का क्या है? मैंने B दिया है, उन लोगों ने B and D दिया है, right? So sin x plus sin 2x plus sin 3x square and okay is equal to 1. Cosine x can have the value equal to. So let's do it. Yeah. So okay, sin x plus sin 2x. Doable, of course. So this is sine of nd upon 2, 3 x upon 2, I think, because yeah, and then sine of a plus l, so 4x upon 2 is just 2x upon sine of x upon 2, right? इस पूरे का स्क्वायर करना अपने को एनीवे. सो इनफैक्ट वो तो अपन कोसाइन स्क्वायर भी यहाँ पे करने ही वाले हैं. दैट मीन्स इसका स्क्वायर प्लस कोसाइन स्क्वायर 2x, बिकॉज दूसरे इसमें वो आएगा. तो ये तो गया इक्वल टू 1. So sine squared of 3x upon 2 equal to sine squared of x upon 2, and well that means 3x upon 2 is equal to plus minus x upon 2 plus n pi. तो हो सकता है कि ये प्लस x यानी कि 3x upon 2 plus minus x upon 2 is equal to n pi.
सो अगर ये प्लस वर्जन रहा देन दैट वुड मीन 2x इक्वल टू n पाई, सो x इक्वल टू n पाई अपॉन 2. अगर ये नेगेटिव वर्जन रहा देन just 1x equal to n pi, so x equal to n pi, which is actually already covered in this thing because of course so n even rahega then this is covered. So x equal to n pi upon 2, हाँ okay. well of course अपने को ये चीज जीरो नहीं रखनी है, then that means yeah that so x upon 2 equal to n pi upon 4, this cannot be a multiple of pi, otherwise we are done. So n cannot be a multiple of 4, right? तो कौन सी वैल्यूज चल सकती है x अपॉन 2 की, x की वैल्यूज whatever it is 2. so x अपॉन okay this is the same as saying कि हाँ ठीक है, अपने को समझ गया ना कि n should not be multiple of 4, then it's okay. so x can be okay, इसको यूनिट सर्कल ग्राफ करते हैं because why not. so क्या x 0 हो सकता है? नहीं हो सकता क्योंकि वो 4 का मल्टीपल है. क्या x 1 हो सकता है? yes. so 1 पाई अपॉन 2 यहाँ पे आएगा, 0 नहीं आ सकता. क्या x2 हो सकता है? yes it can be because on a multiple of 4, so pi आ सकता है, very correct. क्या x नेगेटिव 3 हो सकता है? so yes it can be. और बस इतना ही, यही 3 सॉल्यूशंस रहने वाले, राइट. फिर स्टिल अपन ये चेक कर लेते कि अगर x सपोज हाँ 4 राइट, अगर n 0 रहा, x इक्वल टू 0 अगर अब मैंने सेट किया तो क्या होगा? x इक्वल टू 0 दैट मीन्स साइन, ओके ये तो तीनों 0 हो गए. कोसाइन x कैन बी प्लस माइनस 1, कोसाइन 2x is 2c square minus 1, right? so it can only be yeah, अगर कोसाइन प्लस माइनस 1 है then 2c square minus 1 is just 1, okay. in cosine 3x it is 4c cube minus 3c, so plus minus 4 minus plus 3, so it's plus minus 1 basically. तो अगर cosine positive है then this is also positive. oh yeah sure. so अगर cosine x negative 1 है और ये negative 1 है then negative 1 plus 1 negative 1, that's negative 1 का square, that's also equal to 1, yeah. so okay तो possibility है अगर cosine x negative हो गया then this actually does make sense. यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो रहा है, राइट. तो अगर sin x 0 हो रहा है then that means cosine x must be okay, it must be negative and in that case वो ये वाला पॉइंट इनफैक्ट करेस्पॉन्ड कर रहे अपन, राइट. तो ये 3 ही सॉल्यूशंस है, ये सॉल्यूशन नहीं, तो इस पॉइंट पे कोसाइन पॉजिटिव 1 हो जाएगा which is not correct. तो ये नहीं है, ये 3 सॉल्यूशंस है. so let's see ये सॉल्यूशन पे कोसाइन की वैल्यू क्या है. it can be 0 of course, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे नेगेटिव 1 है, so b and d are the way to go. प्रीतिसम का क्या दिया? हाँ उन्होंने b और d दिया, मैंने इसे b किया था, आई थिंक मैंने मिस कर दिया स्पॉट, बट ओके नेक्स्ट. so next is 28. 28 is let a and b be events such that probability of a not happening is 4/5 and probability of b happening is 1/3. so मैंने क्या किया? 28 का मेरा आंसर a and d है, a and डी, अच्छा, और उन्होंने ए एंड सी दिया है. ओके ये टर्म क्या होती है इंडिया इंडिपेंडेंट? सीरियसली ओके मुझे एक बार सर्च ही कर लेना चाहिए, ये होने के बाद में मैं सर्च, इनफैक्ट ऐसा 1000 बार और आया हुआ है, राइट, इस सेम एक्सरसाइज में, तो इट्स वर्थ सर्चिंग एक्चुअली. एनीवे सी है कि नहीं वो तो अपन देख सकते हैं ना. 28 का ए एंड डी मैंने दिया था, हम लोगों ने ए और सी दिया है, क्या सी करेक्ट है वो आपको देखना पड़ेगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट हैपनिंग इज 4/5, दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग इज 1/5. एंड डायग्राम में ड्रॉ करो. सो ए हैपनिंग इज 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैपनिंग इज 1/3. ओके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग गिवन बी इज 1/6, सो 1/3 into 1/6 1/18 एंड b is 1/6 like 6/18, तो ये 5/18 रहेगा बचा हुआ पार्ट. and probability of a happening is 1/5, so this thing is 1/5 minus 1/18. what do we want? We want the probability of b given a, which is just 1/18 upon a की probability, which is just 1/5, so it's just 5/18, right? oh yeah, so c is like correct, sure. so मैंने c क्यों नहीं चूज किया, I don't know, और मैंने डी चूज किया फॉर सम रीजन. सीरियसली मुझे इसका मतलब नहीं पता है.
Independent in terms of what? So, okay, whatever. Next, 29. 29 में मैंने C D किया है, उनका आंसर A and B है. In the consist of these equations, which of the following is not okay? Of course, ये मेरा क्लासिक फॉल्ट है कि मैं हमेशा ये देखता नहीं हूँ कि क्या नॉट करेक्ट करना है, कि अपने को करेक्ट करना है. हमने बोल्ड भी करके दिया था. ओके, तो उस टाइप का मिस्टेक हुआ हुआ. फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. मैंने सी और डी किया है, तो आई बिलीव कि सी और डी करेक्ट स्टेटमेंट्स हो गए. सो ऑल द इक्वेशंस में हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स. ओके, एक एग्जांपल क्या चाहिए अपने को? डिस्टिंक्ट रूट्स, ऑफ कोर्स डिस्क्रिमिनेंट शुड बी पॉजिटिव, सो बी स्क्वायर्ड इज बिगर देन ac. सिमिलरली सारे और भी ओके हो सकता है ना. लेट्स से कि उनमें से कोई तो भी एक निगेटिव है पर उसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है. सो फॉर एग्जांपल अगर बी उसका लेट्स से बी नेगेटिव 100 है, ए और सी 1 and 1 है, राइट? देन ऑफ कोर्स बी स्क्वायर इज बिगर देन ac, बट यू विल आल्सो हैव दैट कोई भी पॉजिटिव नंबर इज बिगर देन b टाइम्स a और b टाइम्स c व्हिच इज नेगेटिव. तो बाकी दोनों डिस्क्रिमिनेंट b इनफैक्ट अपने आप पॉजिटिव जाएंगे. दैट मींस ओके, c इज वेरी मच, इट कैन बी करेक्ट. That means it's not the correct option. और D क्या है? All of the equations may have rational roots. Of course, why not? तुम देख सकते हो ना यहाँ पे मैंने इंटीजर्स ले लिए थे, तो तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट भी इंटीजर आ रहा था. That means yeah, these can have. Oh sorry, इंटीजर आना सिर्फ काफी नहीं है, अपने को परफेक्ट स्क्वायर भी चाहिए, right? So these may have rational roots. I think it's possible. It's certainly possible, right? यानी कि b square minus 4ac should be some kind of perfect square or something like that. And a is not equal to b is not equal to c. That's also possible. Oh, okay. So हाँ, d थोड़ा सा अजीब है बिकॉज रैशनल रूट था. नहीं यार, मुझे नहीं पता कि इसमें क्या कर सकता हूँ मैं. आई नो दैट b square minus 4ac should be some kind of perfect square. ओके, लेट्स से अपन इंटीजर्स में नहीं काम करके पूरे रैशनल नंबर्स में काम करें. इज दिस सो फार फेच्ड कि ये पॉसिबल नहीं है? आई गेस इट्स पॉसिबल. थिंक इट इज पॉसिबल, बट ओके लेट्स जस्ट लीव इट लाइक दैट बिकॉज ये बहुत मुझे लंबा काम करना पड़ेगा इस पे. नॉट अप फॉर दैट. फाइन. यहाँ पे 4 is easy, सिर्फ AC चाहिए. But still, it's just really bad. ठीक है, तो D का अपन छोड़ रहे हैं. ये इनफैक्ट मुझे प्रॉपरली खुद करना पड़ेगा. और इन लोगों ने क्या किया है? 29 का A and B are not correct, ऐसा उन लोगों ने कहा. That means A और B options correct है, but A and B statements incorrect है. So all of the equations may have imaginary roots. So you are saying like B squared is less than AC, और इसका summation कर दो, like summation of A squared is less than summation of AC, हाँ? Of course it's incorrect because summation of A square minus summation of AC is actually bigger than 0, but यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, right? So this is just not correct. So yeah, और क्या है? All of the equations may have real and equal roots. Real roots, no problem, but equal roots. Why is this? Oh yeah, if these have equal roots, then the only conclusion is that A equal to B equal to C, which is wrong. This is really wrong. At least उनके magnitudes तो same हो जाना चाहिए, right? Yeah, उनके multiplications भी. और oh yeah, then that makes sense. A equal to B equal to C would be the thing. So B is incorrect. Okay, 29 done. Let's go to 35. 35th मैंने A B किया, उन लोगों ने सिर्फ B दिया है. Let's look at this. तो ये तीन एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाएंगे if. So the same thing as previous one. इनका सिर्फ तुम्हें नॉर्मल वेक्टर्स देखने और देखना है कि क्या नॉर्मल वेक्टर्स इनफैक्ट आर दे कोलिनियर और समथिंग. तो सॉरी, नॉर्मल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट. या पहले इसका नॉर्मल वेक्टर है जस्ट 1, -1 and 1.
net cross दूसरे इसका नॉर्मल वेक्टर which is let's say क्या ये lambda 3 and 2. So this will be, so first के लिए it's just -2 -3 which is -5. Second के लिए it's lambda -2. Third के लिए it is 3 plus lambda, so it's lambda plus 3. Okay, और जो दूसरे दो पेयर्स है it's 1 -1 1 क्रॉस दूसरा है 3 lambda 1. So ये क्रॉस कराएगा पहले इसके लिए है -1 नेगेटिव लैम्डा, दूसरे इसके लिए है 3 -1 आई थिंक, सो 2, और थर्ड के लिए लैम्डा -3, लैम्डा प्लस 3. ओके, सो वी वांट दिस टू बी कोलिनियर, दैट मीन्स हे ये तो सेम है, so that means lambda -2 should be equal to 2. That just means lambda equal to 4, huh? So lambda 4 equal is the only solution, but that can't be. ये कोलिनियर है मतलब कि lambda plus 3 lambda plus 3, okay, वो तो ऑलरेडी इक्वल है, राइट? सो या और तुम बोल रहे हो कि lambda equal to -3 भी एक, oh yeah of course. so अगर ये -3 हो गया then ये 0 और 0 हो जाएगा, फिर हो सकता है कि वो इसका एक्चुअल में मल्टीपल हो, ना कि इक्वल हो डायरेक्टली, बट मल्टीपल हो, स्टिल इट वुड बी 0 and 0, राइट? ओके, सो अगर मैं लैम्डा इक्वल टू -3 पुट करता हूं, then this is just -5 -5 0 and this thing is 2 2 0. ओके, मुझे इसमें भी ध्यान देना पड़ेगा अगली बार से, ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं, ऐसा मतलब नहीं कि हमेशा है गई, हो गई ऑब्वियसली, बट इसका ये मतलब नहीं है कि ये वेक्टर्स भी इनफैक्ट इक्वल होने चाहिए, हो सकता है वो स्टिल मल्टीपल्स हो, अगर ये दोनों 0 हो सकते हैं तो. Okay, cool. So what does this mean? This means कि lambda is equal to -3 is also solution. Okay, और 35th मैंने A B दिया था, but अच्छी बात है, मुझे पहले समझ गया फिर इनफैक्ट कि -3 is also solution, but given answer is B only, so A is not correct. Oh yeah, so triangular prism of course, and that means पिछली बार जैसा हुआ था ना कि वो एक लाइन पे डिसेक्ट कर रहे थे, तुम्हारे पास में ये 3 प्लेन्स है, अभी वो ट्रायंगुलर प्रिज्म बना रहे हैं, मतलब कि इसमें तीनों प्लेन्स इंटरसेक्ट एक पॉइंट पे नहीं कर सकते, बट अगर तुम ये प्लेन को यहाँ पे पुल करना शुरू कर दो तो फिर एक पॉइंट के बाद में यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे फिर एक सिंगल लाइन मिल जाएगी, तो वो अपने को नहीं होना चाहिए. एंड व्हाट दैट मीन्स इज कि यहाँ पे इन्फिनिट सॉल्यूशंस नहीं चाहिए. फॉर दैट ये क्या, ये है, इसको मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ, 1 -1 1 lambda 3 2 and what's this 1 3 and 2, right? So the thing is कि ये जो डिस्क्रिमिनेंट रहेगा that should also be 0. ये तो है ही, अपने को पता है, but this should also be 0. Only then, oh sorry, this should not be equal to 0. क्योंकि अपने को अपने को तीनों एक साथ इंटरसेक्ट करने में नहीं चाहिए, राइट? अगर अपने को चाहिए रहते then it would be that this is equal to 0, but अपने को नहीं चाहिए. That means okay, cool. So let's do it. -1 1 1 3 2 3 and lambda 1 1. This, sorry, 1 2, right? This should not be equal to 0. थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, subtract of course, maybe subtract that as well, like that. 2 से मल्टीप्लाई कर subtract कर सकते हैं, just 5 -1 1 1, this would be 0, this would be 1, then lambda 1 2. Okay, इसको इसमें subtract कर डालो, then just -1 5 lambda and then it's 1 0 1 0 1 1, right? Cool. अब इसको subtract कर सकते हैं, yes, it should be -1 1 0 5 lambda plus 1 0 0 1 1, and this should not be equal to 0, so it's the same thing as saying that 1 0 0
0 1 1 and -1 -5 lambda plus 1. This is not equal to 0. Let's do it. इसका एक ही चीज आएगी कि ये जो माइनर है that's the only existent, and that means lambda plus 1 minus 5, that is not equal to 0. Actually plus 5 because minus minus. So yeah, and what does this mean? Lambda should, wait, what? It should be plus 5, right? Something's wrong. Oh, this should be plus 5. This should be plus 5. Then yeah, this should be -5. Lambda is equal to 4. So not equal to 4. Right. तो A in fact incorrect है. 35th का A नहीं होना चाहिए. मैंने A दिया है, उन लोगों से B दिया है. Okay, next. Let's go to 41st. हाँ राइट, ये क्वेश्चन ये इनफैक्ट मुझे आया नहीं है. मैंने सिर्फ A, ओके, सिर्फ A इन लोगों का करेक्ट है, और ये क्वेश्चन मुझे पहले आया नहीं था, तो अब मुझे आ जाएगा बिकॉज या. So P of 1 plus P of 2 equal to 0, right? That means A plus B plus C plus 4A plus 2B plus C. मैंने तब ये चीज नहीं की थी, मैंने इस टाइप का एनालिसिस नहीं किया था. So 5A plus 3B plus 2C is equal to 0. Alright. और P of -1 is also 0, such A minus B plus C equal to 0. So अगर अपने को एक और रूट ढूंढनी है, वी नो कि -1 एक रूट है और एक रूट 1 और 2 के बीच में, अगर अपने को 1 और 2 के बीच वाली रूट ढूंढनी है, लेट्स से वो अल्फा है, देन द थिंग वुड बी कि A अल्फा स्क्वायर प्लस B अल्फा प्लस C इक्वल टू 0. इस टाइप का अपने को इक्वेशन क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? वो अपन इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से ही क्रिएट कर सकते हैं. सो लेट्स से दैट A ऑफ दिस थिंग एंड B ऑफ दिस थिंग अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं. This will work, I think. Yeah, and that means 5A plus B times A plus 3A minus B, okay, plus 2A plus B is equal to 0. Oh sorry, C यहाँ पे B चाहिए, यहाँ पे A चाहिए. हम चाहते हैं कि ये इक्वेशन और ये इक्वेशन रिसेंबल हो, then that would mean that B plus 2A equal to 1, so B is equal to 1 minus 2A. उसको इसमें पुट करो, then it is 1 plus 3A times A plus 5A minus 1 times B plus C is equal to 0. Cool. और फिर अपन चाहते हैं कि ये अल्फा हो, ये चीज, और ये चीज अल्फा स्क्वायर हो. That means that 1 plus 3A is equal to 5A minus 1 का स्क्वायर. So 1 plus 3A is equal to 25A square minus 10A plus 1, so 25A square minus 30A, 1 तो गया, equal to 0. So A is 0 और A is 13 upon 25. So let's try it out. अगर 0 रहा, then this equation will just become 1A minus B plus, हो चुका है ऑलरेडी. So दूसरा है कि 13 upon 25 होगा. In that case जो अपना अल्फा वैल्यू है, where is it? Yeah, ये चीज अल्फा रहेगी, right? So 5A minus 1, that will be 13 upon 5 minus 1, which is 8 upon 5. तो दूसरा जो रूट रहेगा, that will be 8 upon 5. Oh, so A is of course that thing. 8 upon 5 दूसरा एक रूट है. Cool. Let's also go for other options. So P of X is bigger than or equal to negative. I mean, yes, it's that kind of thing कि ये, हाँ ठीक है. So अपने को दोनों रूट्स मिल गए, right? दोनों रूट्स मिल गए. So can you figure out what AB? Oh no, not yet. The problem is कि यहाँ पे तुम्हें equal to 0 दिया, तुम्हें equal to something constant नहीं, मतलब non zero constant ऐसा नहीं दिया, right? That means कि अपन A B C इनफैक्ट नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि वो A तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा. अगर मैंने A को 2A कर दिया तो भी सेम इक्वेशन से रहेगा, राइट? Then that means कि एक्चुअल में तुम्हारा जो ग्राफ है वो तुम उसकी हाइट हर पॉइंट पे चेंज कर सकते हो. तो ये तो गलत हो गया यार, राइट? अपने को पता भी नहीं कि अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है इनफैक्ट, तो बी तो पूरा ही गलत हो गया. ओके, सी है कि also it's symmetric about 3/2. हाँ, तो हाँ, अगर अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 3/2 then it works.
So alpha plus beta upon 2 is 8 upon 9 plus negative 1, which is negative 8 upon 9? No, 8 upon 5, sorry. So 8 upon 5 negative 1 is just negative, sorry, 3 upon 5. And then 3 upon 5 upon 2, that is 3 upon 10. So 3 upon 10 is the point of symmetry, or this is not 3 upon 10. Okay, and what is d? P of 1, once again the same thing. अपने को a नहीं पता है, so we cannot figure that out. So 41 गलत था, 42 का मैंने a दिया है, उन लोगों ने ac दिया है. Okay. क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन इज दैट h of x in terms of f दिया है and बोला है कि f is monotonically increasing and onto function for all x. Then okay, so this is monotonically increasing function and onto for all x. Well, this is a quadratic. No, it's a cubic actually, unfortunately. Okay, this is bad. फिर बोल रहा है कि h is increasing in something, so पहले तो मैं h dash निकालना पड़ेगा. h dash is so just negative 3f squared, negative 2f plus 1, and that times f dash. So oh, this is weird. What about, okay, so roots nikalo. So negative 3 can be written as negative 3 plus 1, then this actually plus 1, so negative 3 into 1, that means negative 3f plus f plus 1. So f plus 1 into negative 3f plus 1 is equal to, okay, sorry, that times f dash. Yeah, this is the thing. So between negative 1 and 1/3, ये जो चीज रहेगी, that will be positive, I think, because this thing is essentially negative of f dash into f plus 1 into 3f minus 1, right? So between negative 1 and 1/3, ये चीज नेगेटिव होती है, ये चीज हमेशा पॉजिटिव होती है या फिर इक्वल. So we don't care what is. Yeah, that means कि ये जो चीज रहेगी पूरी चीज पॉजिटिव हो जाएगी. So it's increasing between negative 1. Oh yeah, so when f is between negative 1 and 1/3, so that means x is between f inverse of those things, because x k terms per increasing function, right? F. So yeah, a is correct. और उन लोगों ने और क्या दिया? 42 का उन लोगों ने c भी दिया. h of x has exactly 2 points of extrema. Looks like that. Wait, no. Oh no. There could also be the point कि f dash जो है वो, oh, what is this? So maybe f dash can be 0 for some point. इसलिए मैंने ये नहीं किया होगा. That's, yeah, I think ये ऐसा ही हुआ होगा. 42 का उन लोगों ने AC, right? So C is very ambiguous because we don't know कि in fact f dash जो है वो 0 हो सकता है, तो हम उसको एक्सट्रीमा कंसिडर करे कि नहीं करे. So it's not exactly 2 points. We don't know. उसका ज़्यादा points हो, right? तो 42 का C I'm not sure. पर उन लोगों ने C दिया है. 44 मैंने C दिया, उन लोगों ने AC दिया है. 44 is hyperbola passes through this. Okay, so इसके asymptotes दिए है और बोला है कि it passes through the origin and has. So first of all, let's try to graph this. X minus 2y equal to 1. That means 2. Yeah, whatever. So when y is 0, x is 1. When x is 0, y is negative 1 upon 2. So somewhere over here. And this is the line. Right, और जो normal vector है, that is 1 comma negative 2, which is like this, right? Then yeah, that means ये जो पूरा region है, this region is positive and this region is negative. So this is positive, negative, like this thing. और क्या, x plus 3y is equal to 6. So
when y0x is 6, so somewhere over here, और फिर ये 2 हो जाएगा. So this is the other line. Oh, come on. Right. And 1,3 is the normal vector. That means कि ये रीजन पॉजिटिव है, ये रीजन नेगेटिव है. और जो ओरिजिन है दैट्स ओवर हियर, तो वो नेगेटिव रीजन में आ रहा है. या ऑफ कोर्स वी नो हाइपरबोला इस टाइप से रहने वाला है, कोई और तरह से हाइपरबोला नहीं रह सकता है. Yeah, then there's only one particular eccentricity. What are you talking about? Eccentricity of the hyperbola में भी यार एक ही तो वैल्यू हो सकती है, और क्या हो सकता है? No, this doesn't make sense. एक ही वैल्यू हो सकती है. No way that there will be two values. Okay, तो 44th इन लोगों ने C दिया है, सॉरी मैंने C दिया है, इन लोगों ने A and C दिया है. उन लोगों ने वो किया होगा कि ये भी ले लो कि वो ऑब्ट्यूस एंगल वाला भी ले लो और एक्यूट एंगल वाला भी ले लो, और it's the worst. Fine, so this makes no sense because we know कि अगर वो origin से पास हो रहा है then there's only one value. और क्या हो सकता है यार, और कैसे कुछ और हो सकता है? तुम्हें लाइंस दे दिए, तुम्हें एसिम्पटोल्स दे दिए, how else can this even be? Oh, come on. I don't know. ठीक है, नेक्स्ट. तो 44th आई थिंक उन लोगों ने गलत दिया है. लेट्स गो फॉर 50 इज ये चीज. 50 का इन लोगों ने मैंने AC दिया, उन लोगों ने BD दिया है. क्या ये भी मैंने वैसे ही किया कि इनकरेक्ट था, उसको करेक्ट कर डाला टाइप. Let Z be a complex number that is defined this equation where n m are integers, then if n equal to m, the number of solutions of this equation will be finite. So first of all यहाँ पे negative m है, that means कि 0 already cut down हो गया. अगर यहाँ पे positive numbers होते तो फिर problem होती, but अभी तो ये already cut down हो गया. Okay. Yeah, then this just becomes z power n plus m is equal to 1, right? And this is basically just e power I 2k pi, right? So z is just e power I 2k pi upon n plus m, where k belongs to some kind of integer, right? तो अगर मैं इसको ऐसे ग्राफ करूँ then k equal to 0 एक solution हो सकता है, k equal to 1, k equal to 2, all the way till k equal to n plus m. No, well, n plus m तो वापस 2 pi पे आ जाएगा, so that's not the thing. n plus m minus 1, so there's exactly n plus m solutions in that case, right? Yeah. Okay, so let's see. So if n is equal to m, the number of solutions of the equation will be finite. Yeah, sure. In any case, it's going to be finite because right. I mean, look, यहाँ पे r power something. Come on, यार. You should understand it. अगर ये z power m equal to z power m होता तो फिर बहुत ही अलग चीज होती. But yeah, in that case वो r power n और r power m cancel हो जाते, and that would be like कि तुम कोई भी r की वैल्यू ले लो and this will work. But यहाँ पे वैसा काम नहीं करेगा. Right. If n equal to m, then the number of solutions of the equation will be infinite. No. So A is correct, and if n is not equal to m, फर्क नहीं पड़ता ना, because अपन already n और m general values fill कर चुके. Then the number of solutions of the equation will be n plus m. Yeah, sure. So C is correct, and if n is equal to, so D is incorrect. So A and C should be 50 का मैंने A and C दिया, उन लोगों ने भी right. I think उन लोगों का incorrect है. I have no idea कि D कैसे correct है और Q correct है, और doesn't seem obvious to me. 51st नहीं 51st नहीं 52nd. ओके 52nd का मैंने C दिया है क्यों? हाँ C दिया है और उन लोगों ने AC दिया है. ओके A vector, B vector, C vector तो मैं दिया हुआ है, बस values of alpha for which this equation has non-trivial solutions x, y, z.
doesn't look that bad. तो right, इसको मैं अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ then this is just what a vector is this thing, so 3 because a vector dot x, right? So 3 2 4 like this actually, और b vector के लिए है 0 नहीं, start में 2 है and then 0 and then 2 plus c vector, so 4 2 3, right? Or uh, yeah, equal to alpha times all, wait, what? Oh, okay, so z, I understand what's happening. So you check x into a vector minus alpha I and something like this. तो ये जो मैट्रिक्स है that's okay and all, but the thing is कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. So yeah, this would be this minus alpha, this minus alpha once again. Okay, this one is alpha. ये मैट्रिक्स डॉट एक्स वाई जेड डॉट से अच्छा प्रोसीड अप्लाइड ऑन एक्स वाई जेड, ये अपने को 0,0,0 दे रहा है. सो राइट, अगर इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ कोर्स 0,0,0 एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, दिस वुड बी द ट्रिवियल सॉल्यूशन. दूसरा सॉल्यूशन सकता है कि वो 0 नहीं है. इन दैट केस इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, ये जो मैट्रिक्स है इसका. देन या सो दिस मींस इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा. ये सब निकालो. You want to erase all of this, right? So we want the value of alpha for which, oof, ये तो बहुत बहुत बुरा होगा ये, because this is kind of like a cubic equation and just not worth doing it actually. So directly ये कर सकते हो ना, तुम इसमें options डालो. Yeah. So -1, in fact okay wait, अपन को already पता है ना कि क्या है. 52 का 52 मेरा आंसर C था, so C, okay, 8 could be one such thing and then given answer is AC. So -1 also works. That's what we are saying. I really don't want कि मैं इसको क्यूबिक में कन्वर्ट करूँ और वो सब करूँ. Just a waste of time, I think. 3 minus alpha and what not. I mean, we could do कि हम subtract करें and stuff. Maybe. Not really. Won't work यार. Just won't work. Whatever, just do this thing. अगर अपने को करना है तो क्यूबिक क्रिएट कर ही डालते ना, क्या चाह रहा है. सो सेम चीज मैं बस रिपीट कर रहा हूँ. 3 माइनस अल्फा 2 4 एंड एक और रो, एक और कॉलम रिपीट कर देते हैं. नेगेटिव अल्फा एंड 2, यहाँ पे भी जस्ट नेगेटिव अल्फा रिपीट करो. राइट, लेट्स डू इट. सो पहले ये करेंगे, दैट मीन्स नेगेटिव अल्फा इंटू अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर. राइट, फिर ये चीज, सो प्लस 4 इंटू 4 16. फिर ये चीज, सो वंस अगेन द सेम थिंग, प्लस 16 एंड देन माइनस हम ये करेंगे. सो माइनस माइनस प्लस, प्लस 16 अल्फा. उसके बाद में वी विल डू दिस थिंग. सो माइनस में दैट्स माइनस 4 इंटू, राइट, इट्स लाइक प्लस 4 इंटू अल्फा माइनस 3. और फाइनली ये माइनस पे करेंगे. सो जस्ट वंस अगेन द सेम थिंग, 4 इंटू अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0. हाँ, सो नेगेटिव अल्फा इंटू अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू अल्फा माइनस 3 plus, oh, this looks very much like I've seen this somewhere. Okay, 16 alpha. Nah, not yet. Okay, what else? 16 alpha यहाँ पे आ गया और it's just plus 32 equal to 0, something like this thing. तो okay, let's say alpha minus 3 यहाँ से common निकालो. Then this will be alpha minus 3 और this will be negative alpha times alpha minus 3. No, not a good idea. This will be the worst idea ever. इसको सिंप्लीफाई करते हैं पहले. 16 alpha plus 32 is like, इसको क्यूबिक में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है. तो लेट्स डू इट. अल्फा इंटू अल्फा माइनस 3 का स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा प्लस 9, दैट थिंग इज इक्वल टू, मैंने इसको बस उधर भेज दिया. एंड देन इट्स गोना बी 8 अल्फा माइनस 24 प्लस 16 अल्फा
plus 32, right? So 8 alpha plus 16 alpha is 24 alpha. That okay, 32 minus 24 is just plus 8. It's equal to this thing. So alpha cube minus 6 alpha square. फिर यहाँ पे आएगा plus 9 alpha, but that minus 24 alpha, that is just negative 15 alpha, I think. Right. और उसके बाद में सारे constants. So this negative 8 is equal to 0. Looks good. वैसे negative 24 कैसे आया था? 8 times this, of course. मैंने 8 ऑलरेडी सोल्यूशन एक क्रिएट कर लिया। अच्छा, तो तुम्हारे हिसाब से -1 भी सोल्यूशन चाहिए, राइट? सो लेट्स डू दैट थिंग। अल्फा क्यूब माइनस अल्फा स्क्वायर -5 अल्फा स्क्वायर। हाउ? Oh, sorry, -1, not +1. Yes. So alpha plus 1, alpha squared minus 7 alpha, -8 equal to 0. So that means alpha plus 1 into alpha minus 8 into, okay, alpha plus 1 का square equal to 0. So the दो ही solutions है, alpha equal to 8 and alpha equal to -1. That means A and C. So 52 का A and C correct है, मैं सिर्फ C किया, I don't know, तब मुझे ये मिला नहीं होगा, मैंने किसी मिस्टेक कर दी होगी। Let's go to 56. 56 का मैंने A and D दिया, हम लोगों ने C and D दिया है। Equation of common tangent to this and this may be, right? मैंने A और D किया, उन लोगों ने है किया हुआ C and D. Oh, so यहाँ पे +4 का -4 हो गया, बस इतना ही डिफरेंस है। Probably some kind of silly mistake. चलो करते हैं इसको। क्या है इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट टू दिस एंड दिस? सो इसका कॉमन टेंजेंट क्या आता है? इट्स y इक्वल टू mx प्लस a अपॉन m, सो प्लस 4 अपॉन m। और इसका कॉमन टेंजेंट क्या होता है? जस्ट y इक्वल टू mx plus minus square root of a square m square. So a square is just 10 m square and then plus 6, right? So it's clear, just 16 upon m square, that should be equal to 10 m square plus 6. So 8 upon m square is equal to 5 m square plus 3. Let's say m square is say t नहीं p use करते हैं, so 8 is equal to 5p square plus 3p. So 5p square plus not plus minus 5p plus 8p minus 8 equal to 0. That means p minus 1 into 5p plus 8 is equal to 0. Well, of course p m square था, तो फिर ये तो positive हो गया by default. Then m square equal to 1, so m has to be plus minus 1. फिर उसको इस चीज में put कर दो, right, and you get our two values. So y is अगर m 1 है, then it's just x plus 4. अगर -1 है, then y equal to -x -4. So basically x plus minus y plus 4 equal to 0. So this would be x plus y. What? Seriously? No, not x plus y equal to 4. यहाँ पे sign change होगी ना. So you want x plus 4 plus y equal to 0? Yes, and x minus y plus 4. So B and C. 56. Wait, what? X minus y plus 4 equal to 0, right? So -1 and sure. उसमें गलत हुआ। 56 का C and D करेक्ट होना चाहिए। x plus y plus 4 equal to 0, या वो तो आया अपना। और x minus y equal to +4, हाउ? क्या गलत हो गया? नहीं यार, लग तो नहीं रहा है। लोग यहाँ पे क्लियरली राइट, x minus 4 जगह, राइट? So basically ये क्या है? It's just y equal to x minus 4, but m is equal to 1 in this case. So y equal to mx plus a upon m, that just means it should be x plus 4, not x minus 4. So d तो इनफैक्ट इनकरेक्ट है। मैंने d कैसे दिया? I don't know. और इन्होंने भी d दिया है। मैं अभी कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? Whatever, but according to me ये चीज होनी चाहिए, मतलब कि x plus y equal to -4 and x minus y equal to -4. This doesn't make any sense. How can this be correct? It's clearly y equal to mx plus, but a is 4, so 4 upon m, right? And then when m is 1, this should be y equal to x plus 4. Yeah. और ये कुछ और ही है. So this is wrong. It's just wrong.
Not correct. Okay, 56 is wrong. 59th. मैंने मैंने भी तब किया और ये करेक्ट ऑप्शन से भी क्या गलत हो रहा है इसमें? Whatever. 59th मेरा आंसर ए बी है, उनका आंसर ए बी सी है. Okay, if the tangents to this thing at P and R meet in Q and S is the focus, then the following is correct. Oh yeah, that question. So इसमें बहुत सारे properties है use किए हुए. So P or R meet in Q and S is the focus. So let's just do this thing. P, say P is 81 square comma 281 and Q is 82 square comma 282. Right, and Q is where they meet. So Q will be, oof. So yt equal to x plus 80 square. 80 square minus yt plus x is equal to 0. Right? That means t1, t2 is x upon a wherever they meet. वो जो x रहेगा. And then t1 plus t2 is this correct? Yeah, I think so. So y upon a. Then okay, अपने को फिर इस टाइप से ये r होना चाहिए. It should not be q, it should be r. तो अपने को q मिल गया. Q is just a t1 t2 and a into t1 plus t2. Symmetric. Nice. So that's nice. अच्छा. फिर इसका अपने को क्या करना है वैसे? Abscissa of PQR are in GP, so x coordinates. Yes, these are in fact in GP because look, 81 square, 81 t2, 82 square, so multiplying by t1, t2 upon t1 all of the time. Okay, ordinates of PQR are in AP. Yes, look, इसका AM यहाँ पर है, so yeah, SP, SQS, and SR are in GP. Well, SP is just A into t1 square plus 1. SR is A into t2 square plus 1 similarly, and SQ is SQ थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि इसमें ये पैराबोला पे नहीं बैठ रहा है, राइट? एंड दैट मीन्स कि अपने को प्रॉपर डिस्टेंस फॉर्मूला करना पड़ेगा. सो जस्ट ए तो बाहर निकालो एटलीस्ट. सो ए बाहर निकाल लिया. स्क्वायर रूट ऑफ t1 t2 minus 1 squared, so t1 square t2 squared minus 2 t1 t2 plus 1, and then t1 plus t2 का स्क्वायर प्लस y0 है फोकस के लिए. सो जस्ट t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, उल्टा क्यों लिखा? 2 t1 t2, सो कैंसल. नाइस. t1 स्क्वायर t2 स्क्वायर प्लस ऑफ कोर्स स्क्वायर ऑफ t1 स्क्वायर प्लस 1 into t2 स्क्वायर प्लस 1. सो यार ये तो बहुत ही अच्छा हो गया. ये भी इनफैक्ट जीपी में. यस, SP SQS are also GP. यार ये अच्छी प्रॉपर्टी मुझे याद रखनी चाहिए, बट क्या पता कितनी प्रैक्टिकल हो. 59th we did it right. ABC should be correct. Let's go to 61. Consider the points. अच्छा, मैंने ये 61 का मैंने किया ही नहीं था और गिवन आंसर A and C है. Right. Okay. Tangents to this at P and R. Wait, no, this is not 61. Sorry, this is 61. Consider the points. Oh, this is that question. जो हमें बिल्कुल नहीं समझा था क्या अब इसी से पढ़ते हैं. ग्राफ करो. Okay. O is 0,0. A is 0,1. So somewhere over here. B is 1,1. So over here. Suppose that the points x, 1 and 1, y. So C का y coordinate 1 है, then it's going to be somewhere over here इस लाइन पे, और D का x coordinate 1 है, so ये इस लाइन पे रहेगा. Okay, are on a line passing through origin. So एक लाइन जो कि origin से पास हो रही है such that 0 is less than x is less than. Okay, तो C यहाँ पे कहीं तो भी है. Then जो लाइन रहेगी जो कि origin से पास हो रही है और C से भी पास हो रही है, उस पे D भी होगा ना, first. Then D should be somewhere over here. Okay. Right. मुझे समझा कि हमें तब क्यों नहीं समझा था, क्योंकि इन लोगों ने इस टाइप से लिखा. यहाँ पे जो D है ना, इनफैक्ट वो D नहीं है, वो वहाँ पे ट्राइंगल सिंबल होना चाहिए, मतलब पे डेल्टा होना चाहिए, बट आई थिंक उन लोगों के इसमें डेल्टा था नहीं, तो
उन्होंने डी यूज किया? सीरियसली? तुम सिर्फ ट्राइंगल से लिख सकते थे यार, ये क्या है? कितना? ठीक है, तो ट्राइंगल ओ ए सी एंड ट्राइंगल बी सी डी, इनके एरियाज का सम is S. So the following is correct, but not that complicated, I think. Right. So following is are correct. Sure. So well, this is X, and this thing is 1 minus X, or which is Y है. And ये 1 है, then of course X upon 1 is equal to Y upon 1 minus X, right? और जो yeah, well, that's right. So Y is just X into 1 minus X. Hey, this is very weird actually. Because this is true. This is true. Y is X into 1 minus X, right? No, sorry, no. This is wrong. This is wrong. छोटी side upon बड़ी side, x upon 1 is equal to, okay, छोटी side upon बड़ी side, 1 minus x upon y. Okay, y times, so y is equal to 1 minus x upon x, right? Or you can say like 1 minus x is x times y. That's better, I think. Anyway, the thing is कि अपने को areas देखने, areas are just half of x plus half of 1 minus x into y, but 1 minus x is this thing, so this is like half of x plus half of xy squared, so half of x into 1 plus y squared. No, not working. Minimum value of s is irrational lying in this, okay, something like that. अपने को एरिया की वैल्यू एक वेरिएबल में ढूंढनी पड़ेगी, सो क्योंकि अपन ऑलरेडी राइट, वी कैन डेफिनेटली राइट x in terms of y as well, so this will be x times 1 plus y is equal to 1, so x is just 1 upon 1 plus y, there we go, put that in there, half of 1 plus y squared. Yeah, okay, y is kind of variable, अपने को x के बाउंड्स वगैरह पता है, so we'll represent it in x instead of this thing. So we'll say, okay, y is just 1 upon x, sorry, 1 minus x upon x, and put that in there. क्या कर रहा था मैं? हाँ, तो ये जो चीज़ थी, instead of writing like that, like this will be half x plus half of 1 minus x, and then y is just 1 minus x upon x. So half of x squared plus 1 minus x squared, which is 1 minus 2x plus x squared upon x. Yeah, half of 2x squared minus 2x plus 1 upon x. Looks weird, right? Yeah, ये तो अजीब हो गया. And we want the minimum value of y. Okay, not that hard actually, because it's just half of 2x plus 1 upon x minus 2, something like that. And sure, so we know कि ये जो चीज रहेगी, that's just bigger than or equal to 2 square root of 2, and this becomes equal when 2x is equal to 1 upon x. In other words, x square is 1 upon 2, or because x positive है, x is equal to 1 upon square root 2, which certainly can happen. So अपने को minimum value मिल गई. Minimum value is just half of ये चीज minus 2, so it's just square root 2 minus 1. There we go. So yeah, that was nice. So the minimum value is square root 2 minus 1, and this lies in 1 upon 3 to 1 upon 2. Oh, so this thing can be written as 1 upon square root 2 plus 1, right? So square root 2 is less than square root 4, right? And that means ये जो चीज रहेगी, that's just bigger than 1 upon 3. Similarly, square root 2 is bigger than square root 1, तो फिर वो 1 upon 2 से छोटा है. And yeah, in that case A is correct. 61st में हम लोगों ने A दिया है क्या? हाँ, और लोगों ने C भी दिया. The value of x for which minimum value of s is, okay, well, 1. Yeah, so x was just 1 upon square root 2, right? So 1 upon square root 2 is in this thing. Wait, what? Sorry, C. Huh. So 1 upon square root 2 is in 2 upon 3 comma 1, huh? But it's certainly less than 1. Is this bigger than 2 upon square root 3? So you are saying that 1 upon square root 2 is bigger than 2 upon square root 3? It is, because it's just 2 upon 4, and okay, still do it. 3 is bigger than 2 square root 2. Obviously, 9 bigger than 8. So this works. Wait, just let
सो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा बिकॉज कम ऑन यार, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा बिकॉज काफी सारे इसमें मेरी गलत हुए, तो ये चलते जाने वाला है बस। ओके नेक्स्ट, अपना 61 हो गया। लेट्स गो टू 64। 64 मैंने डी किया, उन लोगों ने ए एंड बी दिया है। Okay, so Fn is summation from n equal to 1 to n of tan of theta upon 2 power n sec of theta upon 2 power n plus 1। तो मैंने दिया था d और उन लोगों ने दिया है a and b। ये तो मुझे याद भी नहीं है अपन ने कैसे किया था, इसको पूरा वापस करना पड़ेगा। वंस अगेन ये बहुत ही गंदा सा दिया इन लोगों ने, n equal to 1 till n, come on, what is this? It's the worst। अगर r equal to 1 से n होता तो फिर in that case n would be kind of a constant, right? So this would just be tan of, yeah, ये सारी चीज and that times n। मे बी उन लोगों ने, ओके तो इसमें एम्बिग्यूटी है, बट स्टिल आई विल थिंक कि ये हमें टेलीस्कोप करना है एंड दैट मींस कि n यहाँ पे वेरी हो रहा है। ओके, सो व्हाट वी वांट टू डू इज टेलीस्कोप दिस समहाउ। tan of theta upon 2 power n and then this thing is, so yeah, theta upon 2 power n को अल्फा बोल दो, then this is basically what tan of theta sec 2 theta, right? The best I can think is कि अपन इसको convert कर सकते हैं tan theta में, so this would be t and then cosine of 2 theta का reciprocal, so just 1 plus t square upon 1 minus t square, right? And then we want to split this somehow। But thing is कि अपने को 2 theta इसमें somehow use करना पड़ेगा and okay 2 theta come on यार, think about it। So t upon minus t square, यहाँ से अपने को 2 theta वगैरह मिल रहा है, this t cube upon minus t square। You know what I'm thinking? ये t square बहुत problematic है, right? तो इसको कैंसिल करने का ट्राई करते हैं। So this can be written as 2 yeah 2 minus 1 plus t square, right? This will actually work out। तो ब्रैकेट तो हटा ही दो, अभी के लिए वो काम नहीं कर रहे हैं। So just 2.1 minus t square और यहाँ पर जगह -1 वर्क्स यार, it's just 2t upon 1 minus t square minus, hey, पिछले बार से बहुत जल्दी हो गया। मुझे याद आ रहा है कि पिछले बार अपन ने इस पे पता नहीं कितने तो भी मिनट्स स्पेंड किए थे। ये तो बहुत ही सिंपल था इनफैक्ट। सब को सिर्फ इसमें से टी स्क्वायर हटाना था बिकॉज ऑफ कोर्स tan 2 थीटा के फॉर्मूले में ऊपर लीनियर टर्म्स आती है, अगर मुझे t क्यूब मिल जाता तो वो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहता, राइट? सो वी हैड टू रिमूव दिस एनी कॉस्ट। तो हाँ, इट टर्न्स आउट कि ये इट्स जस्ट tan of 2 alpha minus tan of alpha which is like tan of अच्छी प्रॉपर्टी में याद रखता हूँ, थीटा अपॉन 2 पावर n minus 1 minus tan of theta upon 2 power n। I don't know मुझे पिछली बार क्या मिला था, but this is the thing that should be okay। और अब this is correct। हो सकता है मैंने कोई वेरी मिस्टेक की, नहीं यार, कितने बार भी देखने में ये करेक्ट ही लग रहा है इनफैक्ट। it is correct in fact, this is just 3 times of that, so it has to be। So each of them can be written like this, huh? Let's see कि इनमें से कोई तो भी नॉन फाइनाइट वगैरह तो नहीं है। So theta upon, okay, so theta is variable, that's bad। ठीक है, हम हर एक को इनफैक्ट एज अ सीरीज लिखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या स्टेप्स हो रहे हैं और वो सही है कि नहीं। स्टेप्स अगर होए तो सही हो गई, श्योर। तो this thing fn theta is, so summation का start हो रहा है n equal to 1 से, you know it's okay। तो n equal to 1 से start हो रहा है, just tan of theta, just theta basically। इनफैक्ट इस चीज को क्या करते हैं, इसको मैं g of theta, इसको या इसको नहीं, we will call this thing tan of theta upon 2 power n को g of n। So this thing is g of n minus 1, यानी कि g of 0 1 minus 1, right, minus g of 1
plus g of 1 minus g of 0 and so on. Eventually you will get at जब तुम n पुट करोगे इसे g of n minus 1 minus g of n, तो उसे कुछ कैंसिल हो रहा है, g of 2 चाहिए था, cancel cancel cancel, it's a g of 0 minus g of n. And now we can go back, so just tan of, well it's 0, okay, n is 0, so tan of theta, sorry, n is 1, you get the idea, tan of theta upon यहाँ का n अलग है, यहाँ का n अलग होगा, तो ठीक है, 2 power 0 is 1, right? So yeah, and then it's just tan of theta upon 2 power n. This would be the series अगर वो properly सब कुछ हो गया जैसे कि अपन चाहते हैं तो. So first of all, let's calculate this thing for each of these options. So first let's go for 2 pi and okay 3, right? So 2 pi upon 2 power 3, so 2 pi upon 8, pi upon 4 and negative. Yes, it's negative 1, no bother with that. So why is a okay? क्या है 63 है ना? Oh sorry, 63 है ही नहीं, 63 मेरा गलत नहीं हुआ. Oh okay, 63 इसमें है ही नहीं, 64 गलत हुआ था, sorry, 64. So this is f of x minus f dash of x equal to e power negative x f of x का square. Functional equations. In fact, ये functional भी नहीं है, just differential equation है. So e power x का multiply कर दो, just e power x times y minus e power x times y dash और फिर divide करो y square से equal to 1, and this is just e power x upon y minus e power x and y dash upon y square. You can clearly see क्या हो रहा है यहाँ पे, it's just the derivative of e power x upon y, right? So that just means e power x upon y is some kind of constant. So e power x is some constant times y, or you could just go the opposite way. So y is some constant, say k, and that times e power x. Right, and f of 0 is equal to 1 upon 2. Wait, did I do this correctly? Because, well, yeah, e power x and then नीचे हो जाएगा, and yeah. Definitely correct. So it's just that's how it should be. Y is some constant and some power x. So f of 0 is 1 upon 2, right? So y of 0. K, just k is 1 upon 2. So y is 1 upon 2 e power x. And x is between negative 2 and infinity. Seriously thinking मैंने उसको यहाँ पे गलत कर दिया होगा. बट लग तो नहीं रहा कि मैं ऐसे गलत कर सकता हूँ इन एनी सर्कमस्टांस. ओह हाँ, मैंने गलत किया. लुक, ये 1 है यहाँ पे, इट्स नॉट 0, सो उसका इंटीग्रेशन नॉट अ कांस्टेंट, इट्स जस्ट समथिंग लाइक x. कि अगर मुझे याद आ रहा था कि मैंने पिछली बार भी यही सेम चीज की थी. दैट इज सिली मिस्टेक्स. सो y इज x power negative 1 times e power x. Also plus constant actually. So e power x upon x plus some kind of constant. अब अपन use करते हैं that f of 0 is 1 upon 2. So that means this constant must be 2 because only then will it actually work. Or okay, x is bigger than negative 2. That means this is actually positive and it's less than infinity or whatever. So ये चीज हमेशा positive है. Okay, at least that's something we know. So d क्या f is a one function. क्या ये correct है? मैं इसको ग्राफ करना चाहता हूँ. इनफैक्ट सबसे पहले इसका डेरिवेटिव देखो. So y dash is e power x upon x plus 2 और फिर negative e power x upon x plus 2 का square, which is, let's see, x plus 2 squared e power x and then it's x plus 2 minus 1, so x plus 1, right? Wait, what? Yeah, x plus 2 minus x plus 1, right? But the thing is, a negative 2 से start होगा, so we'll start from negative 2. So इसको ग्राफ करते starts off at negative 2. Negative 2 पे वैल्यू क्या है y की?
नेगेटिव 2 पे तो ओके नॉट डिफाइंड बिकॉज अच्छा नेगेटिव यहाँ पे क्या पॉजिटिव असिम्प्टोल पे जा रहा है ये समथिंग लाइक दैट। और -1 पे क्या वैल्यू है? -1 पे दिस इज जस्ट e पावर -1/1 और -1 पे डेरिवेटिव 0 है, प्रोबेबली मिनिमम वैल्यू। तो यहाँ पे 1/e मिनिमम वैल्यू अप्रोच करेगा, राइट, इसका भी इंक्रीज होगा। और यहाँ पे सिर्फ एक ही एक्स टीम हमारा है, ओके कूल, एंड देन यू जस्ट कीप ऑन गोइंग। This is very weird, but it's clearly just this thing. So, okay, whatever. ठीक है. So it's definitely not. और उसके बाद में just increase हो रहा है, just increase हो रहा है continuously. Yeah. So it's definitely not 1/1 because you can clearly see कि यहाँ पे many one function है. f of x equal to x has two solutions. Well, this equal to x, that would be like this. Uh, it has two solutions. No, wait. Look, यहाँ पे तो पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव वर्जन में, तो ये तो पूरा आइडिया गया। दूसरा आइडिया है कि यहाँ पे कहीं तो ये ओके, सो दिस इज जस्ट इंक्रीजिंग, राइट? द स्लोप इज इन फैक्ट आल्सो oh right, slope is always positive, but is this increasing or decreasing? So it's अपन ने कहा था कि e पावर x plus 2, राइट? आई एम अज्यूमिंग कि ये इंक्रीजिंग रहेगा। Yeah, it has to be. अच्छा, एक तो तुम गैस ही कर सकते हो डायरेक्टली कि ये इक्वल टू एक्स कब होता है, एक कोई सोल्यूशन गैस कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू 0, नो, ओके, वी डोंट नो, अपन गैस नहीं कर सकते इसमें। सो आवर क्वेश्चन इज व्हेन इज e पावर x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x, राइट? इज अनदर क्वेश्चन। ये इतना मुश्किल नहीं हो सकता। I mean, look at this. E power x is, yeah, sure. So e power x is something like this, huh? And x square plus 2x is x plus 1 square minus 1. So वो इस टाइप से रहेगा। Yeah. Well, clearly negative values में okay, maybe negative values as well अपन को एक सोल्यूशन मिल सकता है। बट पिछले बार जब मैंने ग्राफ किया तो उसको लग रहा था कि नेगेटिव वैल्यूज में एक ही सोल्यूशन नहीं रहेगा। या अनलेस तुम असिम्पल की दूसरे साइड पे जा रहे हो, तो वी जस्ट नो ये इनफैक्ट इन दैट केस ये सोल्यूशन जो रहेगा वो दूसरे साइड पर आना चाहिए। या राइट, ये सोल्यूशन अपन गिनेगे नहीं, और जो दूसरा सोल्यूशन है जो कि अपन गिनेगे दैट इज दिस। एक्चुअली नहीं, सिर्फ एक नहीं, यहाँ पे 3 सोल्यूशन आएंगे बिकॉज अपने को पता है कि e पावर x इन द एंड बहुत जल्दी इंक्रीज होता है अगर अपन उसको कंपेयर करें क्वाड्रेटिक से। दैट मीन्स यहाँ पे एक इंटरसेक्शन है, बट इन द एंड एक और इंटरसेक्शन रहेगा जो एकदम ऊपर जाएगा। एंड या दैट मीन्स कि इनफैक्ट 2 सोल्यूशन है इसके, इस इक्वेशन के, और ये जो सोल्यूशन है वो नहीं गिन पाएगा। So B is correct. 64 तो क्या है? 64 तो A and B should be correct. Least value of, okay, so A तो है ही, we just know it, and B is also correct, and greatest value of F is E. Well, greatest value is not anything because greatest value is actually infinity. F of X is a 1 1, no, so D is wrong, C is wrong, A and B are correct. 64 done. Let's go to 66. So 66 मैंने AC किया, हम लोगों ने ABC दिया है, right? Yeah. So f real to real satisfies this equation. Not identically 0 everywhere. F of x can not be 1 2 monotonic 1. कोई एग्जाम्पल देके देख सकते हैं, फिर डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। ओ यार, ये चीज़ हमने पिछले जब सॉल्व की थी, बहुत ही बड़ा
या इट्स टुक अ लॉट ऑफ टाइम, तो क्या मुझे आपसे सॉल्व करना चाहिए? हम्म, अगर अपन ये प्रूव कर पाए कि ये, जो कि अपन लास्ट टाइम किया था कि ये इवन है इनफैक्ट, राइट? सो व्हाट डिड वी डू? पहले तो अपन ये प्रूव किया था कि एफ ऑफ जीरो जीरो है और एफ ऑफ जीरो भी जीरो है, राइट? आई मीन नो तो ऑब्वियस, अगर एफ ऑफ जीरो जीरो है तो फिर वो होगा ही। या मुझे लास्ट से इतना याद आ रहा है। ओके, लेट्स से एक्स इक्वल टू वाई पुट कर देते हैं, दिस विच इज एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और अपन है वाई को जीरो सेट, सॉरी, एक्स इक्वल टू वाई सेट, जस्ट नेगेटिव टू एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स plus f of x square, right? We can definitely do this thing. Yeah, cool. Or just for fun, let's say x equal to 0 as well. So this would just be f of 0 is equal to f squared of 0. You know, f of 0. So कैसे इसको लिखो मैं easily? ff 0, yeah, ff 0. और ये तो गया plus f of 0. So at least we know that f of 0 is just 0. Then let's say that let's put x equal to 0 over here. No, 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 no. You know what? No, let's just do this thing. Let's put x equal to 0. Who knows? We might get something nice. So, अगर हम अपन x equal to 0 put करते हैं, then that just means f of, well, 0 minus f of x, all that stuff. So, f of mod of f of y. That is equal to, this is very weird. This is equal to f of 0 वो तो गया, and ये negative 2x पर भी गया, and it's just plus f of y squared, just like f of y squared too. Yeah. Let's also put okay, तो अपन f of y directly 0 नहीं put सकते. Oh wait, क्या हुआ ये? मैंने x equal to 0 put किया तो f of 0 कैसे हो गया? This doesn't make sense actually. Sorry. Don't do that. Uh, अगर मैं x equal to 0 सेट कर रहा हूँ, then this should be f of mod of f of y minus f of 0. That would be equal to, I have a better option is से x और y को रिप्लेस कर डालो, राइट? देन जो लेफ्ट हैंड साइड है वो स्टिल सेम रहेगी, पर राइट हैंड साइड कंप्लीटली चेंज हो जाएगी. सो दिस इज f of x, राइट? Negative 2x square f of y plus f of y squared is equal to f of y negative 2y squared f of x plus f of x squared, and this is true for yeah, it's like all x y. तो हम क्या कर सकते हैं? We can just say okay, let's put one of them to be 0. So let's say x is 0, then this would be, yeah, f of 0 तो 0 हो जाएगा. This is 0, it will be f of y squared equal to f of 0 and all that. No, not good. f of 0. How do you know कि mod of f of 0 is not negative or something? Sorry, it's not negative f of 0 or something. You don't actually, can't. It's just the worst. Let's say अपन ये नहीं करते. First of all, what we'll do is कि x equal to 0, y equal to 3 अपन इसे put करिए, and that just gives us f of y minus f of 0 का mod, that is equal to, so x0 put किया ना, so this is gone, this is also gone, which is f of y squared, right? We will also put y equal to 0 and x equal to 3 over here, so f of mod of f of x minus f of 0, and this will be f of x minus 2x squared f of y plus f of y squared, wait. Sorry. Okay. नहीं, यहाँ पे y नहीं, यहाँ पे 0 चाहिए, मतलब अपन ने y को 0 सेट किया था.
दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, दिस इज आल्सो ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वाई। तो मैं यहाँ पे वाई यूज से अच्छा एक्स यूज करता है एज अ वैल्यू, एंड दैट मीन्स कि यार ये तो देखो बहुत ही अच्छा है। सो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ऑल दिस। या हाँ, नॉट बैड, नॉट बैड एट ऑल। ओके, दैट्स कूल। पर क्या करूँ मैं इसका, इसका मैं क्या करूँ? दिस इज लीडिंग नोवेयर। वेट अ सेकंड, यहाँ पे अपन ने एक्स यूज किया और वहाँ पे तो एक्स जीरो सेट किया था। हाँ, दिस हैपेंड। एंड एक्स इक्वल टू वाई सेट करने पे क्या होता है? वी जस्ट गेट एफ ऑफ जीरो equal to, once again same thing, x equal to y square p, just get f of x minus 2x square f of x plus f of y square, right? Oh, yeah, sorry, it's f of y actually. Oh, y और x same है ना, then it's just this thing. Then that means कि अपन वो चीज यहाँ पे सेट कर सकते हैं, right? Oh, so this would be this thing. Oh, that just means कि, hey, wait, what? How did this happen? All we did was just, सीरियसली हाउ डिड दिस हैपन? हमने क्या क्या किया, अपन ने सिर्फ x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 0 पुट किया, फिर y इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 0 पुट किया, और x इक्वल टू y पुट किया। ये करने से अपने को ये तीन इक्वेशंस मिले थे, ये वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, वो दोनों यूज कर अपन ने ये चीज लिखी, और जो तीसरा इक्वेशन था वो ये था। बट इससे अपने को एफ ऑफ एक्स मिल रहा है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। ओह, दिस इज फन। तो इसको ऐसे बस चिपका दो, राइट? सो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, right, we are very close. It's just f of 0 plus 2x square f of x for any value of x plus f of x square, yeah, minus 2x square f of 0 plus f of 0, yes, nice, ये cancel हो जाएगा। And sorry, what, no, minus, यहाँ पे ऐसा है, right? Yeah, this looks nice. This looks seriously very nice. Think about it. Yeah, यहाँ पे we just put that f of 0 plus 2x square f of x minus f of x. Wait, what? Let's do this once again actually. Yeah, because हो सकता है मैंने कोई mistake कर दियो. Is equal. So f of x is just f of 0. Oh no, this is not working actually. Negative x पर आ रहा है. What we want. This is not work out. बस मुझे लगा था ये काम कर जाएगा, बट ये काम नहीं किया. Negative f of x square. Ah. Okay, negative 2x square f of 0 plus f of 0. That's how it is. So that just means वहाँ पे 2 तो कैंसिल होने वाले हैं, f of x square is equal to f of 0, और यहाँ पे सिर्फ एक 2 है जो कैंसिल नहीं हो रहा है, x square f of x minus x square f of 0. So this is true for all values of x. So this is also true for x equal to 0, right? X equal to 0 would just set f of 0 equal to 1. That is just boring. It's just boring. I mean, from this it's just obvious f of 0 is equal to 0. We need something more. This was so close, but काम नहीं किया ये. This is true for any value of x. This is getting very, यार ये तो ऐसे अनएंडिंग साइकिल, अपन ये काम ही नहीं करेगा इस टाइप से. हमने ना कुछ प्रूव किया कि ये इवन है, ऑड है, क्या है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज है. कोई और इसका तरीका है सॉल्व करने का? पार्शियल डेरिवेटिव, सीरियसली यहाँ पे मॉड रहेगा तो वो तुम कैसे पार्शियल, अनलेस तुम ये प्रूव कर दो कि ये इवन है या फिर ऐसा कुछ है, देन यू कैन जस्ट रिमूव दिस मॉड
बट वो भी कैसे प्रूव कर कि ये इवन है? हाँ, यू नो व्हाट, आई थिंक ये जो पूरा क्वेश्चन है इसका खुद का एक वीडियो डिजर्व करता है ये, बस ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, राइट? ओके, सो 66 वी डोंट नो, सैडनिंग बट या वी डोंट नो। 66 मुझे और उस पर कुछ करना पड़ेगा। 77, 77 है, मैंने नहीं किया। और वेट, 66 मैंने आंसर दिया था इनफैक्ट, या 66 मैंने आंसर पहले किया था एंड आई सेड दैट इट्स 1 1 एंड इट्स मोनोटोनिक, बट हाउ कैन दिस बी इफ इट्स, oh it cannot be 1 1 and it cannot be monotonic, और लोगों ने A B C किया, so it can also not be on 2। मुझे याद आ रहा है कि मैंने प्रूव किया था कि ये even है, but we need some method to do it directly यार। How to prove that this is actually equal? X equal to Z, अब 0 अपन ने सेट करके देखा है, just tells us that f of mod of f of y minus f of 0 that is equal to f of y square, that's all it tells us। तो अगर मैं y को x से रिप्लेस कर दूं, it's still okay। Then the next thing that we can do is just put y equal to 0 and x is equal to 3, so this would just be f of x minus, yeah, वो सारी चीज, so we already know that that thing is just f of x squared, right? So f of x squared is equal to, so अपन ने क्या किया, अपन ने y equal to 0 put किया in this, so this would just be f of x minus 2x square f of 0 plus f of 0, okay cool, so we can always write it like that, nice। And then x equal to 0 अपन सेट कर सकते हैं, that would just tell us here f of 0 is 0, right? Hey, वो तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं ना, जब अपन ने x equal to 0 सेट किया, then this would just go away anyway, yeah sure। so अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, f of 0 is 0। how do you prove that f of 0 is also 0? that's the problem, वो कैसे प्रूव करूँगा? Well, if this thing is true for all real values of x, you can just replace this over here, right? So basically हो जाएगा f of mod of f of x minus f of y, जो नया अपना इक्वेशन आएगा, which is no much like वो ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा कि ये पुराना इक्वेशन ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, we don't know, but this is equal to, so f of x के जगह पे अपन ये चीज़ पुट कर देंगे, just f of x squared minus 2x squared f of 0 minus f of 0 minus 2x squared f of y plus f of y squared, right? Perfect। अब let's say x equal to y set किया, then this would just be f of 0 is equal to f of x squared plus f of y squared, that's just 2 times of f of x squared, right? And this would just be negative 2x squared, right? So negative 2x squared and all that stuff, so this 2 x squared f of 0 negative f of 0 negative 2x square f of x, and that's the problem यार, यहाँ पे इन लोगों ने यानी कि वो भी काम नहीं करता। Okay, then that's the same thing as saying कि f of x square is equal to f of 0 plus x square f of x plus x square f of 0, right? Hey, you know what? Because now we know कि f of x actually x square behaves like this, ये चीज और ये चीज के जगह पे डायरेक्टली अपन ये चीज लिख सकते हैं, right? Hey, that's nice actually। So that would just mean f of mod of f of x minus f of y is equal to, so f of x square को अपन ने इस टाइप से लिखा है, f of 0 तो कैंसिल हो जाएगा anyway, then yeah, because वो कैंसिल होने वाला है, then it's just x square f of 0, hey वो भी कैंसिल हो गया,
Oh, wait, f of x square minus x 2x square, right? 2x square. वो cancel नहीं होगा. That's a different story. Then it's negative x square f of 0. Okay. F of 0 cancel हो जाएगा. It's just x square f of x, right? Minus 2x square f of y. And now we will put f of y square in this. Yeah. So that will be f of 0 plus y squared f of y plus y squared f of 0. But the thing is, यहाँ पे देखो, यहाँ पे, oh, it's 0 to x squared, not, but how can that be? Oh, यहाँ से आ रहा है. Yeah, then it's correct. In fact, it's negative 2x squared. So ये डायरेक्टली अपन कैंसिल नहीं कर सकते ना. Okay, cool. So at least ये अपने को नया इक्वेशन मिल गया है. You can of course just put x equal to 0, y equal to 0. That will just set all of this gone. Hey, you know what? Do this. Set x equal to 0, y equal to 0. Look at this. ये गया, ये गया, ये गया, ये गया. Oh, just f of 0 बच गया. So f of 0 is really just f of 0, and that means f of 0 is also 0. Look at that, huh? How nice is that? तो ये तो पूरा गया, in fact. F of 0 is also 0. Then all of this is gone. ये भी गया. So we can write f of, you put this cheese like this, actually. Right. This is awesome. So, yeah. No problem. How हमें सिर्फ ये prove करना है that it is even. And how do you prove that? Look at this thing. Oh yeah, f of 0 is gone. F of x square is just x square f of x, right? So f of negative x square, that's just still f of x square, and that's equal to still negative x square, and f of negative x. Yeah, it's even. It is even, right? So it's an even function. That means we can just write it like this. So ये जो property थी, ये property से we can guarantee that it's even. And now we have everything we could wish to get. Now I'm thinking it's a partial derivative ले लेते and we'll be done basically. What do you say? So we just use this thing actually. So ये अपने का एक property पता है. We also have the property that x square is basically just x square f of x. Right? और भी अपने को properties पता है, right? ये गए, ये सारे गए. So, ये तो सेम चीज हो गई, ये सेम प्रॉपर्टी आ गई, काम की नहीं है फिर. और ये एक प्रॉपर्टी है f of, ये प्रॉपर्टी इतनी यूजफुल नहीं दिख रही मुझे, कैंसिल कर दो. Oh yeah, this property is kind of useful, I think. So f of x is t to f of 0 है, तो गए. Right, this looks nice. So basically f of x square is f of x. F of x square is also x square f of x. Yeah. So that means जो अपना original equation था, we can write it like this. This is fun and all, but you know what? Let's say x equal to z, sorry, x equal to y. Then this would be, नहीं यार, फिर तो cancel हो जाएगा. That's not fun. Let's set y equal to 0. Then this would be gone. This would be not okay. This would also be gone. And then it's like it's okay. तो जो property थी उसी पे आ गए. That's not actually useful. I think ये दोनों properties enough है सब कुछ करने के लिए. I think so. X square, you say? How would you intend to use x square? Unless अपने को ये एक
एज अ प्रॉपर फंक्शन मिल जाए मैं अप्रूव नहीं वाला हूँ क्योंकि मैंने चैलेंज ले लिया है। डेरिवेटिव, इसका अपन एक डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, आई थिंक सो। या श्योर। What if it's some kind of constant? Nah, then this wouldn't make any sense, right? This won't make any sense. It can't be constant. It cannot be zero because, right, something else. How does this happen? This is for all values. Okay, so original जो equation था f of x minus f of y वगैरह वो सारी जो चीज थी, let's use this. एक minute, you know what? No, 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 not yet. हमने मे बी एक चीज नहीं है जो अपन ने ट्राई की है, दैट्स लाइक पुटिंग y एज नेगेटिव x. अगर अपन वो करते हैं दिस वुड जस्ट बी 2f of x and then f of 2f of x. do we know do we know what that is? Kind of we don't actually. No यार, अपने पास में ऐसा कोई, we don't know what's f of 2f of x. So that doesn't give us anything nice. No. बेस्ट रहेगा कि मैं इसका एक डेरिवेटिव ले लूँ, पार्शियल डेरिवेटिव, जैसे लेट्स से पहले x लेते, देन दिस वुड बी f डैश ऑफ f of x minus f of y, और अंदर का डेरिवेटिव जस्ट f डैश ऑफ x is equal to f dash of f of x and then f dash of x, right, minus okay ये चीज 4x f of y, वो तो गया, is just constant, right? So now I'm thinking, let's set x equal to y, this would be gone actually, right? f dash of f of x, we don't actually know वो क्या होगा, so this didn't turn out very useful. y से लेते हैं, y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लेते हैं, then that would be f dash of, so the same kind of thing except कि hey, wait a second, we can write this in the opposite format as well, that this would mean कि ये तो 0 हो जाएगा. Oh, you could have also written this f of y minus f of x, right? तो यहाँ पे इनफैक्ट क्या हुआ होता कि यहाँ पे निगेटिव भी आ सकता था, बट द ओनली वे कि ऐसा हो सकता है क्योंकि ये जो चीज है, या इट्स इक्वल टू दैट एंड इट्स आल्सो राइट, it has to be zero. In fact, this has to be zero no matter whatever x and y value we have. How can that be? F dash of x equal to 0 maybe, but that would mean x is a constant. F dash of f of x minus f of y is equal to 0 for all values of x and y. I don't know, doesn't look very obvious. अच्छा, y से मैं डेरिवेटिव लूँ, then is just f of x minus f of y, फर्क नहीं पड़ता ना, so just say f dash of y, because it seems कि ये f dash of, या ये भी in fact even function दिख रहा है, I think, and this is equal to, ये तो गया, तो पूरा गया, ये x स्क्वायर पे कॉमन है, basically just negative 2x square f dash of y and then plus it's okay 2y f dash of y squared, right? That's what this is. Now once again we can just say okay ये तो, we can get rid of that thing, or we can just say okay maybe put x, no, not yet, but you could do it, right? Let's just say x is equal to y, then this would be like 0 is equal to 2x f dash of x plus 2y, sorry 2x f dash of x squared, but sorry it should be 2x squared. That means f dash of x squared is equal to x times of f dash of x. That's actually obvious. यहाँ पे देखो ना, इसका डेरिवेटिव देखें, no wait, इसका डेरिवेटिव देखें कुछ और मिल जाएगा इनफैक्ट. Is this correct?
इसका अगर मैं डेरिवेटिव लूँ इस आइडेंटिटी का, then that just means 2x f dash of x squared is equal to, yeah, 2x f of x plus x squared f dash of x. Yeah, so either x is 0, which not true because general value के लिए ले रहे हैं, then that means 2 times of f dash of x squared is equal to 2 times of f of x plus x f dash of x. But we already know that f dash of x squared, that thing is actually x f dash of x. So this thing is just 2x f dash of x. That's equal to 2 times of f of x plus, oh, finally a differential equation which we can solve. Done. Done. So basically it's just natural log of f of x is 2 natural log of x plus some kind of constant. That means ki f of x is just x squared times some kind of constant, right? So kx squared. That's what it is. Finally. ये तो बहुत लंबा था यार, तो कुछ हो गया, इतना टाइम कैसे लगता है इस चीज को। अब मैंने सब कुछ ट्राई कर और इन दी एंड ऐसा कुछ भी सड़ा सा मिल रहा है। सो kx square, that's the only thing that actually works, ये सब कुछ करने के बाद तू समझ रहा है। So it's not 1 1 of course, it's also not on 2 because x negative infinity to infinity जा रहा है, और ये तो सिर्फ yeah रियल टू रियल पार्ट पूरा ही कवर शून्य कर रहा था, नॉट ऑन टू एंड नॉट ऑन। बट लास्ट टाइम अपने को ये एक्चुअली इसका क्लोज फॉर्म नहीं मिला था, इस टाइम अपने को मिला। I'm going to put this in a video. Okay, so this was 66th. Let's also go to, इसका एक ऐसा प्रॉपर मेथड चाहिए ये टाइप के क्वेश्चंस करने का, फंक्शनल इक्वेशंस, गंदे वाले फंक्शनल इक्वेशन। ओके 77, कुछ उल्टा जा रहा हूँ, राइट 77 इज, तो मैंने किया था इनफैक्ट, राइट, तो मैंने ये किया था, जस्ट मैंने फर्स्ट ट्राई में नहीं किया इसलिए मैंने लिख दिया होगा। सो सी एंड डी कैसे करते हैं, तो मैं सिर्फ आइडिया देता हूँ कि जिससे सी वेक्टर इज ए वेक्टर, लाइक ओके कैपिटल ए टाइम्स ए वेक्टर प्लस कैपिटल बी टाइम्स बी वेक्टर प्लस आई डोंट नो कैपिटल सी टाइम्स ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट? Just say that and from there substitute in this thing and you will get a b c and we will be done, right? क्योंकि सी के बारे में उन लोगों ने कुछ खास बताया नहीं है, सी इज जस्ट अ वेक्टर, सो वी कैन राइट दिस लाइक दिस ऑफ कोर्स, और फिर इसको इसमें पुट करो, यू विल गेट योर आंसर। ये इक्वेशन है, सो या सो नॉट गोइंग टू डू दिस, राइट? सो 77 इज डूएबल। 79 भी मैंने नहीं किया था, ए और बी इसके आंसर से। ओके, so the following is a tangent to this thing drawn from -3 upon 2 comma 0. I think मैंने किया था, ठीक है वापस एक बार कर लेते हैं। So y, I should say like plus minus y equal to 1 plus 2 e power x, right? And it's drawn from -3 upon 2 comma 0 or whatever. Thing is plus minus m is, so ये same order के साथ में, so plus minus m is 2 e power x naught, जो x naught पॉइंट है जहां पे टेंजेंट हो रहा है, राइट? सो द टेंजेंट, राइट? hey, so it's from negative, अच्छा ठीक है, तो -3, 2 इस पे नहीं बैठता है, राइट? सो now what do we do? It's like y minus y naught, in fact इसको या प्लस माइनस वाई नॉट, ये सारी चीज कर दो। सो वाई माइनस वाई नॉट इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, दैट्स ओवर लाइन, और इसमें बैठ रहा है पॉइंट कौन सा, -3 अपॉन 2 कॉमा 0, दैट मींस -3 अपॉन 2 माइनस वाई नॉट इक्वल टू ओके एम इंटू 0 माइनस एक्स नॉट, इट्स नेगेटिव एम एक्स नॉट, दैट मींस 3 अपॉन 2 प्लस वाई नॉट इक्वल टू एम एक्स नॉट, राइट? So yeah, it's like 3 upon 2 plus, oh, so this is actually going to be like that. So plus minus of y naught kya is just 1 plus 2 e power x naught, and in the same order, okay, plus minus की order same है, 2 e power x naught that times x naught. ये टाइप का इक्वेशन बहुत ही गंदा सा, yeah I know, 3 upon 2
is equal to, so plus minus of 2 e power x naught times x naught minus 2 e power x naught. Yeah, this is just, what is this? Why is this? Okay, whatever. अपने को दो इसमें स्प्लिट करना पड़ेगा इनफैक्ट इसको. Oh come on, seriously. Okay, it's 2x naught. Okay, 2 e power x naught minus 2 e power x naught. Okay, 2. Okay, ठीक है ठीक है. Minus 1. So this thing, right? Divide by e power x naught. So 3 upon 2 e power negative x naught is equal to plus minus of 2x naught minus 2 minus e power x naught. So basically, you know what? ये plus minus यहाँ पे डाल दो. So 2x naught is equal to 2 plus e power negative x, यहाँ पे negative चाहिए, negative x naught plus minus 3 upon 2 e power x naught. Now हमें इतना एक्सपीरियंस है कि हम इसे डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हाँ ये जो चीज़ है ये या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा. आई नो ये डिक्रीज होने वाला है अगर ये चीज़ पॉजिटिव रही. तो अगर ये नेगेटिव रहा देन इट विल बी इंक्रीजिंग थिंग. बट द थिंग इज कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस काफ़ी फास्ट चेंज होते हैं और ये एक सिर्फ एक लीनियर फंक्शन है. सो वी नो इट जस्ट हैज़ at max what? At max 2 roots, right? For example, अगर if positive है then 2x naught equal to 2 plus 5 upon 2 e power negative x naught, right? So e power negative x naught is some quantity like this thing, or this is like e power negative x naught is equal to x naught. Actually means 5 upon 2 e power negative x naught is equal to x naught minus 1. That means it's just 4/5 of this thing. Whatever. Thing is it's linear, so x naught equal to 1 पे ये चीज़ 0 हो रही है and then it's something like that, whatever. The thing is कि वो एक ही पॉइंट पे डिसाइड कर रहा है, right? और अगर ये यहाँ पे नेगेटिव रहा then that's just e power negative x naught is equal to, okay, let's just do this thing, you know. So negative raha, in that case you just have x naught is equal to 1 negative 1 upon 4 e power negative x naught. So e power negative x naught is equal to 4 times of 1 minus x naught, like that. So ये चीज़ हो जाएगी kind of the same thing, you know. x naught equal to 1 पे हो रहा है ये, except कि अब ये decreasing है. So इसमें दो solutions in fact. Wait, what? इसके दो solutions है. This is not nice. Yeah, it's not nice. Oh, come on. But yeah, that is the thing. इसके दो solutions in fact. But how can this be? Anyway. But do we know कि क्या solutions है? Well, एक obvious solution का ढूंढो. X not equal to 0 maybe. Yeah, well, x not equal to 0 just gives us 3 upon 2 equal to plus minus of negative 2 negative 1. No, not working यार. ये तो बड़ा अजीब हो रहा है. क्या मैंने कुछ भी गलत कर दिया इसमें? लग तो वही रहा है. It's negative 3 upon 2 and right. We don't know. X not की क्या वैल्यू है. Then how am I going to figure out कि क्या tangents है? So यहाँ पे दिख रहा है कि slope 1 upon 2 होना चाहिए. Seriously, what is this? Sorry, slope 2 होना चाहिए. Okay, 79 का इन लोगों ने क्या दिया? 79 का इन लोगों ने A and B दिया है. So A और B में plus minus 1 slope है. So yeah, x not equal to 0 should have been a solution, but वो नहीं है यार. अपने को clearly दिख रहा है कि वो नहीं है.
Ah, look at this. Seriously. How can this be, यार? ये solution कैसे हो सकता है आखिर? No, it's just wrong. अच्छा ये किस किस से बैठ रहा है? Well, negative 3/2, which is negative 3, and okay, y to 0 है, वो फर्क नहीं पड़ रहा. So, oh, come on, seriously. All of these just have it on it, right? So, okay, cool. But x नॉट कमा y नॉट मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये ऐसे इस पे आखिर कैसे हो सकते हैं. Why is this not working? It's just 3/2 plus y not equal to x. और ये 3/2 कैसे आएगा आखिर? Because यहाँ पे सब कुछ इंटीजर आ रहा है. This doesn't make any sense. No, it's just wrong. I'm just saying it out. It's wrong. ठीक है, 79 wrong है. Pretty sure. और कोई कैसे कुछ हो सकता है ऐसा यहाँ पे ऐसा? ये देखो ना, इंटीजर्स एवरीथिंग, और फिर अचानक से नेगेटिव 3/2. व्हाट? स्लोप भी प्रॉपर आया था, सब कुछ प्रॉपर दिख रहा है. नो रीजन की मुझे समझा क्या कर दूंगा. मैंने x इक्वल टू नेगेटिव 3/2 डाल से अच्छा मैंने गलती से यहाँ पे क्या डाल दिया, मैंने y इक्वल टू नेगेटिव 3/2 डाल दिया. सो ये पूरा गलत हो गया. ऐसा होना चाहिए था. राइट, इन दैट केस अच्छा फिर तो प्लस माइनस को चले ही जाएगा ना एनीवे. देन दिस इज जस्ट ओके y नॉट प्लस ये सारी प्लस यहाँ पे भी लगा दो. राइट, तो y नॉट की जगह पे डायरेक्टली ये चीज आती है. सो 1 plus 2e power x नॉट is equal to 2e power x naught into 3/2 plus x naught. Now this maybe does make sense. So divide by 2e power x naught, just 1/2e power negative x naught plus 1 is equal to 3/2 plus x naught. That just means 1/2e power x negative x naught is equal to 1/2 plus x naught. Well, ये जो चीज है 1/2 plus x naught, this is just a line like this. And this thing, yeah. So when x is 0, this thing is 1/2. When x is 0, this is still 1/2. तो ये तो एक solution obviously रहेगा और ये हमेशा decreasing है, something like this. Then yeah, x not equal to 0 is the only solution for this thing. So we are done in fact. In that case, we already know क्या क्या होने वाला है. Then x not equal to 0 ये गया. Y not we don't know. Y equal to y not plus mx. So it's plus minus of 1 plus 2 plus. But m is just this thing. Okay, x is 0, so just 2, and it's 2x. That just means 2x plus 3 is equal to plus minus y, or in other words, 2x minus plus or plus minus y plus 3 equal to 0. So yeah, A is correct and B is correct. So 39 is done. Let's go to 84. 84. Consider this function. 8x पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर. ठीक है, तो 84 का क्या है? 84 मैंने b दिया है, उन लोगों ने a b c दिया है. मैंने कहा f of x has 3 points of local. okay, it's not. तो 84 का मैंने b दिया, उन लोगों ने a b c दिया. Not differential at 3 points. Okay, it has 4 solutions. Just do it. Let's just figure out क्या है ये चीज. So what's this? It is cosine inverse of ये सारी गंदी सी चीज, right? That's what f of x is, and it's from -1, 1 to 0, pi. It's about 4, you say, huh? It's like really bad. X square goes from 0 to 1. It's cosine inverse of. अगर मैं in terms of x square बात करूँ तो just 8. इसके तो रूट्स भी निकल सकते हैं, बट irrational रूट्स आएंगे. No way, I'm not going to do this. So 8t square minus 8t plus 1, जहाँ पे t 0 to 1 जा रहा है. Then इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी? 8/2 times of 8, right? That's just 1/2 पे इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, right? And when it's the minimum value, it's just 2 minus 4 plus 1, which
is minus 2 plus 1, which is negative 1. So come on. So ये जो फंक्शन है इसकी नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव 1 वैल्यू आती है एट t equal to 1 upon 2. That means x is equal to 1 upon square root 2 plus minus 1 upon square root 2. So plus minus 1 upon square root 2 is somewhere over here and over here. यहाँ पे 1 1 है. No, sorry, wait, it should be less than 1 because so somewhere over here maybe. Okay. और क्या वैल्यू आ रही थी कोसाइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव 1? दैट वाज पाई. सो मैक्सिमम वैल्यू इन फैक्ट, राइट. सो यहाँ पे पाई और पाई आ जाएगा. x इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है? जिसको साइन इनवर्स ऑफ 1 व्हिच इज 0, राइट. सो इसके बीच में वी डोंट नो. ओके, सो मैंने कहा था कि f of x has 3 points of local extrema in negative 1 to 1. Well, of course, negative 1 is over here and 1 is over here, so actually it does have, yeah. और negative 1 पे क्या है? Negative 1 पे है 8 minus 8 तो गया just 1, so it's once again just 0 right there. So यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 है, kind of like this. This is what the curve looks like, I think. Okay. ये लोग और बोल रहे हैं कि f of x is not differentiable at 3 points. सर डेरिवेटिव निकालो यार. नेगेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये पूरी चीज का स्क्वायर दैट माइनस 1. ये कंटिन्यूअस है क्या हर जगह पे? आई थिंक इट इज बिकॉज इट डेफिनेटली जस्ट लाइज इन दैट रेंज. और ये कंटिन्यूअस है, देन दैट मींस कोसाइन इनवर्स ऑफ दैट थिंग इज आल्सो काइंड ऑफ कंटिन्यूअस बिकॉज या ऐसे ये सडन चेंज नहीं हो रहा ना एकदम. और कोसाइन इनवर्स भी सडन चेंज नहीं होता है उसमें. When it's 1 it's the minimum, when it's negative 1 it's the maximum. It should be correct. So not differentiable. I don't know what you're talking about. मुझे तो काफी डिफरेंशिएबल लग रहा है. सर डेरिवेटिव क्या होगा? 1 माइनस ऑफ ये पूरी चीज का स्क्वायर. सो ओके, व्हेन इज दिस थिंग स्क्वायर्ड इक्वल टू 1? एक पॉसिबिलिटी के 8x पावर 4 minus 8x square plus 1 is equal to positive 1. तो ये गया. That would just mean x square equal to 1 or yeah, or x square equal to 0. So x equal to 0 पे you can say it's not differentiable. Okay, it's continuous but maybe just maybe not differentiable. और x equal to plus minus 1, जो कि मुझे लग रहा है कि हाँ यार यहाँ पे शायद से नॉन डिफरेंशिएबल है. ये से स्टीप टाइप ग्राफ है और यहाँ पे भी है ऐसा बोल रहे. ग्राफ करके ही समझेगा हमें ये इन दी एंड. बट या सो अभी हमारे पास वो यूटिलिटी नहीं है ग्राफ करने की. तो फिर ठीक है. एक ये पॉसिबिलिटी और हो सकता है कि नेगेटिव 1 हो जाए. इन दैट केस ये हो जाएगा +2 x इक्वल टू 0. दैन जस्ट 4x पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. सो 2x square minus 1 is square equal to, it's like x square is just 1 upon 2, so x is, और फिर like ये सब उसका डेरिवेटिव एंड ऑल दैट. लुक, x इक्वल टू 0 पे मे बी जो डेरिवेटिव है इनफैक्ट वो उसकी लिमिट्स है. बट द थिंग इज कि वो डेरिवेटिव एज अ फंक्शन वहां पे डिफाइंड नहीं है. ऐसा हो सकता है, राइट? So the thing is like 8 times 4x cube minus 2x, right, upon something like square root of 1 minus और ये सारी चीज का square. So let's say yeah, plus 2 plus square. Sorry, 1. Come on. So as x tends to 0, this thing tends to 0 as well. But then this thing also tends to 0. So how can you say for sure that it's not? Huh? So let's say 8x power, yeah, all that stuff. 8x power 4 minus 8x square is, I don't know, t. तो ये हो जाएगा 8 into 4x cube minus 2x upon square root of, let's see, it's like 1 minus of 1 plus t का square, right? So 1 minus 1 तो गया, it's just negative 2t and all that stuff. So negative 2t, negative t square. Yes.
फिर आई थिंक अपने को टी उल्टा बोलना चाहिए था, अपने को बोलना चाहिए था कि टी वुड बी 8x पावर 2 minus 8x power 4, then this would be positive t and minus t squared, right? Yeah, so it's like 8x power 2 minus all that stuff. So वैसे t square तो वैसे भी छोटा है, so 8x power 2 is the thing that we have to consider the most. और यहाँ से भी मुझे सिर्फ ये वाली टर्म कंसिडर करनी है ज़्यादा से ज़्यादा. So no, it's actually, अच्छा समझा क्या हुआ यहाँ पे जो है. ओके, ओके, ये गलत हो गया. When you can clearly see ये even function and everything, but इसका जो डेरिवेटिव है ये एक जगह पे कुछ और दे रहा है, एक जगह कुछ और दे रहा है. Oh, come on, this is really bad. थिंग इज कि यहाँ पे डेरिवेटिव जीरो हो जाना चाहिए था, बट यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे डेरिवेटिव नेगेटिव हो रहा है, विच डजंट मेक सेंस. तो यहाँ पे इनफैक्ट ये नॉन डिफरेंशिएबल है. यस, दैट्स वेरी करेक्ट. और मैंने सब कुछ करके देख लिया एंड इट इज इनफैक्ट नॉन डिफरेंशिएबल. वन और नेगेटिव वन पे तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि हाँ नॉन डिफरेंशिएबल है. यहाँ पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है क्योंकि या ये जो चीज रहेगी 4x क्यूब माइनस, राइट, ऑल दैट स्टफ, आई थिंक दैट मेक्स सेंस. 1,81 वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल. और फाइनल पॉइंट्स अपने बचे हैं ये दो पॉइंट्स, मे बी वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल ना हो बिकॉज वहाँ पे वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो. सो दिस इज जस्ट अ रियली रियली हार्ड क्वेश्चन. 84th मैंने बी किया था, हम लोगों ने ए बी सी दिया है. Oh, and f of x equal to cosine x has 4 solutions. The cosine x graph, it looks something like pi is 1 point, no sorry, pi by 2 is a 1 point something, तो वो यहाँ पे और यहाँ पे होगा probably. So cosine x graph ऐसा दिखता है. Yes, it does have 4 solutions. Oh, तो मैंने वो किया क्यों नहीं आखिर? Yeah, मैंने वो किया क्यों नहीं? No idea. Well, yeah, whatever. This works. Let's go for next question, which is 87. 87 पे है, मैंने BC किया, हम लोगों ने ABC किया है, ठीक है. 3 circles with different radii cut each other orthogonally. Their centers are C1, C2, C3. Then triangle C1, C2, C3. So it can be equilateral, they are saying, or right. Yeah, why not? It can in fact be equilateral. What's the problem? Right, just circles cutting each other orthogonally. Center C1, C2, C3. Triangle जो रहेगा C1, C2, C3. It can be equilateral. तुम radius को change करो ना, such that they would cut in fact. Right, ये तो तुम obviously कर सकते हो. What's the problem? मैंने वो क्यों नहीं select किया है? I'm not sure. तो तुम्हारे पास में कोई भी ऐसे दो डिस्टेंस, इनफैक्ट वो डिस्टेंस हमेशा सेम ही होना है. सो लेट्स से वो साइड लेंथ एस है और यहाँ पे आई नो सिमेट्रिक है, इसलिए लेट्स जस्ट से कि दोनों रेडाई सेम कर देते हैं. मुझे सिर्फ एक आंकर एग्जांपल देना है इस फैक्ट का कि वो नहीं हो सकता इक्विलैटरल. मुझे ये डिस्प्रूव करना है, सिर्फ उतना ही करना है, देन विल बी डन. सो अगर अगर ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, दैट मींस r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इक्वल टू s. So r should just be s upon, sorry, s square. R should just be s upon square root 2. Just set that radius and you are done. What? S upon square root 2 is bigger than s? No, it's not. So what's the problem? I don't know. मैंने a क्यों नहीं select किया? तो काफी easy था. I think मुझे लगा होगा कि ये can't be equilateral बोल रहे हैं, जबकि in the end वो can be equilateral कह रहे थे. ठीक है. 87th हो गया. 94th. 94th मैंने किया नहीं, उन लोगों ने ये भी किया है ऐसा. ये मैंने किया है इनफैक्ट, मेरा वीडियो देख लो तुम लोग. या सो ये जो इंटीग्रेशन है 0 टू पाई अपॉन टू नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स या फिर नेचुरल लॉग ऑफ कोसाइन एक्स, वो नेगेटिव पाई अपॉन टू नेचुरल लॉग 2 रहता है. सो ऑफ कोर्स a1 प्लस b1 नेगेटिव पाई नेचुरल लॉग 2 रहेगा. और फिर तुम a2 प्लस b2 भी ढूंढ सकते हो प्रॉपर्टीज यूज करके, वो भी काफी ईजी है यार. मैं नहीं करूँगा इसको. राइट, तो 94th का ए बी करेक्ट होना चाहिए. मैंने फर्स्ट टाइम पे नहीं किया होगा, इसलिए मैंने वापस लिख दिया. 97th का मैंने किया नहीं. BC ये भी मैंने किया है, ऐसे मैंने वीडियो बनाया है, वो देख लो. ठीक है.
98 दिस, हाँ ये चीज, लुक ये पूरा घटिया है। यू कैन क्लियरली सी ये पॉलिनोमियल है और उसका तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो। इन नो वे कैन यू गेट दिस काइंड ऑफ थिंग, कैन यू, अनलेस ऑफ कोर्स अनलेस ये चीज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इन दैट केस सब कुछ अलग हो जाएगा। बट तुम्हें बोलना चाहिए ना यार एटलीस्ट कि ये क्या है ये। ठीक है whatever। ये तो यानी पूरा क्वेश्चन ही डाउटफुल दिया इन लोगों ने। ये ब्रैकेट्स का मतलब क्या है, क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो मैं राउंड ब्रैकेट्स क्यों नहीं यूज किए तुम यहाँ पे, इरेशनल वैल्यूज क्यों दे रहे हो मुझे, doesn't make sense right? So this thing is like x minus 1 into x minus 2 and stuff, but क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है अपने को इस टाइप से नहीं देखना चाहिए, इसको अलग टाइप से देखना चाहिए, इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर कर सकता हूँ प्रोबेबली। ऑप्शंस देखते हैं। if a equal to 1 then I is this thing, if a equal to, तो मैं a की वैल्यूज दी है और बोला है कि I की वैल्यूज मुझे बताओ। राइट ये तो करने की इच्छा भी नहीं हो रही है, बट मुझे पता है कि कैसे करते हैं। तुम ये जो स्टेप फंक्शन है उसका ग्राफ क्रिएट करते हो और फिर इंटीग्रेशन के लिए एरिया ढूंढ लेते हो, दैट्स इट। तो एक काम करो, इसका ग्राफ अपन क्रिएट कर ही डालते हैं, क्या जा रहा है। So let's see, when is x square minus 3x plus 2 equal to 0? That would be when x is 1 or x is 2. When is this equal to 1? So अपने को पता है कि ये 3/2 पे मिनिमम वैल्यू देने वाला है, so it should be x equal to 2. So 3/2 is middle of this thing, right? यहाँ पे पैराबोला रहेगा। Good thing is that it's increasing on both sides, मतलब इंक्रीजिंग बोलने से अच्छा मैं बोलूँगा कि राइट साइड पे इंक्रीज हो रहा है, इस पे डिक्रीज हो रहा है, सिमेट्रिक ऑफ कोर्स या। तो व्हेन इज दिस इक्वल टू 0 इतने रेंज में उसका स्टेप फंक्शन, व्हेन इज दिस इक्वल टू 1 दैट वुड बी व्हेन x स्क्वायर minus 3x plus 1 equal to 0, that would just be x equal to minus b 3 plus minus square root of b square 9 minus 4 is, so yeah, minus this upon 2, so 3 plus minus of square root of 5 upon 2, or basically 3 upon 2 plus minus of square root of 5 upon 2. So square root of 5 upon 2 is 2 point something upon 2. That means वो थोड़ा सा बड़ा होगा नेक्स्ट इंटीजर से, तो इतने पोर्शन में वो 1 है, राइट। सो इफ a is yeah like, अच्छा मुझे 0 to ये करना है, हाँ। सो हाँ, और ये भी यहाँ पे इस टाइप से होगा, तो इतने पूरे रीजन में ये 0 है। अच्छा ये 2 कब होता है, दैट वुड बी व्हेन x इज इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 0। सो जब 0 होगा देन राइट, तब तक 1 रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा टिल x इक्वल टू 3। सो नॉट दैट हार्ड इन फैक्ट, टिल 0 राइट। और ये थोड़ा बड़ा वाला दिया मैंने, 3 probably यहाँ तक होगा, this thing is, this point is I think 2 whatever। so yeah, let's check। so if a equal to 3 तो ये जो पूरा एरिया रहेगा इट्स जस्ट दिस प्लस दिस, ये तो कुछ है ही नहीं, जस्ट दिस थिंग। तो ये लेंथ कितनी है, वेल ये पूरी लेंथ जस्ट 3/2 है, एंड दिस लेंथ इज व्हाट, स्क्वायर 5/2 राइट। आई मीन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ऑफ कोर्स ये जो रूट रहेगी दैट थिंग वाज 3/2 माइनस स्क्वायर रूट 5/2, सो इट्स ऑब्वियस। तो ये जो वैल्यू है इट्स जस्ट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5/2, ये इतनी लेंथ रहेगी, एंड दैट टाइम्स 1 right, but actually 2 times of that, so 3 minus square root 5, that would be this area of a is equal to 3, so sorry, a equal to 3, yes. No, this is wrong, this can't be, c doesn't make sense, why is this 2 minus square root 5 though? Okay, so if a is equal to 3/2, right, so from here to here, तो फिर उसका आधा, right? इसमें 2 minus square root 5 कैसे आ रहा है फिर? No, it's got to be 3 plus, क्यों ऐसा कैसे हो सकता है फिर?
0 to that, और यहाँ से यहाँ तक ही 0 है. What's the problem? Okay, whatever. So if A is 1, then till that, okay, area इतना सही है, which is just 3 minus square root 5/2. So A is very correct. If small a is 3, then it's just 2 times of that area, of course, because symmetric or 3.2, remember, right? तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पूरा यहाँ तक चलो, राइट. तो ये तो इनकरेक्ट है, ये भी सिमिलरली इनकरेक्ट रहेगा, बिकॉज 3.2 ये पॉइंट और फिर काम नहीं करता है. एंड if a is 2, no, so just a. So 98 का इन लोगों ने क्या दिया, इन लोगों ने ABCD सारे दे दिए. What? No, that can't be. अब तो ये और भी अजीब हो रहा है. How does this make sense? लोग ये स्टेप फंक्शन पक्का 1 ही दे रहा है ना, अनलेस ये सीलिंग फंक्शन है. इन दैट केस ये और ऊपर जाएगा. Oh, in fact, A भी, no, A is actually correct. A is correct. No problem with that. 1 तक जा रहा है. This does work. 3/2 की तुम्हें सेम वैल्यू मिलनी चाहिए, पर तुम्हें नहीं मिल रही. इसका मतलब है कि इनफैक्ट एक थोड़ी गड़बड़ हो गई इसमें. बट हमने अभी तो किया कि जब ये 1 होता है, इन दैट केस इट दिस एंड दिस, अनलेस ये सीलिंग फंक्शन है, तब तो सब कुछ ही हमने गलत कर दिया, बिकॉज इन दैट केस, राइट, ये सीलिंग फंक्शन ये ऊपर चला जाएगा. दैट राइट. दिस इज इम्पॉसिबल यार. मैं कुछ नहीं सकता कि ये एक्चुअली में ये चीज क्या है, जब तक मुझे पता नहीं है क्या है, मैं सब सॉल्व कैसे करूँ. ओके, 98 उन लोगों ने ABCD दिया, नो आइडिया क्या है. 100 इज, मैंने ABCD दिया है, उन लोगों ने B and D दिया है. Equation of a point which is at a distance of, equation of tangent at a point which is at a distance of 2 from the center of this ellipse. Okay, is, so no big deal. It's going to have 4 different tangents. You just know this, right? Because ये जो ellipse रहेगा, square root of 6 is bigger than 2 and square root of 2 is less than 2. Or, right, so it is in fact going to just have 4 different tangents. और अगर कोई भी बोलता है कि इसमें सिर्फ 2 tangents है, तो तुम क्या बोलोगे उसको? या तो सिर्फ B और D कैसे काम कर सकता है? If B works and B works, then इसमें क्या है, सिर्फ -2 हो गया, और ऑब्वियसली ये सिमेट्रिक है, so it should actually work, right? यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है. 2 पर्टिकुलर स्लोप्स रहेंगे, बिकॉज यहाँ पर एक पॉइंट है इसका स्लोप और यहाँ पर एक पॉइंट है उसका स्लोप. सो ऐसे 2 स्लोप्स रहने वाले. मैंने ABCD क्यों किया है दैट केस, बिकॉज इसमें तो 2 स्लोप्स नहीं, इसमें 4 स्लोप्स दिख रहे हैं. दिस डजंट मेक एनी सेंस. कम ऑन. नहीं, सॉरी 4 स्लोप्स रहेंगे, राइट. स्लोप यहाँ का स्लोप अलग रहेगा. नहीं यार, नहीं, 4 स्लोप्स कैसे हो सकते हैं? कि यहाँ का स्लोप अलग रहेगा? नो, हाउ वुड दैट हैपन? Does this make sense कि वो स्लोप अलग अलग हो? जब तुम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हो, तो तुम्हारे सारे जो स्लोप्स रहते हैं वो चेंज होते हैं, और वो एक पर्टिकुलर पैटर्न चलेगा, राइट. सो पहले ये जो रहा होगा एक सर्कल रहा होगा, और इसका जो ये स्लोप था, अब अगर मैं श्रिंक कर डालूं, देन वो इस टाइप से हो जाएगा, राइट. तो ये दोनों स्लोप्स सेम हो जाने चाहिए थे. स्टिल एक काम को जिसको प्रॉपरली करते हैं. सो x कोसाइन थीटा अपॉन square root 6. Wow, bad, really bad. Okay, plus y sin theta upon square root of 2 is equal to 1. ये अपने tangents हो गए. Then cosine square theta upon
actually not upon, times 6 plus 2 sine square theta. That should be equal to the radius and, sorry, not radius, distance. Distance is what? क्या बोला इन लोगों ने? Distance 2, right? So 2 square 4. That means 3c square plus 2, sorry, plus s square equal to 2. So 2c square plus 1 equal to 2. So 1c is equal to 1 upon square root 2. C square equal to 1 upon square root 2. So like s squared. तुम ढूंढ लोगे upon that. Of course, तुम्हें जो tan theta values मिलने वाली है, those represent everything, right? Wait, what? Okay, so c is plus minus, right? ये सारी वैल्यूज हो सकते हैं ना, क्योंकि 4 पॉइंट्स लोगे, so it's just that ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि सारे 4 पॉइंट्स हो सकते हैं. देन वो अगर मैं पुट करूँ, देन इट्स प्लस माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू 2. ये टाइप के मुझे मिलने वाले लाइन्स, राइट? ओके, तो सिर्फ जो एक्स अपॉन स्क्वायर रूट 3 वाले हैं वही काम करने चाहिए. तो ये काम करेगा और ये काम करेगा. नहीं, सॉरी, ये सो बी एंड डी. 100 का उन्होंने भी बी और डी दिया. मैंने ए और सी क्यों चूज किए, नो आइडिया, जस्ट हो गया. Yeah, whatever. Next है 102. 102 A B C मैंने डाला है और उन लोगों ने A और C दिया, तो B incorrect है according to them. So this satisfies this equation. In other words, right, A squared is equal to negative K times I. That's what they are saying, huh? Well, okay. Then what? What's the problem? So K can be this thing or it can be this thing. I'm pretty sure of this because it's just determinant of A ka square is equal to K, right? Negative, as you know, K squared. But yeah, so K is just plus minus determinant of K. अब मैं ऐसे से बोल सकता हूँ डायरेक्टली कि ऐसा ही होने वाला है. I mean, तुम राइट, तुम A की जगह पे नेगेटिव A ले लो ना, तो वो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा. एंड दैट मीन्स कि इट कैन बी जस्ट, और नो, बट वो डिटरमिनेंट चेंज नहीं करता है. देन हाउ वुड वी नो? फिर अपने को आई थिंक प्रॉपर A स्क्वायर ढूंढना पड़ेगा. एंड देन okay, BC is not 0 and whatever. So A square is just ABCD. ABCD. Then let's see. ये वेक्टर उसमें जाता है just A square plus BC and then it's AB plus BD. और फिर उसमें जाएगा. So क्या अपन ने पहले किया हुआ है? I think अपन ने किया हुआ है AC plus CD and BC plus D square is equal to negative K times identity matrix, right? Then what that means is that these two must be 0. So B into A plus D is equal to 0 and C into A plus D equal to 0. So because BC is not equal to 0, that means कि B और C में से कोई भी 0 नहीं होना चाहिए. That means A plus D has to be 0. So A plus D is equal to 0. In other words, A is equal to negative D, or let's say D equal to negative A. So ये चीज हो जाएगी just A square plus BC 0 0 and A square plus BC. That just means that yeah, that K is just negative of A square plus BC, right? Huh. Oh yeah, sure. So this is just negative A, which is just D, and that times A, and then plus, sorry, minus BC. So that is just determinant of A, right? So इस टाइप से करना पड़ेगा अगली बार से. So in fact there is only one solution. This is very good. I thought इसके दो solutions होगी, but नहीं है. This is a okay, whatever. Okay, whatever. 106.
ये क्या हो गया? राइट 106। हाँ ये तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं कितनी बार, ये तो मैं वापस नहीं करूँगा। ये ए बी सी करेक्ट होना चाहिए। या इसके अपन अलग अलग टाइप के वर्जन भी कर चुके हैं। नहीं इनफैक्ट ऐसा एक ही वर्जन ये बार बार रिपीट पे लगा रहे हैं। या ठीक है, तो 106 मैं नहीं करूँगा। 107 107 ए बी सी मैंने दिया था और उन लोगों ने ए सी दिया, तो अकॉर्डिंग बी इज नॉट करेक्ट। ये चीज f be a real valued function defined on the interval 0 comma infinity by f of x equal to natural log of x plus this thing. So f double dash x exists for all x in 0 to infinity. Is this a wrong statement? I don't think so. Why should it be wrong? ये चीज तो वेरी डिफाइंड लग रही है मुझे। लेस ऑफ कोर्स ये जो एक्चुअल फंक्शन आएगा तो डेरिवेटिव वो अचीव कर रहा हूँ। सो 1 अपॉन एक्स, मुझे पहले एफ डैश निकालना है। सो 1 अपॉन एक्स और इसका जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, राइट। और फिर इसका डेरिवेटिव नेगेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इसका डेरिवेटिव जस्ट कोसाइन ऑफ एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। सो या इनफैक्ट 0 टू इन्फिनिटी में ये चीज 1000 बार -1 होने वाली है। दैट मीन्स एट दोज वैल्यूज वी आर एट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। x 0 नहीं होगा, दैट्स कूल, बट ये चीज 1000 बार 0 होगी यार। बट नो वरी, you can definitely write this in a different way, right? So cosine x भी तो 0 अप्रोच करेगा ना। That's the thing. It will also approach 0. So I'm thinking अगर मैं इसको डिवाइड करूँ by let's say square root of cosine x, like square root of cosine x मुझे जाएगा square root of cosine 2 square root of, just magnitude wise देख रहा हूँ मैं, just magnitude wise. So whenever sin cosine -1, 0 पे अप्रोच करने लगता है, at those points we can do this thing कि this will just be 1 upon cosine x plus sin x upon not helping. So जब ये अप्रोच करने लगता है then what happens? Sin, so x is कब अप्रोच करता है वो x is negative pi upon 2 plus 2n pi and let's say plus minus actually just plus h can also be negative actually. So h एक infinitesimal quantity अपन कंसिडर करने वाले थोड़ा टाइम में, तो in that case this just becomes well cosine of negative pi by 2 plus something, that's just cosine of pi by 2 minus that, so sine of h, sine h upon 2 square root of, yeah sure, 0 अप्रोच कर रहा है। ओह नो, एक पॉइंट पे वो पॉजिटिव 1 अप्रोच करेगा, एक पॉइंट पे नेगेटिव। ओके दैट्स व्हाई ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स का क्या हो जाएगा? इट विल जस्ट बी 1 माइनस ऑफ कोसाइन h, right? So sine or h is just something like plus minus whatever. Yes, 2 square root of 2 sine squared of h upon 2, sure, you write it like that. So sine of h upon 2 square root 2 mod of sine h upon 2. That's the problem. So this thing can definitely be approximated as h, and then this thing can definitely be approximated like that. So square root 2, and then the problem is यहाँ पे mod h आएगा, तो ये प्लस 1 upon square root 2 और negative 1 upon square root 2, yeah right. So f double dash doesn't exist all the time, it only exists. ठीक है समझ गए। So b is wrong, ठीक है। Let's go to 108 का मैंने d दिया, उन लोगों ने b and c दिया है। Okay, B and C, how? Oh, so no A over here, huh?
this thing, कितना बचा है, काफी सारा और बचा है। अभी मैंने चालू है 108, ठीक है हो जाएगा 2-3 और घंटे। जस्ट डू इट। पता नहीं अपलोड करने में कितना टाइम लगेगा यार, ये चार्जिंग तो बनेगा। So 108, let's do it. Integration from 0 to infinity of e power negative x squared dx is equal to a. Oh, so when n is 0, just have this thing. So like I0 is a or something, whatever. Let's do it. So some kind of recursion. In is equal to this thing. You can set this as. So क्या कर सकते हैं इस चीज को इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट, yeah, because this is not integratable actually, so we'll just have to do that. Or you could say okay, x को कॉमन लो, choices हैं अपने पास में, that's what we increase our x value, right? Well, whatever, just try to do it. अगर मैं लेट्स से इस चीज को डिफरेंशिएट करता हूँ, इसको इंटीग्रेट करता हूँ, दिस वुड बी x पावर n प्लस 1 अपॉन e पावर x square and it goes from 0 to infinity, और upon n plus 1 भी होना चाहिए ना, right? And then negative 1 upon n plus 1, and then negative भी पॉजिटिव हो जाएगा anyway, and यहाँ पे 2 भी आ जाएगा, so then it's just x e power x negative x square, yeah, इसकी डेरिवेटिव से, and then x power n plus 1. So what is this? Well, 0 to infinity, when you put 0 in this, it just becomes 0 anyway. When you put infinity, it also becomes 0 because e power x square बहुत जल्दी increase होता है in comparison to x power n plus 1, right? अब मुझे वो पूरा प्रूफ करने की इच्छा नहीं है, but yeah, just वो 0 हो जाएगा, just know it. So in is just 2 upon n plus 1 integration of ये सारी चीज. I mean, we can definitely do it, right? We can definitely integrate this thing because n can also be 0, it will still work actually. So 2 upon n plus 1, and well, it's going from 0 to infinity, of course. ये चीज x power n plus 2 e power negative x squared dx, and guess what is this? It's just in plus 2. So in plus 2 is equal to n plus 1 upon 2 into in, where n should be bigger than or equal to 0, right? So yeah, let's say n अगर even है, then okay, this is bad. Okay, whatever. So n, that is, oh, so n, yeah, in is just n minus 1 upon 2 in minus 2, where n is bigger than or equal to 2, right? So let's start. In is n minus 1 upon 2 into n minus, so next जो आएगा इसमें से एक निकालोगे, so n minus 3 upon 2, चलते जाओ till you eventually get n minus some odd, something odd, which let's say it's 2k minus 1, that upon 2, और फिर यहाँ पे I 2k प्लस में बोलते हैं यहाँ पे, बस क्या मतलब ये चीज नहीं, you know what, 2k minus 1, yeah, बस यहाँ पे अगली बार और इंक्रीज होने वाला है, right? So this will be I 2k, sorry, n minus 2k, something like that, क्योंकि ये सारे सिर्फ ऑड नंबर्स आने वाले, राइट? यहाँ पे इनफैक्ट नो, यू नो व्हाट, वो डिपेंड करेगा एन ऑड है ये इवन है, सो अगर एन, लेट्स से अगर एन ऑड है, ये चीज क्या है, ये 0 रहेगी ना, सो लेट्स एक्चुअली गो फॉर एन इक्वल टू इवन. अगर एन इवन है देन यू कैन जस्ट कीप ऑन गोइंग, n minus 1 upon 2, n minus 3 upon 2, चलते जाओ till you eventually just get n minus, अगर n इवन है देन द लास्ट नंबर, ये सारे ऑड हो जाएगा, राइट? लास्ट में आएगा 1 अपॉन 2 और उससे एक छोटा I, and that means I0 actually, right? And I0 is just A.
थोड़ा उससे पहले का ट्राई करते हैं इनफैक्ट. Go for 3 upon 2, then I1, right? अब I1, no wait, it's not decreasing like this actually. It should be I2. That's more like it. फिर यहाँ पे 1 upon 2 आएगा, right? Exactly. So I2 using the same thing. How can that be written? So will this work actually? What you're saying is that I0 that can be written as x power 1 upon 1 and then e power x square and 0.40. Go ahead. Sorry, wait. Sorry. और जो बचा पार्ट है plus, so n was 0, which is 2 upon 1 now, integration of, so it's like x e power negative x square and then it's x, it's like that. So I2 is still just 1 upon 2 I0, which, yeah, it's very much correct. And this thing can definitely be written as that times 1 upon 2 times A. So अगर n even है, then this thing can be written like this. Or yeah, let's look at this. This thing is 2 minus 1, or 2 minus 1 से अपन जा रहे हैं n minus 1 तक. So the number of things over here is just कितने 2 power n upon 2, because n upon 2 numbers आए थे यहाँ पे. And then this thing can be written as like n minus 1 factorial, but सारे जो missing terms है यानी कि n minus 2, n minus, yeah, वो सारी चीजें n minus 4 चलते जाओ till you eventually get 2, वो कहाँ पे गई? So this is just कितने कितने आ गए यहाँ पे 2 to the power of, so अपन 2 into 1 से start कर रहे हैं till 2 into n upon 2 minus 1, so n upon 2 minus 1, and then it's basically just n upon 2 minus 1 factorial, right? So it's n minus 1 factorial upon n upon 2 minus 1 factorial, और फिर यहाँ पे जाएगा 2 power n minus 1, right? So yeah, this should be correct. D should be correct, right? 108 का मैंने D दिया है, but we know as a fact कि B correct है. So how did this happen? I don't know. और दूसरा केस रहेगा जब n odd रहेगा. In that case ये जो चीज है we just keep on going. So once again हम लास्ट में अपने को क्या क्या मिलना शुरू होगा? ये सारे इवन नंबर्स रहेंगे, राइट? सो वी विल गेट 4 अपॉन 2 एंड देन I3 and then 2 upon 2 I1. I1 से ज़्यादा अपन आगे नहीं जा सकते, राइट? तो I1 is just integration of x e power negative x square dx. So there we go, 1 upon 2 this is dx square. So negative 1 upon 2 e power negative x square and goes from 0 to infinity. And yeah, infinity पे ये चले जा रहा है and 0 पे, oh also negative infinity. So yeah, or just plus 1 upon 2 basically, right? So till 2 upon 2 and then that times 1 upon 2 actually when n is odd. So look at this, कितने इसमें 2 आ गए? अच्छा पहले अपन सिर्फ ये सीरीज की बात करते हैं. ये सारे नंबर्स इवन है. कितने okay, nice, this is actually really nice. Look at that. So it's just m minus 1 upon 2 factorial. Yes, and that upon 2 of course. So of course C is also correct. पता नहीं मैंने क्या किया था ये इतना गलत हो गया, but yeah, B and C is correct. 2 to 1 1 1. ओके, तो मैंने ACD किया है, उन लोगों ने ABCD किया है. A variable circle touches two distinct given circles of radii R1 and R2. Locus of the center of this circle, depending on two given circles, may be two distinct circles of of course one way is that कि उनका radius equal हो गया somehow, then this would just be a line. अगर वेट, अगर वो दोनों सेम ही सर्कल हो गया, मतलब उनका सेंटर भी सेम हो गया somehow magically, then what would happen is that कि यार ये तो सर्कल हो जाएगा. वो इलिप्स
यानी हाँ सर्कल की एक इलिप्स ही है ना। सो तुम राइट जनरली वो इलिप्स रहेगा या फिर हाइपरबोला भी सकता है अगर वो अलग टाइप से हो रहा है तो। सो जनरली कैसा है कि तुम्हारे पास दो सर्कल्स है, ये सर्कल इसको टच कर रहा है, देन ये जो डिस्टेंस रहेगा माइनस ये जो डिस्टेंस रहेगा दैट्स काइंड ऑफ कांस्टेंट बिकॉज r1 माइनस r2 राइट। सो r ये तो हाइपरबोला देगा। ओके ये चीज हाइपरबोला दे रही है, नॉट व्हाट वी वांट। दूसरा हो सकता है कि वी हैव दिस काइंड ऑफ थिंग, यहाँ पे सर्कल टच कर रहा है, बहुत गंदा बना रहा हूँ। तो ये R1 है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इसका सेंटर है शायद से, ये पूरा R2 है और व्हाटएवर दिस, नहीं वेट वेट लेट्स से इसका सेंटर अभी के लिए अपन भूल जाते हैं। सो यहाँ पे इसका सेंटर है, दिस इज R, ये जो डिस्टेंस है दैट थिंग इज जस्ट R प्लस R1, और जो दूसरा रहेगा दूसरे सर्कल से उसका डिस्टेंस रहेगा, यहाँ पे सबको सेंटर है इसका, तो ये पूरी चीज R2 है एंड दिस थिंग इज दिस सॉरी दिस थिंग इज R, then this is just plus R2 minus R1, तो इनका जो एडिशन है दैट्स काइंड ऑफ अ कांस्टेंट राइट, R1 plus R2, तो ये चीज इलिप्स रहेगी, हाइपरबोला भी हो सकता है। फाइनली अगर समहाउ दोनों सर्कल सेम हो जाए, डन यार, राइट, देन या वेट नो 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 नॉट नॉट जस्ट लाइक दैट, अगर दोनों सेम हो गए, वन 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 उन लोगों ने ABCD दिया है तो क्या ये सर्कल भी हो सकता है इसका सेंटर? डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट सर्कल्स यार, नहीं फिर ये पॉसिबिलिटी गलत है। व्हाट एल्स कैन वी डू? When can this actually be a circle? Oh hey, I think I know when this can be a circle. जो ellipses है उसी में सर्कल्स भी आ सकते हैं ना, राइट? सो सपोज उनके सेंटर सेम हो जाए, वो कॉन्सेंट्रिक है बट उनका रेडियस सेम नहीं है, इन दैट केस यस लुक एट दिस, ये चीज हमेशा सर्कल, ये अपने को पता है कि इलिप्स होने वाला है ये केस, बट ये बहुत स्पेशल केस है क्योंकि यहाँ पे सेंटर सेम हो गए, पहले नहीं थे, तो अब ये इलिप्स है, सॉरी अब ये सर्कल है, फोकस तुम्हारे सेम आ गए तो अब ये सर्कल है। सो B also works, C also works, D and A both, right? तो 111 ABCD, well that's correct, ये अच्छा है। ओके 119 मैंने ABCD किया, हम लोगों ने ACD किया, तो फिर B इनकरेक्ट है। So the following functions represent identical graphs in the xy plane for all x belonging to 2 to 3. ओके तो तुम बोल रहे हो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, और ये जो A और B है ये सेम ग्राफ नहीं है। ओके इसकी डोमेन क्या है? चल 2 to 3 में है ना, सो 2 to 3 में मतलब कि दिस जस्ट गोज फ्रॉम 0 to 1, राइट? या वेल लुक एट दिस प्लस या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, that would just be 1, right? So what's the big deal? Why isn't it the same thing? Why is it not correct? Sine inverse of sine inverse of 0, that would just be that. Right? ये जो स्क्वायर रूट वाली चीज है हमेशा पॉजिटिव है, सो ये हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, देन इन दैट केस यू कैन डेफिनेटली राइट both of these to the same expression. What's the problem? ये आइडेंटिकल ग्राफ्स क्यों नहीं है एग्जैक्टली? कोई मे बी डोमेन प्रॉब्लम है या फिर ये कहीं तो भी डिसकंटिन्यूटी दे रहा है, ऐसा कुछ है? आई डोंट थिंक सो। cosine inverse 1 is 0, sin inverse of 0 0, सही तो हो रहा है सब कुछ। Or if it's like x is between 2 and 3, then you can definitely say that x is 2 plus something, let's say 2 plus sine of t,
It goes till 1. So instead of saying sine of t, let's say sine squared of t, because वो even better होगा, where t can be anything. It can be 0 to 2 pi में कुछ भी हो सकता है. ओके, थोड़ा सा अजीब हो रहा है. ग्राफ करना बेटर होगा आई थिंक. नहीं, इसको कैसे ग्राफ करूँगा? साइन इनवर्स सीरियसली नहीं नहीं नहीं. कम ऑन यार, गिव मी सम हिंट. क्यों ये सेम चीज नहीं है? तुमने ऐसे अजीबोगरीब एक्सप्रेशन देख लिए, तुमने ये सब देख लिया, बट ये सेम नहीं है फॉर सम रीजन. इट हैज टू बी. इसमें नेगेटिव, इसमें तुम कोई नेगेटिव वैल्यूज नहीं डाल रहे हो, सब कुछ सही से हो रहा है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सब कुछ, राइट? वैल्यूज मैच कर रही है हर पॉइंट पे जहाँ पे मैं देख रहा हूँ. तो ये क्यों काम नहीं करेगा? राइट, एक पॉइंट पे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 दिया आएगा. देन लेट्स सी, अगर ये 3/4 आ रहा है ये वैल्यू, देन ऑफ कोर्स ये चीज 1/4 आएगी. एंड देन इट जस्ट मैचेस अप परफेक्टली. व्हाट्स योर प्रॉब्लम? क्यों ये गलत है? ये सेम ग्राफ्स क्यों नहीं? आई डोंट नो. इसे मैं सर्च करूंगा कि ये सेम क्यों नहीं है, बट अभी तो मैं कुछ बोल नहीं सकता. 122 122 मैंने ए बी किया है, उन लोगों से बी किया है. दीद में मुझे प्रॉब्लम नहीं है. एंड इन दिस थिंग तुम ये मान सकते हो और ये नहीं मान सकते. यार ये किस टाइप की प्रॉब्लम है तुम्हारी? एक्यूट एंगल, श्योर, हमारा साइन थीटा पॉजिटिव है. 1+2 कोसाइन थीटा वो तो है ही पॉजिटिव. आई मीन yeah, 2 cosine theta just goes from 0 to 2 itself is positive, so it works. And what's the problem? ये चीज क्यों नहीं काम करती? This should work यार. हमने किया था, I just know it actually does work, right? ठीक है, मुझे नहीं पता कि तुमने क्यों नहीं किया. तुमने सिर्फ बी दिया इसमें. अगर तुम ये मान रहे हो तो तुम्हें ये भी मानना पड़ेगा, राइट? क्योंकि अपने को पता है कि ये जो चीज है इट्स जस्ट द स्क्वायर ऑफ दिस थिंग. एंड या यूनिट वेक्टर्स एंड व्हाटएवर. स्टिल रिमेंबर कि अपने को ये इसका स्क्वायर मिला था क्लियरली, और अगर ये काम नहीं कर रहा है तो ये भी नहीं करना चाहिए. ना कि ऐसा कुछ है कि ये साइन है और ये साइन नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं. सारे पॉजिटिव है बिकॉज एक्यूट एंगल. ठीक है, 122 भी अजीब है. 125 मैंने ए बी दिया, हम लोगों ने ए सी दिया है. Arrangement from this point is incident on this ellipse. So this is just x squared upon 25 plus y squared upon 9 is equal to 1, right? So of course 5 and 3 तो जो 4,0 रहेगा वो फोकस रहेगा, एक नेगेटिव 4,0 फोकस रहेगा. Equation of the reflected ray after reflection may be. तो दो रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं और abscissa 3 incident on ellipse, right? So x equal to 3 है, then that just means we can figure out what y is actually. y की दो वैल्यूज रहेगी and from that you can just figure out कि वो ray क्या रहेगी नेक्स्ट वाली. Is it that hard? I don't think so. Let's do this thing. तो abscissa यानी कि x coordinate 3 है, then what's the y coordinate? Right? It's going to be plus minus in the square root of something. So अगर मैं x equal to 3 पुट करता हूँ, just y squared upon 9 equal to 1 minus of 9 upon 25, which is 25. 16 upon 25. So y upon 3 is equal to plus minus of 4 upon 5. So y is just plus minus 12 upon 5. There we go. Oh, square root की जरूरत नहीं है, just plus minus 12 upon 5. Right, then what is the ray? So y minus 1, y की coordinate 0 है और क्या x minus 4 is equal to the slope. The slope is plus minus 12 upon 5 upon 3 minus
4 plus, yeah, 1 whatever, plus 1 has changed हो जाएगा minus plus में, but still same is concept in fact. So 5y is equal to 12. Actually, you know what, plus minus 5y equal to 12x minus 48. So 12x plus minus 5y minus 48 equal to 0. That should be the thing, and that would be ये चीज और, well, 12x minus 5y, where is it? Fine, it's not plus, oh yeah, it's plus minus, right? So it's not be like that. So हाँ, ये भी correct है, ये भी correct है. So A and B should be the thing. 125 का मैंने A and B किया, उन्होंने A and C दिया है for some reason. 5x plus 12y equal to 50. Seriously, how? How does it make sense? Abscissa is just the x coordinate, right? So this should work, yaar. After the first reflection, of course, this and this. Right, the slopes are just negative of each other, not reciprocals of each other. That would be very weird. The ellipse horizontal, it's not vertical. So what is this? Seriously. 125 I think उनका correct नहीं है. So then 129. तो मैंने AD दिया है, उन लोगों ने AC दिया है. टायर्ड. तो ए तो करेक्ट है, सब डायरेक्ट बोल सकते हैं. तो या तुम लोगों को याद आ रहा होगा मैंने कैसे किया था. इसको एक्चुअली सॉल्व करना पड़ा था हमें. कैन यू बिलीव दैट? इट्स द वर्स्ट. So what we did was we said x is z cosine theta and y is z sin theta, and वहां से मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया. So it's just z squared is equal to 1 upon, so 5c squared plus s squared, this 1 plus 4c squared plus 4sc, right? Or of course bigger than 0, so we just said okay, theta is from 0 to pi upon 2. Who knows, that might work. Or of course z is a positive quantity as well. हमने ऐसा कहा था, right? So this is just 1 plus 1 plus 2, sorry, 2 plus 2 actually. 2 plus 2 cosine of 2 theta plus 3 plus square root 2. No, you know what? 2 square root 2, and then cosine, whatever, sine of 2 theta plus pi by 4, right? That's what this thing is. So as this thing increases, in fact, actually, as sine of 2 theta plus pi by 4 increases, your z square decreases. या फिर शायद से में भी अपने को सब कुछ x के टर्म्स में लिखना चाहिए. नो थैंक्स, नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसा. Just won't do it, right? Yeah. Wait a second. Okay, I get it. So z is okay. Z में स्क्वायर रूट वगैरह सब कुछ आ जाएगा, but the thing is कि मुझे समझ रहा है क्या हो रहा है. Thing is that x is z cosine theta, तो उसमें z का पार्टिसिपेशन भी है. ये तो बहुत बुरा हो जाएगा. ये अपन सिर्फ उसको बहुत बुरी तरह से सॉल्व कर रहे हैं. इट्स नॉट वर्थ डूइंग इट. In terms of x अपने को लिखना है, right? Okay, so we just have to find y in terms of x and then actually solve it. There's no other way. यार कितना अच्छा होता अगर मैं इसको ज्योमेट्रिकली देख पाता, but it's not possible. So y squared plus 4x times y plus 5x minus 1 is equal to 0. That just means y is negative 4x plus square root of b squared, so 16x squared minus 4 times of all that stuff, right? Minus 20x squared plus this plus 4 and that upon 2, I think. So it is negative 2x plus minus square root of, so 4 not jayega. Well, first of all, just negative 4x, right? So it's just 1 minus 1 of, okay, this is square root of 1 minus x squared, I think. So clearly x should be less than 1. Agar wo 1 se bada raha, then look at this thing, 5x squared. Yeah, they are done. That wouldn't make any sense. The thing is, in fact, x should be less than 1 upon square root 5 as well, huh?
something else to just keep in mind. Yeah. Oh, okay. This is, yeah. It works. It just works. Mhm. Hopefully it works. So अपने को y मिल गया, अपने को x तो ठीक है. तो y squared, sorry, z squared is just x squared plus y squared, और y squared कैसे ठीक होगा इसका स्क्वायर करके, और कोई तरीका नहीं है. So yeah, plus 4x squared plus 1 minus of x squared plus minus of 4x square root of 1 minus x squared. So that would just be 5x minus x squared, just 4x squared. Once again, it's 4x squared plus 1 plus minus of 4x square root of 1 minus x squared. Sure. Now think about it. अब मैं क्या कर सकता हूँ? You can definitely set x as cosine theta and something. I'm seriously surprised कि अपने को ऐसे कैसे actually ढूंढते आया ये सच बस. पॉसिबिलिटी तो अजीब है यार. What should have happened? क्योंकि x और y पॉजिटिव है. Okay, you know what? Because x and y are positive, अपन negative तो वैसे भी नहीं ले सकते. So just have to take the positive version over here, and that means कि यहाँ पे जब मैं square करूँगा, it should be negative version. I get it that x is less than 1, but it should also be less than 1 upon square root 5. वो यहाँ पे मुझे क्यों नहीं दिख रहा है significantly? Oh, it comes from this thing. Square root of 1 minus x square is bigger than 2x. Maybe that's how it actually happens. Yeah. Okay, that makes sense. So you just need to know that x is bigger than 1 upon square root 5 for this to happen. Sorry, less than 1 upon square root 5. And now this is the thing. So z square is this. You just need to figure out is z increasing है, decreasing है for what x. इसका derivative लेगा ना. So 8x 4 तो हटा ही दो इनफैक्ट. So just 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. जब मैं इसको डेरिवेटिव लेता हूँ और फिर माइनस अगर मैं इसको डेरिवेटिव तो एक्स अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट देन इट्स नेगेटिव 2x ओवर हियर. तो ये क्या गया जस्ट पॉजिटिव. So it's 2x minus root of 1 minus x squared plus x squared upon square root of 1 minus x squared. Can we here? 2x plus x squared minus of 1 minus x squared upon square root of 1 minus x squared. Like this, maybe. No. Instead, ये चीज करो. So this will just be 2x 2 square root of 1 minus x squared plus. नहीं यार, अपने को वैसे भी सॉल्व करना ही पड़ेगा ना, तो ये सब करने का कोई फायदा नहीं है. We just have to do this thing. ये ऐसा हो जाएगा, and we want this to be equal to 0. Yeah, this is 2x square minus 1, which is negative. So 2x is equal to 1 minus 2x square upon square root of 1 minus x square. There we go. So that, ये बहुत ही गंदा हो रहा है. क्वाड्रेटिक के ऊपर क्वाड्रेटिक यानी 4x square minus 4x not 4 is equal to 1 minus 2x. क्या है ये इक्वेशन? यानी ये कोई इसका अच्छी मेथड है नहीं क्या? 4x power 4 negative 6x square plus 1 is equal to 0. So अपने को x square के लिए सॉल्व करना पड़ेगा. फिर I get it, इसमें तुम काम कर सकते हो, but first of all, actually we want an inequality, not equality. So we want इसका derivative to be positive, right? That would give us when is this increasing. So we in fact want this to be bigger than 0. That just means this must be like that. So जब अपन square करेंगे, that time also it should be like this thing, and that means negative 4x power 4 plus 6x square minus 1 is bigger than 0. So 4x power 4 minus 6x square plus 1 is less than 0. And ठीक है, वहाँ से so for this to happen, x इसका roots बताओ यार मुझे. Roots है
माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर, सो बी स्क्वायर के लिए क्या 2 तो बाहर आ ही जाएगा, 3 स्क्वायर 9 माइनस 4ac, हाँ 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 4 बाहर आ जाएगा, just 4 upon 2a 8, 3 plus minus of square root of 5 upon 4, that's x square की value. But of course 3 plus square root of 5 upon 4 is just not correct, it should be 3 minus square root of 5 upon 4 because x छोटा से छोटा चाहिए अपने को. Yeah, this doesn't look good. नहीं यार ये क्या हो रहा है इसमें, square root 5 seriously, no 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 no, something must have gone wrong. हमें स्क्वायर रूट 2 मिलना चाहिए, स्क्वायर रूट 5 कैसे मिल गया आपको? तो यहाँ पे नेगेटिव से कैसे आया कि ये इट शुड हैव नेगेटिव 2x, नो ओके यहाँ पे ये और ये है, सो फाइन 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 फाइन, स्टिल क्या हो रहा है यहाँ पे, स्क्वायर रूट 5 कैसे आ रहा है आखिर, हाउ डज दिस इवन मेक सेंस? हमने सब कुछ सही से तो सॉल्व किया यार, अब इसमें कैसे कुछ गलत हो सकता है? लेट्स डू इट वंस अगेन. सो या और फिर so minus 20, that's also correct, so it's minus 2x और यहाँ पे आ जाएगा minus 4x पर plus 4, तो वो 4 बाहर आ जाएगा, जिसको that. So this is our y and stuff, so our z squared, that is x squared plus y squared, which is plus 4x squared plus 1 minus x squared, and negative 4x square root of 1 minus x squared, which is 5x squared, oops, not fancy, 4x squared, because yes, minus 4x square root of 1 minus x squared plus 1, right? अब you can just take the derivative of this thing, so इसका derivative क्या आ जाएगा, 4 तो अपन वैसे भी कैंसिल कर ही डालेंगे because that doesn't matter, फिर अपने को सिर्फ x square minus x square root of, या उस सब का अपने को derivative लेना है. I have a better idea, इसको ऐसे लिखो, इसको लिखो 1 plus 4x into x minus square root of 1 minus x square. So this is obvious कि जैसे जैसे x increase होगा ये जो चीज रहेगी that will decrease, and that means उसका जो negative value है that will increase. So this is a increasing function in x, right? But essentially it's just 1 upon, oh wait, yeah, it should be an increasing function in x, sure. Yes, yes, it's an increasing function. Yes. अब मैं पूरा श्योरिटी से बोल सकता हूँ, right? What that means is कि ये पूरा इनफैक्ट इंक्रीजिंग फंक्शन है x पर, अपने को डेरिवेटिव वगैरह करने की जरूरत नहीं, right? Yeah. जब x वैल्यू छोटी है एटलीस्ट तब तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन तुम्हें दिख ही रहा है, ये हाँ ये इंक्रीजिंग ही है. What happens when it starts to, oh okay wait, problem is कि this will be increasing, ये चीज इंक्रीजिंग है yes, but अगर ये निगेटिव है then that's the problem, क्योंकि निगेटिव टाइम्स इंक्रीजिंग फंक्शन वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया. This should be positive at any cost. Okay, that's how it should be, huh? So you mean कि x should be bigger than square root of 1 minus x square for this to be an increasing function, right? Yeah, okay, that's not the best thing to do. Directly differentiate करना चाहिए. So, okay, it's just x square minus function y, f बोल दो, f of x is just x square minus x square root of 1 minus x square. Then अगर मैं इसको differentiate करूँ, f dash of x is just 2x minus root of 1 minus x square minus, so plus 2x square upon
2 तो कैंसिल होने वाला है, तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर. Okay, cool. And yeah, what we want is that this should be positive. So 2x plus x square upon square root of 1 minus x square, that should be bigger than square root of 1 minus x square. That just means 2x square root of 1 minus x square plus x square should be bigger than 1 minus x square. Yeah. So 2x square plus 2x square root of 1 minus x square minus 1, that should be bigger than 0. Like that. In other words, 2x square minus 1 should be, okay, this is getting bad. यहाँ से आगे कैसे जाऊँ? Okay, you will have to substitute. Let's say x is cosine theta, then this thing will just be 2 cosine square theta plus 2 cosine theta sine theta minus 1. That should be positive. So the way to do this is, well, 2 6 minus 1 is just cosine of 2 theta, right? So cosine of 2 theta plus sine of 2 theta, that should be bigger than 0. When does this happen? That's the same thing as saying, okay, so cosine 2 theta, huh? Look, theta is in 0 to pi upon 2, and in fact not even pi upon 2, it's actually, oh, this should have been sine theta, that would have made more sense. But ठीक है ना, अपन ने कर दिया, so it's less than, x is less than 1 upon square root 5, so in fact pi upon 2 के काफी पास में है. Not the best thing. So we just know cosine of 2 theta, that's going to be negative, right? So you are saying sine of 2 theta should be bigger than negative cosine of 2 theta. That is what this actually means. So इसका square कर डालो. So sine square of 2 theta is bigger than cosine square of 2 theta. This is doable, all right? That means, yeah, well, 1 minus is also 2c square of 2 theta is less than 1. So cosine square of 2 theta is less than 1 upon 2. But remember, cosine of 2 theta is actually negative. So that means cosine of 2 theta is bigger than negative 1 upon square root 2. And now over here upon x include कर सकते, so 2x square minus 1, because of course that is bigger than negative 1 upon square root 2, and that means 2x square is bigger than 1 minus 1 upon square root 2. Yeah, so x should be bigger than square root of वो सारी चीज. So z is increasing for x bigger than all of that stuff. So 129 का मैंने दिया था a and d. Still यार कुछ और ही आ रहा है. इनका c कैसे आ रहा है, नॉट श्योर. मैंने इतना पूरा किया, उसके बाद में मुझे d मिल रहा है सिर्फ. This is not helping at all. ठीक है, तो is giving up on 129. Let's go to 133. So 133, मैंने C किया, हम लोगों ने D का है. The bisector of internal angles A in triangle ABC meets BC in a point D such that BD equal to 4, CD equal to 2. If altitude AE is bigger than square root 10. Right. तो मैंने C किया वो, राइट. तो अपन ने ये एलिमिनेशन से किया था, अपन ने 4 और 5 एलिमिनेट कर दिए थे, एंड देन वी थॉट की थी कि अब तो C बचा है, वो अच्छी. टर्न्स आउट कि C भी इनकरेक्ट है इनफैक्ट. ओह, दैट्स शेमफुल. Bisector of internal angles A in triangle ABC meets BC in D such that BD equal to 4, CD equal to 2, so something like this, 4 and 2. Altitude AE is bigger than square root 10, and AB and AC are integers, then AC may be, oh, okay. Well, that just means this is 2x, this thing is x. That we know for sure. What's the altitude, huh? तो x चेंज हो सकता है, x की वैल्यू अपन चेंज कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट अल्टीट्यूड विल आल्सो चेंज. फिगर आउट की अल्टीट्यूड की वैल्यू क्या है, so x and will be done actually. So this thing is just like, ये पूरी length is just 6, right? This is the altitude, maybe something like that.
Yeah, so call this thing as, I don't know. I don't know, Heron's formula काम कर सकता है इसमें directly. Yeah, the square root of same perimeter क्या है? Same perimeter is just 3x plus 6 upon 2, I think. Okay, this is just the worst. 3 plus 3x upon 2. So s minus a, that will be, let's say this is 6, so it's maybe 3 plus 3x upon 2. Oh god, ये तो बहुत ही लंबा चौड़ा हो जाएगा. सो इसलिए आपको करना तो वही पड़ेगा. और कोई तरीका है क्या? s minus b is, है तरीका, पर नहीं, मुझे नहीं करना. So s minus b is this minus 2x. So minus x upon 2, I guess, or s minus c, that is 3 plus x upon 2. At least ये multiply करना तो easy है. So 3 plus 3x upon 2, and then negative 3 plus 3x upon 2, and then is सबका square root, right? Let's just get it clear. ये हाफ इसके सामने है कि नहीं, मैं वो हमेशा भूल जाता हूँ. So for example, अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, इसमें साइड लेंथ a होती, then this would have been square root of same perimeter, which is having 3a upon 2, right? तो a तो वैसे ही बाहर जाएगा, a squared. ये हो जाएगा 3 upon 2, then 3 upon 2 minus 1 तीन बार, 1 upon 2 तीन बार, so 1 upon 8, and this would have been a squared square root of 3 upon 4. Yeah, this actually does work. So 1 upon 2 की जरूरत नहीं है. हाँ, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, whatever. तो ये चीज इतनी बुरी नहीं है यार. This is just square root of, let's see, 9 upon 4x square minus 9, and then this kind of thing, huh? Cool. And what we want is that, right, so this thing is our area upon 6. No, that's not, area is just half of 6 into height, so that's 3 into height, so one third of this thing, that's our height actually. So ye cheese, oh, this is nice, this is actually very doable, because now we have a special tool to do this. So 1/3 of square root of 9 upon 4x squared. No, just say it's 3 common bahar nikal lo, so 1 upon 4 x squared minus 9, sorry, minus 9 minus 1, and then 9 minus x squared upon 4. Well, this thing is is GMS, so it's less than or equal to AM. The AM is just ये add हो तो मर जाएगा, तो just 8 upon 2 4. Wait, what? So AC is less than, sorry, the height, it is less than 4, but हमने तो 4 और 5 कैंसिल करके 6 क्या किया था हमने फिर पहले? ये तो कुछ और दे रहा है, right? This is giving something entirely different. तो ये बोल रहा है कि 4 से छोटा चाहिए. It's none of these in that case. Oh, what is this? No idea. ठीक है. तो hey, यार ये तो अपना क्लासिक वाला प्रॉब्लम था कि इनफैक्ट ये एक सर्कल पे बैठता है, राइट? तुम्हारा जो पॉइंट है वो, मैं क्यों वो मैं अपोलोनियन सर्कल क्यों नहीं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे? डी और सी तुम्हारे पॉइंट्स है. ए कोई तो भी ऐसा एक रैंडम पॉइंट है जिसका इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस कितना है, 2:1 रेशियो में है, राइट? और ये एंगल ये पूरा लेंथ 6 है, राइट? सो यू नो कि ये 4 और 2 ऐसे होने वाला है, प्रीटी श्योर ऑफ दैट. बट थिंग इज, इसका जो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर रहेगा वो भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट करेगा, राइट? एंड दैट इनफैक्ट मीन्स कि ये दोनों इसके डायमीटर, बिकॉज इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है. सो ये एक्चुअल में इस टाइप की सर्कल पर है. ये मैंने क्यों नहीं यूज किया? पागल हो गया क्या? कम ऑन. सो एक काम करो, इसको 0,0 बोल दो. दिस विल बी ऑफ कोर्स 6,0. We just need to figure out कि ये point और ये point क्या है, and then they are done. We find the diametrical points. We will find what center is and everything. तुम्हें जो रेडियस मिल जाएगा उससे तुम्हें हाइट की मैक्सिमम वैल्यू मिल सकती है डायरेक्टली. इनफैक्ट अपन ढूंढ सकते हैं हाइट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, और इनफैक्ट क्या हर एक्स लाइक ए की पोजीशन के अकॉर्डिंग हाइट क्या है. या
Why not do it like that, you know, Apollonian circle. मैंने क्यों नहीं यूज किया ये? ठीक है, तो 6,0 राइट, तो ये चीज तो डायरेक्टली अपने को मिल गई 4,0 और ये चीज किसी ढूंढते हैं फॉर दैट लेट्स से दिस इज एट x comma 0 then this would be x minus 6 upon x minus 0. ये जो चीज है that is in the ratio of 1 upon 2, that means 2x minus 12 is equal to x, so x is 12. तो ये चीज 12,0 होगी, तो जो सेंटर रहेगा that will be 8,0 somewhere over here. Radius 4 radius 4, that means height is also 4, मतलब ये सर्कल की. We are done. We find the height, it's done. Maximum height, right? Maximum height will be 4. Wait, but according to that, A should actually work because अगर ये यहाँ पे पहुँच गया then height is 4. It's still working. Why not this? अरे यार, ये पूरा क्वेश्चन ही अलग है. ये क्वेश्चन ही अलग है यार. मैं क्या कर रहा हूँ? मैं 3-4 मिस्टेक साथ में कर रहा हूँ. थिंग इज वो पूछ रहा है कि अल्टीट्यूड, अपने को हाइट के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा है यार. अपने को पूछ रहा है कि अगर अल्टीट्यूड ए ई हाइट ऑलरेडी अपने को दी हुई है, इट्स बिगर देन स्क्वायर रूट 10, ए बी ए सी आर इंटीजर्स, देन ए सी मे बी ए सी इज दिस, राइट. एंड एक एक्चुअली में इतना बुरा नहीं है बिकॉज ए ई हाइट अपने को पता है कि जो y कोऑर्डिनेट है दैट्स जस्ट बिगर देन स्क्वायर रूट 10. अपने को c पता है, अपने को इसका लोकस पता है. इनफैक्ट वी कैन फिगर इट आउट. स्क्वायर रूट 10 इज 3 पॉइंट समथिंग, इट्स लेस देन 4, राइट. तो ऐसे दो या समथिंग लाइक दिस, तो जैसे ऐसे 4 पॉइंट्स है जहाँ पे ये क्रिटिकल वैल्यूज आ रही है और इस बिगर देन दैट ऐसा रहेगा, राइट. और c अपना ये पॉइंट, यहाँ से जो डिस्टेंसेस रहेंगे सिर्फ अपने को वो देखने हैं. सो सिर्फ 4 वैल्यूज हो सकते हैं. इट्स डूएबल यार. तो एक काम करो, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं. मैं c को -2,0 बोल देता हूँ, राइट. इसको मैं ओरिजिन कंसिडर कर रहा हूँ. इसका रेडियस अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इट्स जस्ट 4, सो रेडियस इज इक्वल टू 4, राइट. एंड y इज लाइक mod y is bigger than square root 10, that's what we are saying, राइट. तो ये चीज अगर स्क्वायर रूट 10 है, हाँ इनफैक्ट इतनी नहीं, अपने को ये निकालना है, राइट. And actually we know what this thing is, it's just that we don't know what. ठीक है, करना तो पड़ेगा यार अपने को, और कोई तरीका नहीं. So y bigger than square root 10, x comma y अगर से बैठ x square plus y squared equal to r squared 16, and at the same time y is bigger than square root 10. अपन सिर्फ ये 2 पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं अभी के लिए क्योंकि सिमेट्रिक है एनीवे, तो वो हो ही जाएगा. एंड व्हाट वी एक्चुअली नीड टू फाइंड इज x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये जो वैल्यू है, राइट. व्हाट इज दिस, इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू वगैरह क्या है? उफ, well it's like y को तुम sin, तुम उसको बोल सकते हो 4 sin theta, then what you're saying is that sin theta is bigger than square root of 10 upon 4, which is square root of 5 upon 2 square root 2, right. So इसकी ये वैल्यूज आ सकती है, ये सारी वैल्यूज आ सकती है. then इसकी वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, ऐसा पूछ रहे हैं. ऑफ कोर्स दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो वो तो 16 हो जाएगा. और उसके बाद में आएगा प्लस 4x plus 4, so 20 plus 4x, so 20 plus 16, no not 16, x was 4 cosine theta, okay 16, 16 cosine theta, and we know that sine theta is bigger than that, of course. Yeah, well, that's right. Sine theta is bigger than this thing, then cosine theta should be less than some particular thing. ओके तो यहाँ पे ये वैल्यू है और ये वैल्यू है. वेल इट्स क्लियर कि कोसाइन थीटा से बड़ी वैल्यू अपने को लेनी है, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू. तो साइन थीटा बिगर देन दैट, दैट मीन्स कोसाइन थीटा इज लेस देन, साइन थीटा इज लेस देन स्क्वायर रूट ऑफ 1 minus 5 upon 8, so it's square root of 3 upon 8.
सो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 3/8 और मिनिमम वैल्यू सिमिलरली हो जाएगी 20 प्लस 20 माइनस, बस यहाँ पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 16 स्क्वायर रूट ऑफ 3/8 फाइनली। तो कौन से इंटीजर इस रेंज में बैठते हैं? चलो कैलकुलेट करो, इसको मिनिमाइज कर देते हैं। लेट्स डू इट। स्क्वायर रूट 8 यूज से, हाँ, this is like 2 into 8, so 20 plus 2 square root of 24 and 20 minus 2 square root of 24, 24 approximately 25, so 20 plus what, 10, 30 और ये हो जाएगा 20 minus 10, 10, तो 10, 30 या इनफैक्ट ये तो 10 से भी बड़ा होगा, तो 24 छोटा है 25 से, दैट मीन्स वो 10 से 30 के रीजन में आ रहा है कहीं तो भी, और ये सारे नंबर बहुत छोटे हैं वो होने के लिए, या दैट जस्ट मीन्स दिस इज रॉन्ग। Finally, 133 done. 134. 134 मैंने ए बी दिया, उन लोगों ने ए बी सी दिया। यार कितना बचा हुआ है? और थोड़ा सा बचा हुआ है। Just do this, you know. F of x is equal to this thing. If f is differentiable at x equal to 1, then. Okay, 134 मैंने किया है a and b. उन्होंने दिया है a b c. नो बिग डील। सो पहले तो कंटिन्यूस चाहिए, मारो सबको, कंटिन्यूस चाहिए, तो x इक्वल टू 1 पे इज जस्ट x स्क्वायर, सॉरी a प्लस b प्लस c एंड दैट शुड बी इक्वल टू 2a प्लस b एंड दैट मीन्स a इज इक्वल टू c, हाँ ओके, और फिर इसका डेरिवेटिव भी सेम चाहिए, सो 2a प्लस b इज इक्वल टू 2a, वेट व्हाट, oh yeah, so that just means b is 0 and a equal to c and whatever. So f of x is just ax square plus a basically. ठीक है, इसका क्या? Minimum of f is a when a is bigger than 0. अच्छा इसको ग्राफ करो यार। So मैं सिर्फ a bigger than 0 के लिए ग्राफ कर रहा हूँ, but in the end, अच्छा ये जो है ना ये सिर्फ ये इसके लिए है, राइट? a bigger than 0 के लिए इसमें ग्राफ करूँ, दिस वुड बी समथिंग लाइक दिस, और अगर दूसरा वाला सेक्शन ग्राफ करते हैं, सो b 0 एनीवे, जस्ट 2ax, सो x इक्वल टू 1 पे 2a हो जाएगा, यस x इक्वल टू 1 पे 2a हो जाएगा, नॉट एट x इक्वल टू 0, और उसके बाद में ये बस ऐसे ही चलेगा लाइन लाइक दिस, दैट्स व्हेन a इज बिगर देन 0, हाँ कूल। तो जो मिनिमम वैल्यू रहेगी f की, दैट्स this thing, so that's at x equal to 0 and that is basically just a, so yeah, so a is correct और maximum होगा a when a is negative, that's cool, so a and b work, c is तो 134, a और b तो मैंने दी थी, और c है f increases when x and a have the same sign. ओके अच्छा, मुझे समझता है क्या बोल रहे हैं लोग। अगर a पॉजिटिव है then when x is bigger than 0 this is increasing function, and when a is less than 0 then ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा, so then whenever x has negative sign ये चीज increasing function है, so yeah actually c is also correct, just इन्होंने बहुत ही अजीब तरह से लिख के दिया है, ये doesn't make sense, right? Yeah, next है 139। 139 मैंने ए सी डी किया, उन्होंने सिर्फ ए और डी किया। अच्छा तो सिर्फ प्रॉब्लम सीखती है कि g इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, ये ओके सो अच्छा सिर्फ x इक्वल टू 1 की बात करें ना, तो ये जो पूरा है या ठीक है आगे का वो तो छोड़ ही दो, सिर्फ अपने को इतना कंसिडर करना है, मैक्स ऑफ f ऑफ t वगैरह, तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3, हाँ इसका डेरिवेटिव क्या है, जस्ट 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, व्हेन इज दिस इक्वल टू 0, दैट्स लाइक व्हेन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो व्हेन x इज इक्वल टू 1 और व्हेन x इज इक्वल टू 3, वेल 3 थोड़ा सा अजीब केस हो जाएगा,
बिकॉज वो अपने को देखना भी नहीं इनफैक्ट। तो अपने को सिर्फ x इक्वल टू 1 देखना है। x इक्वल टू 1 पे अपने को मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, तो राइट वहां पे इसका डेरिवेटिव 0 होता है और उसके बाद में वो चलते जाएगा। ओके कूल। सो x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल क्यों नहीं है यार, होगा ना, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और आगे तो एक कांस्टेंट है तो वैसे भी उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। व्हाई नॉट, इट शुड डेफिनेटली वर्क। सो c इज वेरी मच करेक्ट, सॉरी g of x इज वेरी मच डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 1, तो c इज इनकरेक्ट। मैंने c क्यों चूज किया था, आई डोंट नो, मुझे लगा होगा कि डिफरेंशिएबल नहीं है बट है इन दी एंड है डिफरेंशिएबल वहां पे। ओके लेट्स गो टू 150 देन। 150 मैंने ए किया, उन लोगों ने ए और बी दिया है। ओके तो एंगल बी तुम्हें दिया हुआ है, एंगल सी दिया हुआ है और एक साइड दी है। So the following statements these are correct, tan A tan B tan C are in proportion। अपन ने ये किया था क्या, tan A 1 था, ऐसा कुछ भी था। मुझे वापस वैल्यू क्रिएट करने की इच्छा नहीं है यार, बट और क्या कर सकता हूँ। सो जस्ट फिगर आउट व्हाट tan B is। tan B is what, tan of cosine inverse of 4/5 वगैरह। तो द थिंग इज एटलीस्ट ये सारे पॉजिटिव है तो सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, तो या जो पहला है उसका tan क्या रहेगा, सेकंड इनवर्स ऑफ 5/4 यू से। तो tan वैल्यू रहेगी 3/4, सो 3/4 से स्टार्ट कर रहे हैं और cosec इनवर्स ऑफ 1/5। सो सामने वाला 1 है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 5, ये चीज हो जाएगी स्क्वायर रूट 4 which is 2, so tan is 1/2, so 3/4 plus 1/2 upon 1 minus of 3/8 which 8 से मल्टीप्लाई करो, 6 plus 4/5 that is 2, so tan B is 2। What about tan A? tan A is, यार A तो तुम्हें दिया नहीं है, tan C तुम लो ना एटलीस्ट। So tan C cosec inverse of 25/7, 25 हाइपोटेन्यूज है, सामने वाली साइड 7 है तो ये 24 रहेगा, तो tan इनवर्स 7/24। cot इनवर्स बढ़िया, फिर tan डायरेक्टली दे दिया 13/9। This is like what, 7 into 9 plus 13 into 24 upon 24 into 9 minus 7 into 13. Oof. This is going to be what, 63 plus, seriously 13 or 24, 3 common लो, 3 common लो, 3 common ले लिया, it's a 73 21 21 plus 8 into 13, that's 8 and 24 104। ओके और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24 into 9 that's 18, 36 is 216 माइनस क्या हो जाएगा ये 1 2 carried on क्या 91, so it's just 5 or 12, so 125 like that। This thing is also 125, really nice। So just 3, tan of C is 3 और वहां से अपन tan of A निकाल सकते हैं, so tan of A is 3 like that। tan of A is not that hard to find, so tan of A is just tan of pi minus B minus C, so it's just negative tan of B plus C which is negative of 2 plus 3 upon 1 minus of 6, so that's just 1, tan of A is 1। लोग ये सारे पॉजिटिव है, so सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स है, सारे एक्यूट एंगल्स है, रियल नाइस। हाँ ओके तो P क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थोसेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, राइट, ये कैसे, हाउ, orthocenter and center of the triangle PCC is 5.3। अनलेस मैं कोऑर्डिनेट्स निकालो, इसके कोई और तरीका नहीं है ना, तो करते हैं कोऑर्डिनेट से निकालते हैं इसके। क्या सेटअप कर सकता हूँ मैं इसमें, बस एटलीस्ट अपने दो साइड्स तो आराम से हो जाएंगे बिकॉज वो सिर्फ लाइंस। ये जो सी वैल्यू दी है, राइट, यू नो व्हाट साइड सी इज, लेट्स से ये ऊपर वाला है, ऊपर वाली चीज
ऊपर वाला जो वर्टेक्स है उसको उसमें उसको सी बोल रहा हूँ, देन साइड सी जो बेस रहेगा दैट इज 3, इसको मैं ए बोल देता हूँ. So tan A is 1, this thing is 45 degree, right? So this thing is just y equal to x. और tan B is 2, तो ये जो है this has slope -2, right? And this thing is 3, 0. So y equal to x ये चीज़ है, ये हो जाएगा y upon x minus 3 equal to -2. That would be this line. So y equal to -2x plus 6. I think this looks good. Slope is -2. Yeah, sure. तो अब क्या, अब c अपन ढूंढ सकते हैं when these two intersect. So x equal to this, all of that. So 3x equal to 6, x should be equal to 2, and that means y has to be 2 as well. अपने को ABC मिल गया. And now we need to figure out the ortho center क्या होगा. Well, yeah, y equal to x. So -1 स्लोप का जो कि इससे पास हो रहा हो. Come on यार, इतना हार्ड क्यों दिया है. So x plus y equal to something. Of course, x plus y equal to 3, that would be this line. That will be this altitude, और ये altitude तो x equal to 2 रहेगा basically. So that means h over ortho center is just 2, 1, right? Because x equal to 2 put करो, y equal to 1 मिलता है, तो ये दोनों लाइन पे होना चाहिए, right? So 2, 1. Okay, and what else do you want? Orthocentered and centroid. Centroid isn't that hard, so it's just 5/3. मुझे पहले ही तभी कर लेना चाहिए था जब मैंने क्वेश्चन स्टार्ट में देखा था, बट तब ऐसा डरावना लग रहा था कि यार कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा मैं इसके तो सब कुछ और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट इनफैक्ट ये सिंप्लीफाई हो गया. अजीब है. सो 2/3. और क्या, अब तो ईजी है. सो स्क्वायर रूट, इनफैक्ट 1/3 कॉमन बाहर निकाल लो. स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट? 6/3, right? So 1 squared, and then this is 3/3, so it's just also 1 squared. So square root 2 upon, it's not 5/3. Why is this? What? But that's 6/3, sure, and this is just 3/3, right? Because it has to be. It has to be, right? Right? Yeah, it's just centroid और orthocentric के बीच का डिस्टेंस इज जस्ट व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 5/3. 150 का क्या किया? 150 का ए और बी करेक्ट दिया. हाउ इज दिस करेक्ट? हाउ कैन दिस बी 5/3? बट 5 कैसे आएगा यहाँ पे? इट्स नॉट 24, नो. कोई वैल्यू इसमें नेगेटिव थी शायद से, ऐसा कुछ सकता है. This was x equal to 2, right? Because yeah, that looks reasonable. And x plus y equal to 3 plus 0, sure. That is this line altitude, और ये altitude है just x equal to 2. Sure of that at least. So ortho center तो मैं I can guarantee कि वो 2,1 है. Centroid is still, I mean it's just 5/3 and yeah, that thing. तो क्या गलत हो सकता है इसका? Understand this. ये 3,0 है, right? You said that tan B is 2, so ये slope जो रहेगा that should be -2, right? And this slope is 1. Yeah. That's why I'm just cos. When x is 0, y is, sorry, when y is 0, x is 3. So yes, this is correct. This is also correct. That does give us x equal to 2 and y equal to 2. अब क्या गलत हो रहा है यार? मैंने पूरा सही से किया है. This is frustrating.
It's like square root 2 upon 3, not 5 upon 3. नहीं, it has to be. ये altitude ऐसा ही रहेगा ना. It's just execute. Ortho center, of course. Centroid, of course. That's it. I'm just saying it out. ये जो है ये square root 2 upon 3 होना चाहिए, not this thing. Why is this over here? Unless ये negative था, in that case it क्या हो जाएगा? क्या क्या ये अगर negative था तो ये होता square root of 7 square plus, still not working यार. Doesn't this look obvious कि यहाँ पे होगा ऑर्थो सेंटर एंड I think it does यार. Oh, this is weird. ऑर्थो सेंटर यहाँ पर है, ये सेंट्रॉइड. Okay, ये इस मीडियन पर क्यों है? Okay, this is whatever this is. Okay, whatever. Just move on. 150 अजीब था. टर्न्स आउट कि बी कर सकते हैं बट करने पे कुछ और ही वैल्यू आ रही है, तो whatever. This was B, right? And this was C. Yeah, side C तो मैं 3 दी थी. This was A and B. Angle B जो था that has tan equal to 2, तो this should have been negative 2 slope. Okay, whatever. Next is 155. So 155 का मैंने B दिया, उन लोगों ने A और B दिया है. Consider these planes. Okay, this plane bisects the angle between the given planes, which is 155 में A B दिया है, A और B दिया, which contains origin. क्या ये planes contain origin? No. Neither does this plane contain origin. Oh, I think the angular region that contains it. Oh. Okay, तो उस टाइप से था. फिर मैं नहीं कर रहा इसको. ये इस टाइप के क्वेश्चन पे मुझे टाइम स्पेंड करना है. 155 तुम कर लो यार. राइट, जिस नॉर्मल वेक्टर्स देखो किस टाइप से काम कर रहा है, वो प्लेन्स एक्यूट एंगल कौन सा है, ऑब्वियस कौन सा है, ये प्लेन कैसे काम कर रहा है. इट विल बी डूएबल. राइट, सिर्फ अपने को देखना है कि कौन से रीजन में ओरिजिन आ रही है. 155 not doing it. 157, if this is the area bound. Okay, 157 क्या है, मैंने A किया, उन लोगों ने A and C किया है. ये चीज ओके, याद नहीं आ रहा कि क्या कर रहे थे. हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल B जो था that was just kind of okay. एक्चुअली ये इजी क्वेश्चन था, मुझे याद आ रहा है. So AI is the region bound by these. Yeah, well, फर्क नहीं पड़ता कि ये small AI की वैल्यू क्या है, क्योंकि वो एरिया है, फर्क नहीं पड़ता. So this is equal to BI like this. BI half BI square, but 4 times of that. So actually 2 BI square. AI is 2 BI square. And guess what is BI? So BI plus 1 is BI upon 2, right? और initially BI 3 upon 2 है, मतलब B1 3 upon 2. तो तुम बोल सकते हो कि B0 जो था that would have been 64. So 2 power 64 क्या है, 2 power 6, और फिर half, yeah, so minus I basically, right? That's our BI. Okay. और फिर अपने को पूछा लिमिट एज n टेंड्स टू इंफिनिटी ऑफ दिस समेशन AI का समेशन. So AI is just 2BI square, so it's just 2 into ये चीज का स्क्वायर, 2 into 2 power 12 minus 2i, which is 2 power 13 minus 2i. So A क्या है, the starting value क्या है, 2 power, I starts from 1, right? So it's 2 power 11 and that upon 1 minus r, so 1 minus 1 upon 4 basically, and that is just 3 upon 4. So it's going to be 4 into 2 power 11 upon 3.
So they are saying it's 8 upon 3 into 32 का square. Yeah, it is because it's just what 2 into 4 is 8 of the aperture to power 10. It's obvious. तब आई थिंक मेरा कुछ गलत हो गया होगा. मुझे इतना ही याद आ रहा है कि मैंने ये बहुत टाइम तक किया और मुझे वो जमा नहीं तो आगे मूव ऑन कर दिया. बट आई थिंक दिस वर्क्स. नो प्रॉब्लम विद दिस थिंग. I don't know. Just move on. 159. Wait, what? 159. Yeah, this was 157. 159 next time. तो मैंने वो किया नहीं है और ABC. ये चीज इनफैक्ट मैंने इस पे वीडियो बनाया है, तुम वो देख लो. 159 का ABC. राइट. सो बेसिकली इसमें बहुत गेस वर्क तुम्हें करना पड़ेगा बिकॉज वो पैराबोला एक्स वाई इक्वल टू 4AY रहेगा जो कि अपन ढूंढ रहे हैं और वो डायरेक्टली नहीं मिलेगा. वो तुम्हें चेंज करना पड़ेगा फॉर्म को. और ठीक है, बहुत गेस वर्क है. 162. सो मैंने AC दिया, उन लोगों ने ACD दिया है. सो अकॉर्डिंग टू देम दिस थिंग इज ग्रेटर देन 2 स्क्वायर रूट 3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फंक्शन है 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 2, मुझे देखना है कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है कि क्या हो रहा है. इसका मुझे डेरिवेटिव देखना है. सो इसका डेरिवेटिव निकालना मुश्किल काम होगा बट यार इट्स टू 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 2 5 अपॉन 2 एक्स पावर 3 अपॉन 2. सो देखने में तो लग रहा है कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है. येस, बट वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है. तो इनिशियली डेरिवेटिव क्या है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1. दिस डेरिवेटिव, अच्छा एक्चुअली मैं अपने को डेरिवेटिव लेट्स सी. जो स्लोप रहेगा फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, मतलब मैं अगर ग्राफ्स को ड्रॉ करूं 1 पे इसकी वैल्यू क्या है, इस फंक्शन की वैल्यू है जस्ट 2 और 3 पे इस फंक्शन की क्या वैल्यू है. रियली तुम एक्स इक्वल टू 3 पुट कर रहे हो उस पे, मतलब हद हो रही है यार. 3 सीरियसली वाई, क्या कैसे लोग यार ये. नो, वाई 3. 4 कितना बेटर होगा अगर मैं 4 पे देखता हूँ फॉर एग्जाम्पल. 4 पे स्टिल बेटर नहीं है बिकॉज ये 32 प्लस 3 35 का स्क्वायर रूट. नहीं, फिर तो 3 पे कर दो उससे अच्छा. तो 3 पे इट विल जस्ट बी 9 स्क्वायर रूट 3 आए तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 9 स्क्वायर रूट 3. अब क्या, दिस इज नॉट डूएबल राइट. ठीक है जो भी है, यहाँ पे ये वैल्यू रहेगी 3,3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 9 स्क्वायर रूट 3 वॉट एवर. वॉट आई एम थिंकिंग इसकी यहाँ पे अगर मुझे ऐसे कॉन्केविटी मिल गई तो मैं ये जो पूरा एरिया रहेगा वो यूज कर सकता हूँ डायरेक्टली. ये एरिया यूज करने से अच्छा. सो इसका डेरिवेटिव इनिशियली क्या है, इसका डेरिवेटिव इनिशियली व्हेन एक्स इक्वल टू 1 ये हो जाएगा 5 अपॉन, और ये चीज तो 2 हो जाएगी 5 अपॉन 8. और ये डेरिवेटिव क्या है, इट इज बस यू नो कि यहाँ पे इनफैक्ट वो एंड होने वाला है. यस बट हाउ डू यू नो कि डेरिवेटिव यहाँ पे कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग है कि नहीं है, कि क्या चल रहा है यहाँ पे. some other thing that we can do. About 5. 2 square root 3. Well 2 तो I think यहाँ से आ रहा है and then hey come on, this is obvious. ये मुझे नहीं पता कि तुमने wait 162 का मैंने A किया, this is bigger than 4 when you put 1 over here. Yes, but then this is also obvious here because 4 तो 2 square root 3 से, yes 4 2 square root 3 से बड़ा है तो फिर D तो हो ही जाएगा ना ऑटोमेटिकली. मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आई थिंक ऐसा हुआ होगा कि मैंने वो इरेशनल वैल्यू देख ली होगी, मुझे लगा होगा कि यार इन लोगों ने ज्यादा इससे अच्छा इनइक्वालिटी ढूंढ ली है, बट नहीं, इनफैक्ट वो इससे खराब इनइक्वालिटी ढूंढ रहे हैं बिकॉज 2 स्क्वायर रूट 3 ऑब्वियसली इससे छोटा है. डजंट मेक सेंस राइट, व्हाई वुड दे डू दिस. ठीक है, तो 162 हो गया. 163 नहीं सॉरी 168 ओके. तो मैंने ABCD किया, उन लोगों ने सिर्फ ABC किया है. सो
या ये सब 3 पाई स्क्वायर अपॉन 4 है, ऐसे ही होता है कि ये तभी होगा ना जब ये अंदर की वैल्यूज हमेशा पाई/2 हो या फिर नेगेटिव पाई/2। तो x प्लस माइनस 1 है, y प्लस माइनस 1 है, z प्लस माइनस 1 है। तो x माइनस y प्लस z, इट कैन ऑफ कोर्स इट कैन बी जस्ट -3। व्हाट्स द प्रॉब्लम? y को तुम 1 रख दो, z x को -1 और z को -1, हो जाएगा खत्म। और उन्होंने d नहीं दिया। नहीं यार, ये पागलपन है। अगर तुम 3 दे सकते हो तो तुम -3 भी दे सकते हो ना। क्या था ये? मैंने और कोई इस पर रेस्ट्रिक्शन भी नहीं दिए हुए। नहीं, उनका गलत है फिर। ABCD ही करेक्ट है। ओके 169। तो मैंने AB दिया, उन लोगों ने AD दिया। दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, ओह कम ऑन, 2c²-1 से। Oh yeah, this can be done like this. So it's just integration of secant square x upon क्या हो जाएगा ये? Well, 2 minus secant square x because cosine square बाहर निकाल लिया, it's dx. So it's just integration of dt upon, well, this thing is just secant square is just 1 plus t square anyway. So just 1 minus t square, which is like sine inverse of t. Huh. Yeah, plus some kind of constant. So of course a तो correct था ही. Sine inverse of t यानी कि cot inverse of what? So अगर tan x is, oh you are writing in terms of cosine और वो सब, right? तो in fact इस टाइप से देखते हैं, sin x and this is cosine x. तो sin inverse of t ये एंगल है, then cot inverse of what is this angle? इसका cot क्या है basically? And with this thing, just square root of c squared minus s squared, guess what is that? It's just cosine of 2x, yes. Square root of that, of course, square root of c squared minus s squared. Right, so square root of cosine of 2x upon sine x. So this should work. Well, what's the problem? Why is it not working? Oh yeah, so square root. Cosine 2x, square root. Okay. Oh no. Something seriously bad. यार ये अजीब हो रहा है, बिकॉज हो सकता है कि कोसाइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर इनफैक्ट निगेटिव हो जाए, तब अपन क्या करेंगे? ऐसा होता है ना? देन व्हाट वुड यू डू अगर वो निगेटिव हो तो? या लाइक इन द केस व्हेन कोसाइन स्क्वायर इज लेस देन साइन स्क्वायर, तो तब तुम साइन ऑफ tan t को इस टाइप से नहीं लिख सकते, राइट? तो व्हाट इज cot ऑफ साइन इनवर्स ऑफ tan t? The only explanation that I can give is कि tan squared of t is, sorry, yeah, x basically, right? That is actually bigger than 1. तो ये पूरा sin inverse of tan t पागलपन है ये. It doesn't make any sense. But then of course it doesn't make sense in the original function as well. तो अगर tan t is well defined, and this should also be. But हाँ, square root में है, that's a problematic thing. Because क्या पता है negative है कि positive है. अगर ये नेगेटिव रहा तो क्या होगा? Is this that big a deal? I don't know. यार तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि x की रेंज क्या है वगैरह, क्योंकि ये टाइप का इंटीग्रेशन सिर्फ इस टाइप से मैं बोल सकता हूँ हवा में। फिर 169 का ए बी और ए डी में ऐसा कुछ खास फर्क, ये क्या है ये? इसमें तुमने नेगेटिव साइन इनवर्स ऑफ tan x प्लस c बोल दिया। सीरियसली व्हाई? फिर तुम ये भी ले सकते हो ना, इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? अगर तुम ये ले सकते हो तो फिर तुम c भी ले सकते हो इनफैक्ट, बिकॉज दिस इज लाइक व्हाट, π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ tan x प्लस व्हाट, प्लस c माइनस π/2 हो गया। कोसाइन इनवर्स में भी तुम ले सकते हो इसको। तो नहीं, 169 का इन्होंने कुछ ही कुछ कर डाला इसका। ठीक है, 179 पे जाना है फिर नेक्स्ट। तो मैंने बी दिया, उन लोगों ने बी और सी दिया। let a
be equal to this. Be okay. 2 points in x. Let's do this actually. So let a negative 1 comma 0, that is somewhere over here, or b 2 comma 0. Okay, be 2 points on the x-axis. A point M is moving in the xy plane such that angle MBA is equal to 2 times of. Oh, तो अपने को वैसे भी सिर्फ अच्छा नहीं, अपने को कोऑर्डिनेट्स भी यूज कर रहे हैं. ओके फाइन. Angle of MBA equal to 2 times of angle MAB. It's E, right? Right, तो ये चीज, let's say this is 2 alpha, this is just alpha. Right, तो हाँ, then point M moves along a conic. Well, one thing we know is that ये जो अल्फा, अगर तो स्प्लिट करता हूँ अल्फा अल्फा लाइक दिस, देन ये दोनों इक्वल रहेगा. दैट जस्ट मींस कि ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पॉइंट है. अरे यार, ये कैंसिल करने में इतना टाइम लगता है. तो हाँ, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा, राइट. और वहां पे तुम और फिर अल्फा जा रहे हो, एंड देन यू वांट टू फिगर आउट वो क्या है. ओह, दिस इज वियर्ड. सो लेट्स कॉल दिस थिंग y नॉट. कॉल, ये तो अपने को ऑलरेडी पता है, राइट. या ये लेंथ कितनी है? ये लेंथ है जस्ट 3/2. सो देन if this is alpha, this is also alpha, then actually can you figure out what this thing is? Maybe you can actually. Yeah, well, this is 90 minus alpha. This angle is alpha. This angle, what is this angle going to be in that case? We don't know. And that's the problem. We don't know actually. Hey, but we know कि ये alpha है और ये same है. ये 90 डिग्री है. इस एंगल का मैं कुछ नहीं जानता. दिस इज बैड. कम ऑन यार. अनलेस ये दोनों एंगल लाइक ओके, ये दोनों एंगल सेम हो जाए तब ये हो सकता है. बट अगर ये सेम नहीं है देन वी कांट एक्चुअली यूज एनीथिंग अबाउट इट. सो अपने को कुछ और मेथड से करना पड़ेगा. दिस थिंग इज अल्फा, दिस थिंग इज 2 अल्फा, राइट. सो द ओनली मेथड दैट वी हैव इज कि इसको तुम a बोलो, इसको तुम b बोलो, देन b अपॉन, या दिस इज जस्ट द वर्स. और यू कुड जस्ट गो फॉर यू नो tan ऑफ दिस एंड ऑल दैट स्टफ. सो इसको x y बोल देते हैं. a is just negative 1 comma 0, b is 2 comma 0, then that just means y upon x plus 1 is t, and y upon x minus 2 is 2t upon y minus t squared. So that, yeah. So this thing is just 2y into x plus 1 upon x plus 1 ka square minus y square. Yes, y cannot be 0, that would be stupid. X plus 1 ka square minus y squared is equal to x minus 2 उधर भेज दो, so it's just 2 into x squared minus x minus 2. So x squared plus 2x plus 1 minus y squared is equal to, अच्छा यार कुछ y squared एक ही बार आ रहा है. So 2x squared minus 2x minus 4, और this just leaves us with what, y squared plus x squared. ये उधर जाएगा negative no okay, yeah, negative 4x and negative 5 is equal to 0. Cool. So what, ये तो सर्कल जैसा कुछ भी लग रहा है मुझे. Why is this? Yeah, looking like a circle actually. Is this correct? Yeah, this is correct. Yeah. Nice. Really nice. So yeah, it's a circle somehow. But that can't be. यहाँ पे तो ये इसेंट्रिसिटी हाफ और ये सब यानी कि प्रोबेबली कोई टाइप का इलिप्स या फिर हाइपरबोला है, बट दिस डजंट लुक लाइक दैट एट ऑल. क्या गलत हो रहा है मेरा? Oh yeah, of course. It's pi minus 2 alpha. Negative. ये पूरा भी negative.
सच में इसमें से नहीं करना चाहिए, नेगेटिव ऐसे डाल दो। देन ये हो जाएगा 3x² ये तो 2x गया -4 ऐड किया -3 -y² equal to 0 so okay x² -y² upon 3 is equal to 1 that is the thing that we got so इसकी eccentricity क्या है so just -b² upon a² is equal to 1 minus e² so basically 3 upon 1 equal to e² minus 1 right so e² is just 4 eccentricity is 2 not 1 upon 2 how can it be 1 upon 2 ये ellipse नहीं है यार एक hyperbola है basically how can this be 1 upon 2 okay so 179 a is wrong okay b latest rectum is of length what so b² 2b² upon a right so just maybe 2 into 3 upon 1 ये yeah so b is correct उन्होंने भी b correct किया है और उन्होंने कहा है कि c भी correct है directrices are well okay wait what oh okay so ae अपने को ढूंढना पड़ेगा right that would just be क्या था once again just b² upon a² is equal to e² minus 1 or more like a² is equal to a² plus b². So yeah, a is just square root of 4. So it's 2 basically. So wait, what? Foci are plus minus 2 comma 0. Directrices are different because a1 है तो डायरेक्ट्रिक्स रहेगी x equal to 1 upon 2 and x equal to -1 upon 2 so yeah c is actually correct and foci are not this thing it's like plus minus 2 comma 0 d is wrong c is correct 179 dc और सिर्फ b नहीं okay 181 finally ये तो मैं इनफैक्ट कर चुका हूँ आई थिंक मैंने इसे वीडियो भी बनाया so you can check that out so it's done 4 घंटे और 16 मिनट अभी चल रहा है तो yeah I'll see you guys in the next video